is our promise. Through every era, geopolitical uncertainty, reforms, liberalization, globalization, PhD CCI is committed to driving a sustainable development and empowering business to make a meaningful impact in today's global. Built upon it. And today, we are here to make sure both stand strong together. We are not just discussing school safety, we are designing a future where every corridor feels like confidence and every classroom feels like home. On behalf of PhD Chamber of Commerce and Industry, I welcome you all to the National Summit on Safe Schools Leadership, where ideas take the stage and action takes the lead. और हाँ, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आज हम जब सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो कृपया अपने मोबाइल भी सुरक्षा मोड पर रखें, कृपया उसे म्यूट कर दें। सभी से अनुरोध करती हूँ, राष्ट्रगान हेतु कृपया अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम प्रार्थना के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्पों को आमंत्रित करते हैं। कहा गया है, प्रार्थना वह शक्ति है जो मन में स्थिरता देती है और जो वातावरण को पवित्रता देती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्प्रिंगडेल स्कूल पूसा रोड के प्रतिभाशाली छात्रों को, जो अपनी मधुर वाणी और सुरों के माध्यम से इस पूरे सभागार को शांति, संस्कार और सद्भाव से भर देंगे। तथा सभी सम्मानित अतिथियों से भी निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं और कार्यक्रम का शुभारंभ साथ ही करें।
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व सबसे पहले हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, जो न केवल इस अमूल्य आयोजन का अवसर लेकर आया, बल्कि अपनी वर्षों पुरानी परंपरा की तरह अपना भी ज्ञान, सहयोग और प्रगति के दीप जलाता आ रहा है। भारत के आर्थिक विकास की इस लंबी यात्रा में यदि किसी संस्था ने निरंतर प्रगति का दीप जलाए रखा है तो वह है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साल 1905 में पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित यह संस्था उस समय व्यापार और उद्योग की आवाज़ बनकर उभरी। छोटे से दफ्तर से शुरू हुआ यह सफ़र आज एक राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख वाणिज्य मंडल के रूप में आपके समक्ष खड़ा है। स्वतंत्रता से पहले यह संगठन व्यापारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता था और आज़ादी के बाद देश के आर्थिक निर्माण में सक्रिय भागीदार बना। सन 1979 में इसके अपने भवन पीएचडी हाउस की नींव रखी गई, जो इसके बढ़ते प्रभाव और मजबूत पहचान का प्रतीक है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में इस संस्था ने उद्योग, व्यापार और विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज पीएचडी चैम्बर देश और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु की तरह कार्य करता है। नीतियों पर सुधार देना, विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अवसंरचना, विमानन आदि में नए अवसरों की राह बनाना इसका निरंतर प्रयास है। इसके साथ ही यह संस्था अपने आदर्श वाक्य इन कम्युनिटीज लाइफ इज एंड पार्ट ऑफ इट, यानी समुदाय के जीवन का हिस्सा बनकर सेवा करना को सच्चे अर्थों में निभाती है। 120 सालों से अधिक समय से पीएचडी चैम्बर न सिर्फ व्यापार को दिशा दे रहा है, बल्कि भारत के उज्जवल आर्थिक भविष्य का विश्वसनीय साथी बनकर आगे बढ़ रहा है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह पहला अवसर है जब पीएचडी चैम्बर ने विद्यालयों के साथ मिलकर सुरक्षा और उत्कृष्टता के ऐसे सार्थक संवाद को जन्म दिया है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं पीएचडी चैम्बर का। वास्तव में ऐसे संस्थानों के कारण ही शिक्षा, संस्कृति और नवाचार एक साथ पल्लवित और पुष्पित होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां पीएचडी चैम्बर के। Ladies and gentlemen, we now move into a moment of honor, where we express our gratitude to leaders who continue to strengthen the safety fabric of our schools and our city. May I request Shri Hemant Sapra, Chair, Safety and Fire Task Force, PhD Chambers of Commerce and Industry,
to kindly join us on the dais and present a memento to Shri Raja Iqbal Singh, okay. Please present a memento, Ma'am Usha Ram, Dr. Usha Ram Ma'am, Senior Educationist, to please facilitate Shri Rajendra Singh, Member and Head of Department, NDMA. May I invite Dr. Jitendra Singh, Deputy Secretary General, PST Chamber of Commerce and Industry, to kindly felicitate Shri Ashwani Kumar, IAS Commissioner, Municipal Corporation of Delhi. May I request Shri Rupesh Pandey, Senior Secretary, PHD Chamber of Commerce and Industry, to present a token of appreciation to Shri Vivek Srivastav, IPS, former Director General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards. And finally, may I invite Ms. Oshima Mathur, Principal, Navy Children's School, to felicitate Shri Devendra Gill, Director, Delhi Metro Rail Corporation. Next. Oh, he is not here. Okay. We are still waiting for sir. I would now like to invite Dr. Usha Ram, Senior Educationist, a visionary leader whose work has empowered schools to build safe, compassionate environments for every learner. Ma'am, may we invite you to set the tone for the day with your guiding thoughts. Thank you, dear. A very good morning to all of you. We have already set the tone. We had the Sarvadharm prayer from Springdale, Spusa Road, and we already have some felicitations today. We are waiting for others to be there. And but thank you. We can see quite a number of people there. So others we are expecting any time. Respected chief guest, which we are expecting, Shri Raja Iqbal Singh Ji, which we are expecting any moment, and our distinguished dignitaries who are on the dais, and eminent educationists, visionary school leaders, dedicated teachers, passionate child right advocates, honored delegates, and my dear friends, a very warm welcome to you all. It is both a privilege and a profound responsibility to stand before you today as the convener of the National Summit on Safe Schools. Leadership, I extend my heartfelt gratitude to every one of you for being a part of this critical national dialogue on one of the most important issues of our time, the safety, security, and well-being of our children in schools. My special gratitude and heartfelt thanks to PhD CCI for organizing the National Summit on Safe School Leadership. My special gratitude to Dr. Jitendra Singh Ji, who was all the time with us when we were preparing, and Shri Hemant Sapra Ji, thank you, and Shri Rupesh Pandey Ji. He is a very quiet person, but all the time he was there with us for organizing this summit. So I really have special gratitude and regards for all of you for organizing this program and giving us so much of support.
Whenever I came here, I said, this is not there, so you were always there to help us out. Thank you. A school is not merely a place of academic learning. It is a second home, a space where values are shaped, confidence is built, and future are imagined. Every child who walks through the school gate should do so with trust in their heart, trust that they are protected, respected, and nurtured. Safety is not an option addition to education, it is its very foundation. In today's rapidly changing world, the meaning of safe schools has expanded far beyond physical infrastructure. We now speak of emotional safety, digital safety, mental well-being, inclusive environments, disaster preparedness, and protection from abuse, bullying, neglect. Leadership, therefore, is no longer about administration alone. It is about compassion, vigilance, vision, and accountability. This summit is a powerful platform for with policy meets practice, where the experience meets innovation and where challenges meet collective solutions. Over the course of today's deliberations, we will reflect on best practices, examine real-world challenges, explore legal ethical responsibilities, and most importantly, reaffirm our shared commitment to safeguarding our children. As school leaders and stakeholders, we must remember that a truly safe school is built not only with CCTV cameras and protocols, but with empathy, strong relationships, clear values, trained educators, aware students, and engaged communities. Safety begins with leadership that listens, acts, and inspires. Let this summit not remain a ceremonial gathering, but become a catalyst for measurable change across our institutions. Let us move forward with renewed commitment, strengthen collaboration, and actionable strategies that reach every classroom, every corridor, and to every child. With these thoughts, I once again welcome all to the National Summit of Safe School Leadership. May today's discussion enlighten us, empower us, and lead us towards building schools where every child feels secure, valued, and free to dream. Thank you. Jai Hind. Mr. Devinder Gill, Professor Srivastava. Srivastava ji और Devinder Gill, Professor Srivastava. Which one are you talking about? May we now request Professor Sridhar Srivastav, Educational Survey Division EST and Dean NCRT, to come on the dais, to be felicitated by Dr. Jatinder Singh, Deputy Secretary General, PhD Chambers of Commerce and Industry. And finally, may I invite Ms. Oshima Mathur, Principal, Navy Children's School, to felicitate Shri Devinder Gill, Director, Delhi Metro Rail Corporation. Okay, the madam, please. We now welcome Dr. Jatinder Singh, Deputy Secretary General, PST Chamber of Commerce and Industry,
whose guidance and foresight continue to strengthen this mission of safer schools. May I invite you, sir, to formally set today's momentum in motion with your words. Thank you, ma'am. In fact, Dr. Usha Ram has already set the motion and momentum and gave a lot of kinetic energy to all of us. So thank you, ma'am, for actually laying the foundation of this very important national school on safe schools leadership. On behalf of PhD Chamber of Commerce and Industry, I welcome our guest of honor, Shri Rajendra Singh Ji, Member and Head of Department, National Disaster Management Authority. A big round of applause for Rajendra Singh Ji. In fact, he has been very supportive of all our interventions related to disaster management and safety and fire at PhD CCI. I also have the opportunity to welcome Shri Vivek Srivastava Ji, IPS, former Director, Directorate General of Fire Services, Civil Defence and Home Guards. Thank you very much, sir, for being a part of this very important session. We are very much thankful to our guest of honor, Professor Sridhar Srivastava Ji, Professor, Educational Survey Divisions and Dean Coordination, NCERT. Thank you very much, sir, for your gracious presence. And special mention of Shri Dvinder Gill Ji, Executive Director, DMRC, for his gracious presence. Thank you very much. And in fact, the leadership whom this Fire and Safety Summit, is being orchestrated at PhD CCI, our very beloved Shri Hemant Sapra Ji. Thank you very much, sir, for guiding us. So good morning again, and on behalf of PhD Chamber of Commerce Industry, which is a 120 years old organization, I welcome you all, our august audience, all our delegates, our school principals, faculty members, administrators, HR heads, safety experts to this very, very pivotal and pertinent Safety Schools Leadership Summit. In fact, in PhD CCI, we touch base all the sectors of economy, and we have seen that safety and fire element is sector agnostic. It has to be a part and parcel of each and every dimension of infrastructure, be it a hard infrastructure or soft infrastructure, be it a school, a hospital, industry, any building, any infrastructure, any brick and mortar system. The safety and fire has to be ingrained as the DNA of that particular thing. So this safety and fire committee at PhD CCI, we have divided this into 4 segments. One is on safety in the unorganized sector and in MSMEs. One is the school safety. One is the digitization of safety norms, and the 4th one is road safety. And in fact, these verticals seems to be different, but as a one, they in fact encompass one single purpose, that is reducing preventable risks through awareness, action, and accountability. And school safety above all is central to this mission, because the habits the children learn today, the habits, the culture which is being built in any school ecosystem, that actually shape tomorrow's safety culture. And today, this summit, in fact, it has brought all important leaders to share one belief that every child deserves to learn, grow, and dream in an environment that protects both the bodies as well as their minds. So when a child steps in a school gate early in the morning, they carry infinite potential, they carry a lot of dreams, they in fact have a lot of, sort of a reverberance in them, a sort of, lot of versatility in terms of their ideas. And in fact, it is our duty to ensure that this particular potential, it is protected, it is respected, and it is allowed to flourish. And safe schools, it is not only related to, the locked doors or maybe like something like fire drills that we routinely do. It's beyond that. It's a multifaceted commitment which encompasses not only the infrastructure resilience, the transport safety, but most critically also the emotional and mental wellness of our children. And this summit is a response to that particular need. And using a real life analogy, what we can do, we can actually consider the school like a 3-legged stool. Safe building and infrastructure is one leg, the emotional and mental well-being is the second leg, and the safe transport forms the third leg. Even if one leg is unstable, the entire school tips and it puts children at risk. So this summit actually helps reinforce
all three legs together so that no child's safety depends on mere chance. And a few number, in fact, I was going through some of the data and it was mind-boggling. In fact, I was going through the data from the National Disaster Management Authority. It says that over 30% of schools in India lack essential safety infrastructure like proper exits, firefighting equipment, and building safety certification. I was going through one of the reports of the UNICEF State of the World's Children report. It reveals that nearly 1 in 7 children aged between 10 to 19 they experience mental health conditions, yet most remain undiagnosed and untreated. And I was going through the data of the Ministry of Road Transport and Highways. It reveals that school transport related incidents account for around 6 to 8% of the child road fatalities annually. And this is often due to overcrowded buses, lack of trained drivers, or maybe sometimes poor regulatory, oversight. So these are, very, very tough data. I think we need to work very, very stringently on them. So statistics show the problem, the issues and challenges, and the leadership in this room, it will show the solution as we, go ahead in this summit. And that is why this summit matters a lot for all of us. So the safety school, the all amalgamation of all decision makers, the subject matter experts we have today, it's not just a mere summit. It is basically a call to action. And in this day-long summit, we will deliberate on some very, very important tangible solutions, from like adoption of innovative safety technologies and student tracking systems in transport, to the design of trauma-informed classrooms and digitized compliances audits that make safety measurable, not just aspirational. And as we begin this summit, I invite you not only merely to listen, but to lead. And let this gathering basically invite a moment, as rightly said by Dr. Usha Ram, that one that ensures that next headline about school safety is not a tragedy, but a triumph. Thank you very much indeed. Thank you, sir. Your leadership ensures that advocacy transforms into meaningful action. May I now invite Shri Hemant Sapra, Chair, Safety and Fire Task Force, PhD Chamber of Commerce and Industry, a dedicated force strengthening the fire safety and preparedness across educational institutions. Sir, we request you to share your insights with the audience. Thank you very much. Welcome on all the dignitaries on the dais. Thank you for joining us. Welcome all the participants sitting here in the auditorium. Well, what is happening today in this hall, the whole idea, whole concept started from, our background is, especially my background is from, we have been into the field of protecting industrial safety workers across India. Now we saw that once you grow up, you go out to work. When you're working out there are all kinds of safety hazards. So you can fight with those safety hazards, but unless it is there in you inherent that safety is important for you. अभी इंडिया में कल्चर क्या है, मेरे साथ कुछ होना है तो ऊपर वाला जब चाहेगा हो ही जाएगा. इसका मतलब कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की नीड नहीं है आपको. यू डोंट नीड टू लिव सेफली. सड़क क्रॉस करनी है तो राइट देखो ना लेफ्ट चले जाओ, गाड़ी ने मार दिया तो ऊपर वाले ने बोला मार देगा. So that was the problem that we saw in the adults in India. We went out to see how the Western world is. हम US को देखते हैं, यूरोप को देखा, जापान को देखा, even in Dubai. When we saw there, every individual cares and is concerned about his own well-being and safety. So now, unless you are yourself not
prepared or it is not ingrained in you, you will never demand for it. So the difference in the West, the developed nations and developing nations is that people know their needs and they demand their needs accordingly. And how do you know the needs? When we went further down, we saw that all the advanced nations in their schools, their children are ingrained with these things. It is inherently built in the children in the school times, while they are going to school, how to keep themselves safe. See, disasters will happen, fires can happen, but do they know how to safeguard themselves or how to react when such situations come? You walk into any Japanese school and a small child going into the even first class 1, and he knows if a disaster is going to happen, what he is supposed to do. And they'll do it so calmly that they're not running around or rushing around. So that's why we took this project up, and we thought, if developed nations can do it, why can't we do that in India? Why can't we educate our children right from the day they enter the school, right at our homes, the day they are born? We need to build this culture of safety into them from that level, so that once they grow up, it is so inherently built in them that the whole nation, this will seriously transform our nation. Our whole nation will become a safe place to live in. So I hope today, the whole day, we'll be talking on various subjects on the same matter, which should all lead to a safe India in the coming times. Thank you very much. Thank you, sir. Preparedness truly becomes the first form of protection. We are now privileged to welcome Professor Sridhar Srivastav, a guiding force integrating safety and well-being into national curricula. Sir, may we request you to enlighten us with your perspective. Good morning. Honorable dignitaries sitting on the dais, please excuse me for not taking individual names due to paucity of time of the format of the program, as well as from my side also, I have to move out of town. And my dear school leaders sitting in this hall, children, parents, and all other presents. It's really my great privilege to stand here, and I'm very thankful to PSD CCI for inviting me. And I am getting an opportunity to place forth certain thoughts which is going in my mind, keeping in view the title and tone of the program today. When I entered the hall, one of the dignitaries sitting here, Mr. Sapra, asked me a very pertinent question which runs through the mind of child or the parents, grandparents, to a person who is coming from NCERT. कि साहब आप लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, because we know policy is there. So the immediate response that came to my mind was that कि हम बच्चों को चाहे जो कुछ भी पढ़ाएंगे, बच्चों को जो सीखना होगा, प्लीज़ जो सीखना होगा वो सीख ही लेंगे. It was a very rustic response which came to my mind, but I have a meaning, deep meaning behind that. We are living in a very different scenario. You all know, we see the media, we see now the media is available in your hand. And
situation has changed a lot. We are a very big population. We are the youngest population. The whole world hold aspiration and looks towards us. But we have to also think for a moment that in what kind of environment we are presently going through. You know, the advancement on one hand and the available technological tools and other gadgets and other things in the hand of children gives a lot of opportunity and at the same time a lot of risk also. And when Dr. Jatinder Singh ji was mentioning about 3 domains which are going to be discussed today, one the infrastructure, second the mental safety, mental health, and the third the transportation and just movement to and back home, to school and back from school. So the points which I am going to place forth here in a short 4 to 5 minutes is that that pertains to the mental safety. You know, recently, only a few days back, there was news headlines that Sridhar Vembu, many of you must be knowing, the Johio Corporation. There was a statement from Sridhar Vembu that yes, come to me without university degree, I will be offering the job. And this is not any very, very strange happening in India. The trend in US also is going on that even the high school graduates are being offered jobs through different rigorous procedure, the hackathon or some problem solving testing, and they are given, and everybody is very democratically participating in that. And after the graduation at high school, they are entering the world of work. My point is indicating, and it matched with the thing, that if we give students for experiential learning opportunity, then they will learn what interests them and they will move further. You know, NCF is there, National Curriculum Framework is there, and a lot of things are talked, and we talk many things, and at times really we feel also that how to proceed further, how to implement that. We have given in National Curriculum Framework, and many of you school leaders and Dr. Usha Ram and other dignitaries who are into such kind of thinking must be aware that the aims of education has been given in the curriculum framework, and we all shall be agreeing to that, that rational thought and autonomy, that's the first aim. Second is mental and physical well-being. The third aim of education has been given in the curriculum framework 2023. That's a very recent document you all must be knowing. Rather, I will urge you all to go through that, certain pages, initial pages or executive summary. The third aim of education has been given there as democratic and community participation. The fourth aim of education has been given as economic participation. Economic participation is also very important. We are a big population, and this idea had been telling before such audience that global citizen, holistic development is all important, but we should make our children able to be participating in the GDP in this country also. So the economic participation is also very important. And the fifth aim of education has been termed there as cultural participation. Cultural participation means the children should come out from the school with such kind of thinking that they should feel proud of being an Indian, and they should feel proud in those cultural and south ethos of this country. And there are many things. They are there in the Ayurveda, they are there in the respect for elders, they are there in the way in which we lead our life, family life,
and we respect for each other. There are certain frugal practices in this country which are very good for health, which are very good for many things in our day-to-day life. We should feel pride in that. So these 5 aims of education are there. But for all these aims of education, I think we all sitting in this auditorium will agree that it is very important that schools should be safe, and the environment should be healthy, and the children should feel mentally sound and energetic, vibrant, expressing, interacting. So this is a very important point, and today's this deliberation that we are going to see here is very, very interesting, and more than that, it is very, very important. And the second point I want to make here, that the curriculum aspect also talks about competency, and we are making many efforts, and the most important effort that I would like to place forth here, because personally as a professor I belong to that group, that is educational measurement and evaluation and assessment. My request to all school leaders who are present here, that we should not put in the system the pressure of too much assessment. And I make a request to parents also. Many of you sitting here are parents also. Please don't put pressure of performance on children. There could be pressure of pursuit. Pressure of pursuit is important, because as a parent we should be telling to our children that, okay, you like this subject, you move further. You like this subject, you work harder, or like this. But not the pressure of performance that you have to come to this yardstick, your friend is coming to that yardstick. And these kind of things, very important in the sense, and as well Jatinder Singh ji was mentioning, that the next time the school safety guideline should not come in the form of any tragedy. I just, you all must be knowing, I don't want to name that incident, but in recent time we saw one such incident. And for that I would like to say that curriculum framework also talks about school culture and school processes, that lays most emphasis on dialogue between the teacher and student, and among the teachers, between the school leader and teachers. And herein I would like to mention a few things, because I am getting this opportunity, this forum. NCERT has come out with a very good guideline. Good in the sense means comprehensive guideline named Ummeed. Many of you might be knowing that Ummeed is the acronym of Understand, Motivate, Manage, Empathize, Empower and Develop. And that guideline, along with other things, have been mentioned in a recent Supreme Court judgment also, only this year. So kindly see that. I would also like to mention that NCERT runs a helpline, and please spread this information among the parents and all stakeholders who you come across. And there is one live interactive session also, which is in the daytime also, and that repeated as 5 to 5:30 in the channels which are there from NCERT. And that also talks about all these things which pertain to mental health of children, and the other way how the teacher can be more empathetic and more interactive with students. So these are a few points that I wanted to place before you. And we all know now the emphasis on competency. So competency, there is emphasis on skills, but competency also can be different, having different pace for different students. So within a classroom also, the teacher should be made aware that not all
the members of class can be at same pace or at the same level. So these kind of nuances should be very clear in the mind of teacher. And I would just end my words by reiterating one statement from the first principle on which the national education policy rests, is that we have to identify and foster the individual capability or ability of each and every child who is in the school system. So this is a very important point, and with these things I again I am really very grateful to PhD CCI for giving me opportunity and adjusting to my request, and I have been given a chance to speak at the start. And with these words, I thank you all for listening to me. Thank you. That was quite informative, sir. Thank you so much. Your work ensures that learning and safety grow hand in hand. Please join me in welcoming Shri Vivek Srivastav, IPS, a national expert ensuring institutions respond swiftly and wisely in emergencies. Sir, may we request you to enlighten us with your experience in making institutions emergency ready. Shri Rajendra Singh Ji, member NDMA and Chief Executive Officer of NDMA. Shri Devendra Gill, Executive Director DMRC. Professor Sridhar Srivastav, who just spoke and who is also from the NCERT. Shri Hemant Sapra Ji, Dr. Jatendra Singh, Dr. Usha Ram, erstwhile principal of Lakshman Public School. I remember that because my wife used to teach there earlier. And last but not the least, Shri Rupesh Pandey, who is actually the moving force for organizing most of the things here. I have had opportunity to interact with him earlier. Other distinguished dignitaries, member of PhD CCI, education leaders, policy experts, partners in nation building. Now let me start by saying that while I was DG of Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guards, we had received instructions from the PMO and from the PM itself that two things were very close to his heart. In the omnibus context of safety, the two things which were there was fire safety, especially with respect to hospitals, and safety standards with respect to schools. So there was a general directive that we should be organizing and sensitizing schools and hospitals regarding this. So while I was heading that, one of the conferences was there for hospital safety. We could not actually go ahead for school safety, and actually I was very happy that PhD CCI had taken initiative for actually organizing this national level conference for such an important topic as safety of schools. I'm also actually happy that you have enlarged the scope of this safety, not only limiting itself to fire safety. Let me start by saying that it is actually a privilege to address this national conference organized by the PhD Chamber of Commerce and Industry, focusing on one of the most critical aspects of our collective responsibility: building a culture of safety and preparedness in schools across India. I commend PhD CCI for convening this dialogue that bridges education, governance, and societal well-being. Now, I was also going through the brochure of the PhD CCI. So, actually, one of the first objectives which was given in that brochure and for this conference is to promote a culture of safety and preparedness in schools.
This aligns directly with our national priorities under the National Education Policy of 2020, which emphasizes holistic, safe, and inclusive learning environments. A culture of safety must not remain reactive or event specific. It has to be ingrained into the ethos of every institution. Regular safety audits, disaster preparedness drills, and awareness session for students, teachers, and parents should become a non-negotiable part of school operations. The second objective, that is to advocate for the inclusion of safety education within the formal curricula, is both timely as well as essential. As children today grow up in a world marked by rapid technological, social, and environmental changes, safety education must evolve beyond basic emergency response. It should nurture critical thinking, empathy, emotional resilience, and responsible behavior. Policy frameworks at state and national levels should therefore mandate safety education as a structured discipline supported by training modules, teacher capacity building, and assessment benchmarks. The third objective, which was given in the brochure, which was to address emerging challenges like cyberbullying, fire safety, mental health, and road safety. This highlights the multi-dimensional nature of the issue which we are actually dealing with. Cyber safety requires coordinated legal, technological, and educational interventions. Fire and disaster safety demand infrastructure compliance with the National Building Code and periodic inspection protocols. Road safety education should be embedded from the primary level, supported by experiential learning such as traffic park visits. Most importantly, mental health safety requires building trust-driven systems in schools. Through counseling services, peer support programs, and open conversation that dismantle stigma. The fourth objective, which was developing practical age-appropriate safety modules for implementation across schools, is perhaps the most actionable. In this connection, I also actually recall that there was actually a meeting, which was again chaired at NDMA, sir, if you may recollect, in which there was a proposal that we should actually incorporate some of these safety, especially fire safety measures, in the curricula of the NCERT at the 5th level. We had actually prepared a 3-4 page curricula also and given to the Joint Secretary, Ministry of Education, that they may consider incorporating these in the NCERT curricula. Why we want to emphasize this is that, as has been said by some speakers earlier, if this safety consciousness gets actually ingrained in our children and the teachers, then later on they will demand a minimum safety level, and it will not be what we currently see, an atmosphere of permissiveness. Many places I see, especially in schools and even in colleges, they say that we have to take this fire clearances. So that is to be taken on paper and not actually implemented on the ground. I would say our consciousness should change that this is a necessary expenditure and not just a legal or a formal formality actually to be complied with. So these modules, what I'm trying to say, must be adaptable to diverse regional contexts, language backgrounds, and school settings, be it urban, rural, or tribal alike. Now, there is one aspect which I thought I should focus on. Maybe it will not get the attention which in future it will deserve. So this is actually, I want to focus on this upcoming artificial intelligence, which is quietly redefining childhood. In classrooms, it is transforming how students learn, are evaluated, and even how they process ideas. At home,
It alters play patterns, supervision, and the meaning of friendship, sometimes replacing human companions with digital ones. This emerging AI generation, if one may call it, faces opportunities no previous generation has known, but also psychological risks that are only beginning to be understood. A recent study by Center for Democracy and Technology, that is a US-based actually survey, it found that over a third of teenagers, I repeat, over a third of teenagers, especially in the USA, find it easier to talk with, if my voice is heard, then I can actually continue. Yes. A telling sign of changing emotional dynamics. Tragic cases, actually there is a reported case in which, such as the suicide of a young user in USA after extended interaction with ChatGPT. And the ChatGPT also suggested to the teenager how he can write a suicide note. So unless these things are actually managed, these actually can become very, very troublesome, and it will grow in future as our children also take to AI more and more. OpenAI reports that it is actually a survey, that a small but significant fraction of users display signs of severe mental distress each week. While AI can be a capable teacher and an endlessly imaginative playmate, its constant availability may shield children from discomforts necessary for emotional growth. Kindly understand, for development of a holistic personality, we must learn to deal with failures. This AIG and chatbot, they only comply, they will comply with whatever instructions you give. So that this social learning, how to adapt, how to feel empathy for a person who is not so well endowed, etc., is likely to diminish. So as child development researchers caution, the human brain has never before encountered perfect partners. And the long-term effects on empathy, resilience, and social skill remain uncertain. So this is a very, very big area of concern. In advancing these goals of this conference, public-private partnership will play a decisive role. The private sector's strength in innovation and digital solutions can complement governmental initiatives. Together, we can institutionalize safety literacy programs, introduce digital safety dashboards, and promote safety clubs within schools, nurturing student-led participation. As we deliberate today, let us remember, safety is not merely compliance. It's a commitment to dignity, security, and the right to learn without fear. The outcomes of this conference must feed into actionable policy frameworks that every school, every educator, and every family can own. Thank you. Thank you, sir. Your expertise turns caution into confidence. May I now invite Shri Rajendra Singh, a key architect of disaster-resilient school ecosystems across India. Sir, may we request your guidance on this? Welcome Raja Iqbal Singh ji with a big round of applause. Yes, sir. Welcome.
Good morning, everybody. Distinguished dignitaries, colleagues from PhD chambers, experts, educators, industry partners, member of DRR communities, dear friends. It is an honor to join you today at this national workshop on school safety, a subject that is not close to NDMA's mandate, but also close to every parent's heart, every teacher's conscience, and every policymaker's responsibility. And I thank Dr. Jitendra Singh ji, Hemant Sapra ji, Mrs. Dr. Usha ji, and Principal Naval Public School, Mr. Mathur, for organizing and coordinating such a leadership summit. This type of summit and workshop, they really work like a lighthouse in the storm. They do not stop the storm, but can guide the ship to safe harbor. And this is what we are talking about for Viksit Bharat. Although that today's coincide with what a lovely day you people have chosen is the UN Human Rights Day. Our gathering is focused on something deeply fundamental, the safety, security, dignity, and well-being for our children, which is India has nearly 14.7 lakh schools and nearly 26 crore children that they are school-going children, one of the largest young populations in the world. And these 26 crore, they are the future leaders of Viksit Bharat in 2047. तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस 26 करोड़ लोगों को कैसे हम 2047 में एक रिजिलियंट नागरिक, इस देश का एक सुरक्षित और फ्यूचर लीडरशिप हम तैयार कर सकें. Ensuring their safety is not merely a policy objective, it is a national priority, moral imperative, and investment in the nation's future. School safety today is not only the mock drill, earthquake drill, it goes beyond that. It's like a structure, non-structure safety, climate and heat risk, hygiene, health, psychosocial support, cyber security, digital well-being, transportation, road safety, disaster preparedness and emergency response, and above all, creating a culture where every child feel heard and protected. That is what we are here. NDMA's National Guideline on School Safety, our work with the state and UTs, and our engagement with Education Department reflect our commitment to this cause. But the truth is, the school safety cannot be delivered by one agency alone. It is required collective will, coordinated actions, and
community participations. As I said before, school safety is an administrative formality. It is a national commitment, is a constitutional responsibility, and a moral obligations for all of us. NDMA issued a national policy guideline with the aim to making school resilient, prepared, and risk aware. These guidelines are comprehensive and cover every aspect of school safety and children's safety. And these guidelines are not mere document, they are the roadmap for safeguarding our children's future. Honorable Supreme Court has repeatedly underlined that school safety is a non-negotiable constitutional mandate. After the two major accidents, the Supreme Court message was quite clear. And they say school cannot be allowed to function without full safety compliance. And this is the inverted commas. They have said this. So we have to make sure, because the young professors, teachers, and DR experts are here. You have to make sure that the school cannot be allowed to function without the full safety compliances. NDMA Align is monitoring, advisory, and capacity building initiative with judicial mandate. To ensure this implementation of this guideline and school safety, NDMA and Ministry of Education jointly constitute a joint monitoring committee. And this JMC, that is Joint Monitoring Committee, meet regularly. We have been emphasizing that monitoring must be continuous, not episode basis. When the accident will happen, the Joint Monitoring Committee will sit. It should be regular basis. It is a half yearly or it is a 1 yearly. This committee must meet, must take the report from every state and check how these schools are functioning. Some of the initiative that NDMA has undertaken is number one, that school safety engagement program in partnership with the state and UT. As on now, we have just 2 weeks back with the Honorable Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta ji, and LG. We have launched one school safety program for Delhi state, and Delhi became the first state to start this type of program. Out of 5,000 plus schools, as on today, as on now, 2,082 schools are being conducted 2-day safety program for children and teachers. Almost 200 schools already finished, and by another 2 months' time, we will be able to finish 2,082 schools in first phase, and second phase, we are taking over 3,000 more schools. So Delhi will become first state and UT who have completed a school safety program in all schools. 2 points is capacity building for teachers through NIDM, and this is the state institute. Mock drill protocol on earthquake, fire, chemical accidents, and extreme weather concern. We are conducting their mock drill. Promotion of risk education, we are doing it. Integration with Abda Mitra. That is a flagship program of NDMA. Is the Honorable PM. He has started this program first in Gujarat for 25 districts. When he came and here in Delhi, he said, why can't we do this Abda Mitra in some states? So first state, we have taken 30 districts in 25 states. But during the COVID, when every district, few districts have seen this Abda Mitra, 200 Abda Mitra from community workers, then after COVID, every state, every district have started asking, we also want this Abda Mitra scheme. In 2021, we have started this Abda Mitra scheme for 350 districts, and we have prepared, we have trained
1 lakh volunteers from communities, giving them 14 days training, giving them 5-year insurance, and giving them the safety kit. And these are 75,000 boys and 25,000 girls of the Sakhi we have made. After seeing the success of these Abda Mitra, second phase, Yuva Abda Mitra, we have launched in 2024 for Bharat Scout and Guide, NCC, NYKS, and NSS in 315 districts, and for 240,000 young children, and their training is going on full swing. As on now, we have trained almost 60,000 school children towards this Abda Mitra scheme. These are also given the same type of training, kit, and the insurance. And the third phase, which we are starting, NDMA is starting Abda Mitra scheme, is for all the women help group. It is around 8 lakh such units are there, and 36 lakh ladies are working with this women help group. We want to take this training, Abda Mitra training, to every house and every community, so that ladies also will be well prepared and they can educate this safety program in their schools. So this is what we are doing. And finally, I will say, before I conclude, my 3 points to you people. My first point is a child-centric approach. At the heart of school safety are our children. Just remember this. The heart of our safety, school safety, our children, not building, not curricula, it is only and only children. A child-centric approach means design safe school infrastructure, ensuring inclusive access for children with disabilities, training teacher and staff as first responder, building age-appropriate safety awareness, strengthening early warning and weather hazard disruptions, and creating a supportive environment where children feel empowered. A safe child today means a resilient nations tomorrow. When policy remember the child, the system begins to respond with compassion. My second point will be the school is the whole of government approach. This is the Team India approach. People-centric approach, Team India approach, and community-centric approach. When I talk about something about disaster, these 3 points I always mention. And here I'll say the whole of government approach. Whole of government with school safety requires seamless coordination among all the stakeholders. It is the education department, it is the home affairs, it is the health, it is the woman and child, it is the urban and rural development, transport, police and fire services, and local bodies and disaster management authority. Until unless you don't involve the local bodies, local authorities, nothing will move forward. You have to. It is not that NDMA will do, school will do, or school department will do. Everybody has to come together, and then only we will be able to take this forward. NDMA experience, the most successful model are those whose every department contributes to prevent, preparedness and response, not just after any accident, not for just relief. When departments work together, safety becomes a system, not a slogan. Just always remember. And my third point is community-led approach. A school safety starts at home and live in the communities. Always remember this. The community means parents, local volunteers, school management committees, civil defense, Abda Mitra, healthcare workers form the real backbone of school safety. When I said Abda Mitra, so all the schools, they must see what is in around Delhi. We have all the districts, we have given them 200 Abda Mitra, almost 2,000 Abda Mitra
in first phase, we have already given them. Now, my request to all the school, who are present here, kindly go to the nearby and see who are these Abda Mitra. Sometimes call them to your school, talk to them, ask them, why don't you come and mingle around with our children and give them some safety norms. Prepared communities prevent disaster from becoming a tragedy. I congratulate PhD Chambers for organizing this timely workshop. Industrial environment is essential for safe school infrastructure, technology, risk-informed construction, digital safety tool, transport safety, innovations, and building a culture of preparedness across private and private. Today is an opportunity to create partnership for safe school, safe communities, and safe India. On the day of a UN Human Rights Day, let us affirm that every child has the right to safe learning environment, a right that we must uphold not only through policy but through practice. Let us turn school safety into a Jan Andolan, a people's movement. Let us build a system where safety becomes a second nature. Let us ensure that every school in India stands as beacon of security, learning, resilience, and hope. And thank you very much. Jai Hind. God bless you all. Thank you, sir. Your guidance indeed helps ensure readiness at every level. Ladies and gentlemen, with a loud and enthusiastic applause, let us welcome our chief guest for the day. May I request Shri Hemant Sapra, Chair, Safety and Fire Task Force, PhD, CCI, to welcome Shri Raja Iqbal Singh, Honorable Mayor, Municipal Corporation of Delhi. Yes. We now welcome Shri Devendra Gill, whose efforts within our city's most trusted transit system reflect the highest standards of safety and discipline. Sir, may we request you to address the audience. Thank you, ma'am. Chief guest for today's summit, Shri Raja Iqbal Singh, Mayor MCD. Dignitaries on the dais, I see many senior personality of the dais, the audience, participant. A very warm good morning on a winter day. Well, I will be actually sharing my thoughts with the two different, very contrasting experiences. One which I have very recently had on last Sunday when I was visiting Chandigarh. So I took up a cab from railway station to go to my destination. And then, as is my bad habit, I started conversing with the cab driver. So he was narrating to me how many hours he works, what actually he does for his livelihood. And he said, सुबह मैं टैक्सी चलाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ और दोपहर को स्कूल ख़त्म होने के बाद उनको ड्रॉप करता हूँ. तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछा कितने बच्चे हैं. बोला 10 बच्चे हैं. उसकी स्विफ्ट डिज़ायर कार थी. तो मैंने उसको कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पे कांस्टेबल पकड़ते नहीं हैं. तो उसने घूम के मेरी तरफ देखा 180 डिग्री. बोला उन पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछते जो अपने बच्चों को मेरी गाड़ी में भेजते हैं. मेरे पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि मैं 300 रुपये कम लेता हूँ, वो लोग जो 6 बच्चे ले जाते हैं.
I had no answer to him. He looked into my eyes and asked this question from me. I had the fortune of spending 2 weeks in Tokyo when I was sponsored for a 2-week-long training program on construction safety in metro project through JICA, our funding agency. And when I was checking in, we were made to stay in JICA hostel. So when I was checking in way back in 2011, I was told by the person who handed over the keys of my room, he said, in your balcony, there is an opening, there is a slide. In case of an earthquake alarm, you have to simply jump into that and you will come down sliding. I was on the 6th floor of the training hostel. Two very contrasting experiences. This is how a nation behaves to actually protect its citizens, how concerned we are for our own safety. Many of the topics have been already covered by majority of the speakers, so I will just narrate few my own personal experience. I was associated with a voluntary body, Fire and Security Association of India, as its Delhi president for 3 years, 2018 to 2021, and then the regional director for another 2 years from 21 to 23. And it's a voluntary organization. We train people on how to respond to fire emergency, security threats, etc. And when I took over, as is my passion, we started looking for opportunities to going to schools, housing societies, RWAs, teach people how to rescue people, how to save yourself. And my experience, जो मेरे मन की पीड़ा है वो आपको बता देता हूँ. हमने स्कूलों के लिए एक बनाया प्रोग्राम, PPT बनाया, वॉलंटियर्स खड़े किए 25-30, उसके बाद स्कूल्स में जाके लोगों को ऑफ़र करना शुरू किया. एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? आज मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ कि मेरे सामने इतनी सारी प्रिंसिपल मैम्स बैठी हुई हैं. अदरवाइज किसी बड़े राजनेता को मिलना आसान है, स्कूल की प्रिंसिपल को मिलना बहुत मुश्किल है. 90% से ज़्यादा हमें वापस भेज दिया गया कि मैम के पास टाइम नहीं है. हम वॉलेंट्री काम कर रहे थे. फिर हमारी एक वॉलेंट्री टीम में एक सिख जेंटलमैन थे. उन्होंने बोला आप SGPC के पास चलते हैं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. रकाबगंज में हम गए. उन्होंने बोला हमारे बहुत सारे गुरुद्वारों के साथ स्कूल हैं, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग करिए. हमने वहाँ जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए. And then unfortunately the COVID came and I was training in a school at पहाड़ी पे है GK में. वहाँ से जब ट्रेनिंग वापस करके आ रहा था तो I was tested COVID पॉजिटिव. तो उसके बाद फिर हमें रोकना पड़ा वो. लेकिन उसके बाद फिर हम इसको दोबारा री-इनिशिएट नहीं कर पाए. थैंक्स टू PhD CCI that this mission has again started. We have everything ready-made. PowerPoint presentations are ready, volunteers are ready. इनफैक्ट स्कूल की कुछ गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि आप डेमो करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो जाएगा तो भरा नहीं जाएगा. फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होती है भरने में, बहुत लंबा प्रोसेस है. तो सप्रा जी जैसे कुछ विलिंग मैन्युफैक्चरर पास आए, जितने एक्सटिंग्विशर ले जाने हमसे ले जाना, खाली हो जाएगा हमें वापस कर देना. So there is no dearth of resources. The only thing is that we have to create a mindset, and first of all, many of people have said that we need to value life. Life of our own, life of our children, life of society. Our Honorable Prime Minister has given us a call for developing this country as developed nation by 2047. How can we say ourselves as developed nation when school children die in accidents which are manageable? How can we claim to be a developed nation when young people die while dining in Goa?
How can we call ourselves a developed nation when 1.75 lakh people die on roads, in road accidents reported? So I think missions like what PhD CCI is doing, I think we should all come forward, join hand. I had a script of around 4 or 5 pages which narrates incidents of schools. Kumbakonam, many of us remember, way back in 2004, Tamil Nadu, 90 children died. In Dhabwali fire incidents, 1995, Haryana, approximately 400 people, many of them children, died in a fire in a temporary Shamiana. Surat coaching center fire, we know 2019, we again in a coaching center, there were 22 students who got killed. And then when I was looking for similar incidents worldwide, I had to deep dive into 1908 in Ohio, USA, a Collingwood school fire, 172 deaths. And 1958 Chicago, again USA, Our Lady of Angels School, where again 95 school children died. So these are very, very painful stories and examples to give. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के टेबल में 3 लेग्स थी, मेरी टेबल में 6 लेग हैं. अगर आप वो 6 चीज़ें करें तो टेबल स्टेबल रहेगा. Start with schools if we want to reduce injuries, miseries, loss of life, sorrow. We have to catch children young. Strengthen community preparedness, the mock drills. Enforce safe infrastructure and strong regulations. स्कूल के बच्चे कब सुरक्षित होंगे? जब स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित है, जब स्कूल की बिल्डिंग में सफिशिएंट एग्जिट्स हैं, जब स्कूल में लीस्ट अमाउंट ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल यूज़ हो रहा है. आप में से कितने लोगों को पता है कि आपकी केमिकल लेबोरेटरी में जो केमिकल आप यूज़ करते हैं उनका MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या कहता है? अगर ह्यूमन एक्सपोजर हो तो क्या ट्रीटमेंट देना है? You have acids, you have flammable materials, you have chemicals, corrosive chemicals. So you have to create infrastructure which is safe. फायर सर्विस कैपेबिलिटी बढ़ानी है. मॉडर्न स्कूल हैं, मॉडर्न गैजेट्स हैं, तो वैसे हमें अपनी एमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी बढ़ानी है. एंड टेक्नोलॉजी एंड डाटा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ use of technology is the conflict between safety and security. Security कहता है सारे दरवाजे बंद होने चाहिए, कोई आदमी बाहर से अंदर नहीं आए, लीस्ट एग्जिट्स हों. सेफ्टी कहता है मल्टीपल एग्जिट्स होने चाहिए, इमरजेंसी होने पर सबसे नज़दीक वाली इमरजेंसी एग्जिट से लोग बाहर जा सकें. तो हमारी सभी एग्जिट्स पे ताले लगे हुए हैं और उनकी चाबी किसके पास है? गार्ड के पास है. और गार्ड कहाँ है? आज स्कूल आया ही नहीं है, छुट्टी पे है. तो आपके पास इमरजेंसी डोर्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस which can be coupled with the fire detection system. They become inoperative, the locks become inoperative. You have a panic bar button inside the door. Anybody who is inside the premises can operate it. Nobody from outside will operate. It just cost few thousand rupees. तो टेक्नोलॉजी मेरा एक 5वां लेग है और आख है promote workplace and household preparedness. Many of us don't have any firefighting equipment at home. Majority of the firefighting equipment in societies, RWAs don't care for them. Similarly, in some schools also are not functional. So Japan is a excellent example. You name a disaster, natural disaster, you will find it in Japan. They have live volcanoes. They are on extreme seismic zone.
they have faced tsunamis, but they train their people. And many of us have seen various videos of earthquake occurrences, how cool and calm they are during the tremors. The kids are trained to handle situations in school by simulating chambers. They are put in a chamber which looks like their classroom, and then tremor of different intensity are created to make them feel कि earthquake richter scale 5 होगा तो आपकी टेबल ऐसे हिलेगी, 6 होगा तो ऐसे जंप करेगी, 7 होगा तो टर्नओवर हो जाएगा, और उनको सिखाया जाता है. I think we all collective have to work hard, give our full dedication, and then make ourselves accessible. So my appeal to all principal ma'ams is, I handle a project of 25,000 crore. I have 14,500 people who are working on the project. I sit on 3rd floor of NBCC Lodhi Road. After security formality, anyone is free to meet me, and they come and meet me and talk to me. So please make yourself accessible, and then let us all work together to make the mission of our Honorable Prime Minister of getting us into a developed nation possible true. Thank you very much. Thank you, sir. Your words indeed set us thinking deep about safety and security, and I'm sure under your guidance, we will walk towards development. May we now invite Honorable Mayor Shri Raja Iqbal Singh, a leader ensuring that safety reaches every ward, every school, and every child. So may we request you to share your vision for safer communities and schools. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. मंच पे मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर उषा राम जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे से पहले वक्ता श्री हेमंत सप्रा जी, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, देवेंद्र गिल जी, और आप सभी अपनी अपनी फील्ड के प्रिंसिपल, तो आप हैं ही, एजुकेशनिस्ट हैं, और आपके सामने बोलना, क्योंकि अभी सर कह रहे थे कि प्रिंसिपल्स को मिलना बहुत मुश्किल है. बीइंग मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रिंसिपल को तो मिलना मुश्किल है, मगर अगर आप हम जैसे लोगों की मदद लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. प्लानिंग करना आपका पार्ट है, और इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है कि हमारे जैसे नेता आपके साथ अगर खड़े हो जाएं, फिर दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम हो या कोई भी पब्लिक स्कूल हो, तो काम करना आपको आसान हो जाएगा. वो ये काम तो बिल्कुल सोशल कॉज के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए है. तो मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ पीएचडी का, एक इतना अच्छा जो वर्कशॉप उन्होंने आज किया, देश के सभी एजुकेशनिस्ट को इकट्ठा कर कर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मैं सुन रहा था, वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें हैं ये. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अपने बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि बच्चे ही देश का आधार है, बच्चे ही देश का फ्यूचर है. वो अभी गोवा की बात आई तो सुनकर उस सिचुएशन में उसकी रील भी आ रही है कि छोटी सी गलती की वजह से 25 लोगों की डेथ हो जाना, ऐसा, और ईश्वर ना करे कभी दोबारा ऐसा केस हो, उसकी तैयारी करना ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है. और आप सब लोग जो इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ पीपल जो समाज के लिए एक दिए का काम करते हैं,
तो हम सब की एक कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों की, समाज के लिए, सबकी सेफ्टी की चिंता करना, वो उसको इम्प्लीमेंट करना, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। जहाँ पर आपको कोई भी हर्डल हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हर्डल हो, आपको लगे कि कोई, जैसे सर बोल रहे थे मेरे से पहले कि प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की और प्रिंसिपल मैडम या सर नहीं मिले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, अब प्रिंसिपल मैडम भी सोचेंगे कि सर का फ़ोन आ रहा है तो कोई ना कोई एडमिशन करना होगा। हम समझ सकते हैं क्योंकि लिमिटेशन है, जनरली कोई किसी को फ़ोन ही नहीं करता लाइफ में, और दिवाली दशहरा तो रोज़ होता नहीं है, तो प्रिंसिपल कहेंगे आएंगे और कुछ नहीं, 2 एडमिशन के लिए कहेंगे चलो अवॉइड करो, नई बात समझाएंगे वो फिजिबल होगा नहीं, वैसे ट्रस्टी दिमाग खाते रहते हैं, मैनेजमेंट वाले प्रेशर रखते हैं, यहाँ बच्चों के पेरेंट्स से तंग करते हैं, मगर कई बार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। और देश की चिंता करना, एक विकसित भारत को विकसित तभी होगा जब हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले हमारा फ्यूचर है, वो सेफ हैंड्स में होंगे। किसी भी तरह से बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करना, बच्चों को सामाजिक तौर पर समझाना, बच्चों को सिक्योर करना हर तरह से, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, साइबर से हो, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और जो टीचर कहती है वही ओके होता है। पेरेंट्स कुछ भी कह ले उसका कंपैरेटिव इम्पैक्ट कम पड़ता है। वो जो टीचर्स हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं, वो टीचर्स को ड्राइव करना ये प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का काम है। तो इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है को बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान रखना, और बच्चों के अंदर इनोवेटिव आइडिया हों कि वो आगे समाज के लिए, देश के लिए काम कर सके। बच्चे सिक्योर होने चाहिए, बच्चे सेफ होने चाहिए हमारे। और जैसे जापान का एग्जांपल सर दे रहे थे कि वी शुड बी सो मेंटल स्ट्रॉन्ग कि किसी भी तरह की आपदा हो उसकी ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए। और ये भी कलेक्टिव हम इसके बारे में भी काम कर सकते हैं कि अगर आप लोग हमें कुछ सुझाव दें तो एनसीईआरटी वगैरह में हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिल सकते हैं, एचआरडी मिनिस्टर से मिल सकते हैं, कोई ऐसा करिकुलम हम बना सकते हैं कि बच्चों को हम गाइड करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी के समय कोई भी आपदा हो तो हम सब उसको फेस कर सकें। क्योंकि मेंटल स्ट्रांग होना आज की डेट में क्या है, आज से 25 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबर्न में मैंने सिटीजनशिप लेने के बाद सर मैं गया तो बहुत ही अजीब बात मैंने देखी। सिस्टर की यहाँ ठहरा तो सिस्टर की बिटिया एक तरफ, जिया जी एक तरफ, सारे मोबाइल पे बैठे। मैंने कहा यार किस देश में आकर फंस गया, कोई बात ही नहीं कर रहा। मगर आज अपने घरों में ये हालात है कि अगर हम 3 बंदे बैठे हैं सबके हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। और मेंटली हमारे बच्चे इतने वीक हो चुके हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मगर जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, एंड माय मदर शी इज़ अराउंड 85, शी इज़ टोटली फिट। मगर आज की डेट में अगर मेरी मदर मेरे साथ बैठ जाए तो लोग पहले मुझे मत्था टेकते हैं, बाद में मेरी मम्मी को। मुझे बताना पड़ता है मेरी मम्मी है ये, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और मैं तो डाइटिशियन को फॉलो करूँगा, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। मेरी मम्मी तो गोलगप्पे भी खा लेगी, साथ में आइसक्रीम भी खा लेगी। एंड कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है। जो माइंड सेट है, पहले इतने बड़े बड़े परिवार होते थे। मैं देखता हूँ मामा जी के घर गया 5-6, चाचा जी के यहाँ गया 4-5, और सारे सुखी थे। अब कमरे बड़े हो गए, मकान बड़े हो गए, बंदे दिखते ही नहीं है कहीं से। कोई मासी नहीं है, कोई चाची नहीं है, कोई नानी नहीं है।
और सारा दिन ये चल रहा है, सिस्टम ऐसे चल रहा है, संस्कार खत्म बच्चों के। तो ये सारा सिस्टम हम सबको वीक कर रहा है। जहाँ पर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें हमें बच्चों के माइंडसेट के बारे में भी बात करनी चाहिए। आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, सारी ताकत उन पे लग जाती है, इतनी भयंकर ताकत लगती है, समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। और हमारे सरकारी स्कूलों से मेरे पास, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेरे टच में हैं 15-20 सारे IAS ऑफिसर्स हैं सर, सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। उन स्कूलों से पढ़े हुए हैं जिनको हम सुधारने की बात कर रहे हैं। और आज से 40 साल पहले क्या स्टैंडर्ड होगा, 35 साल पहले क्या स्टैंडर्ड होगा। दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में चले जाइए, MBBS में चले जाइए, मौलाना आज़ाद में। एक बार मुझे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिला, बात चल रही थी, वो कह रहे हमारे पास तो इतने बच्चे हैं जिनके पास फीस के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में तो फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, कि बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं हैं। तो मैं बहुत एक बार तो हैरान भी हुआ कि यार कितनी फ़ीस होगी, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। और 1-2 बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे जिनका दूसरी ब्रांचेस में हुआ, एम्स में, तो उन्होंने छोड़ दिया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्टल नहीं अफोर्ड कर सकते। दिल्ली में मैं हिंदू राव में, मैंने पूछा तू हिंदू राव क्यों आ रहा है मेडिकल कॉलेज में? कह सर मैं वहाँ का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। और बाद में मुझे ये पता चला कि वो बच्चे ने बहुत अच्छी बुक लिखी। तो ये क्या है सर, ये जो हमारा जो मेंटल लेवल है, जो बच्चे नीचे से उठ कर आते हैं उनकी इम्यूनिटी बड़ी हाई है, इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी, उनको एक जज्बा है लड़ने का ज़िंदगी से, उनके अंदर एक नेचुरल ताकत है कि मुकाबला करने की, वो मुकाबला करके निकलेंगे। जो हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर देते हैं, बेसिकली उनको हर चीज़ में मम्मी मम्मी और पापा पापा नज़र आते हैं। और पापा को भी पता है कि ये बच्चे नकारे, हम ये लेके चलते हैं बच्चों ने कुछ नहीं करना, जोड़ लो इनके लिए एसेट्स, या 2 बिल्डिंगें, 4 बिल्डिंगें, 6 बिल्डिंगें बना लो, जो कर सकते हो करो। वो उसके चक्कर में मार धाड़ शुरू भी कर देते हैं लोग, क्योंकि हम पे एक चीज़ अज्यूम करके चले कि बच्चों ने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। पीछे से हमारा एक साइकोलॉजिकल है। या दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जो दुख या जो परेशानियां हमने देखी हैं वो बच्चे ना देखें, मगर इसके साथ हम ये चीज़ भूल गए, जो ताकत हमारे में थी हम बच्चों में ख़त्म कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं, देनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देता हूँ, मगर जो स्टेमिना हमारे लोगों में है वो हमारे बच्चों में नहीं है। तो इसलिए एक ऐसी बच्चों को इन्वायरमेंट देना जिसमें बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में खुद पढ़ें। आप देखिए कि नीट का एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो या IAS का एग्ज़ाम हो या दुनिया का एग्ज़ाम हो, बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। मैं तो हैरान हो गया, एक बार सीनियर एडवोकेट के साथ बैठा, कह रहा दिल्ली के अंदर जो 4 में से जो 1 है वो पिटीशन डाइवोर्स की आती है। कह रहा है हमारा तो जो प्रैक्टिस इसी पे चल रही है। मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ सर। तो कारण क्या है? पेशेंस खत्म हो चुकी है बच्चों में, संस्कार खत्म है, जो बच्चे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं है। आप हुक्का में हुक्का बार चले जाइए। एक बार मैं चला गया गलती से, किसी ने कहा कि यहाँ आ जाइए, मैंने कहा चले जाते हो। जब वहाँ देखो तो मन बड़ा पीड़ा में कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है। तो बच्चे हों, बच्चियाँ हों हमारी, उनमें संस्कार देना, एक संस्कार है हमारे जो हम सीखते हैं भगवान राम जी का। केवल ये पूजने के लिए नहीं है, हमारे जो गुरु पीर पैगंबर अवतार, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी ताकत है। भगवान राम जी का अगले दिन राज तिलक होना और रात को पिता ने कहा बेटा बनवास।
आप सोच के देखें, अगर हमारे साथ ऐसा हो, एक हमने एक बिल्डिंग बनाई हो और सुबह पापा के बेटे अगले की कोशिश करिए छोटे के लिए छोड़ दें, हम क्या हाल करेंगे। तो हम उस संस्कार से आए हैं। आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया और आपको अगले दिन निकाल दें, ये हमारे संस्कार हैं भगवान राम वाले, भगवान कृष्ण के हमारे संस्कार हैं, गुरु नानक देव जी के हमारे अवतार, ये वो संस्कार हैं हमारे। जो देने वाली बात है वो है बच्चों को संस्कार देना, वो बहुत बड़े हमारे एसेट्स है। ईश्वर पर विश्वास रखना, ऊपर वाले पे फेथ रखना, ये हमारे संस्कार हैं। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब देते हैं अपने बच्चों को, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बिजनेस सब हम देते हैं, मगर कभी जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने कभी भी अपने बच्चों को नहीं दिया। हमने ना अपने मंदिर भी ले गए बच्चों को, गुरुद्वारे भी ले गए, जो हमें संस्कार हमारे पेरेंट्स ने दिए, जो इम्पार्ट किए, जो हमारे खून में दिए। हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, हम उसको यूजलेस मानते हैं। कभी जो हम अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, कभी बच्चों को बताया नहीं, इसको पढ़कर देखो उसमें क्या लिखा, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। जो हमारे पीर पैगंबर की जो टीचिंग है, जो गुरु अवतारों की टीचिंग है, जो भगवान जी के जो है, बेसिकली वो हमें सीखने का है। हमने ना खुद सीखा ना बच्चों को सिखाया, तो हम कहते हैं बच्चे गलत हैं। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए हैं। मेरा टॉपिक थोड़ा सा हट गया वहाँ से, क्योंकि जहाँ पर हर चीज़ की सेफ्टी है, अपने कल्चर को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने धर्म को बचाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज समाज के अंदर छोटी छोटी बातों में लोग परेशान, इरिटेट हो जाते हैं। एक वो भी समय था, एक कमरे में 6-6 लोग रहते थे ना, एवरीवन वर हैप्पी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी। और हमने तो वो भी समय देखा कि अगर एक शर्ट लूज़ आ जाती थी तो कहते थे कोई नहीं, छोटा एडजस्ट कर लेगा। और आजकल इतने कपड़े हैं कि पहने वाले कम है और कपड़े ही कपड़े, और कहीं जाना पड़ जाए तो बहुत आफत, मैडम के पास सूट ही नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए बच्चों को मेंटली भी स्ट्रांग बनाएं, बच्चों को फिजिकल स्ट्रांग बनाएं। बच्चों को देखो, आजकल के बच्चे घूमते हैं, डाइटिशियन लगे हुए हैं, बच्चे नपे तुले खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। किसी को, छोटे छोटे बच्चों को ओबेसिटी है, बीपी है, शुगर है, बच्चों ने चश्मे लगा लिए। तो कहाँ पर खड़े हैं हम, समाज कहाँ जा रहा है? बच्चों की चिंता करना, और जो बच्चे खुद पढ़ते हैं, जो कंसेप्ट जो अब खुद पढ़ने से डेवलप होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 100 200 बच्चों की जो कोचिंग सेंटर से वो चीज़ डेवलप हो सकती है। तो मैं अपनी बात को बड़ा ना कहते हुए, मेरी तो आप लोगों से यही है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए फिज़िकल सेफ्टी के साथ साथ जो मेंटल जो बच्चों को स्ट्रांग बनाना, तो हमें तो वो चीज़ याद आती है कि वो गुरु गोविंद सिंह जी की बात कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। तो वो क्या कंसेप्ट है कि कितनी भी ऑड सिचुएशंस हो, वहाँ पर खड़ा रहना, किसी भी बुराई के आगे झुकना नहीं, और सच के साथ खड़ा होना, किसी से दबना नहीं। ये हमारे संस्कार हमारे बड़े बूढ़ों ने दिए, ये बच्चों को देना। जहाँ एक रजिस्ट्री देनी, साथ साथ बच्चे को ये भी देना, बेटे इन संस्कारों के साथ हम आए। तो बच्चों को अपने संस्कार देना केवल कर्म कांड ना होकर हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें से बच्चों को ये रिफ्लेक्ट होता है। कुछ चीज़ें सिखाने से नहीं होती। मुझे आज भी याद है, हमारे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, कॉलेज के, तो उन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई वो अंदर चली गई। वो आज तक जो वो प्रिंसिपल शायद वो संसार में नहीं भी होंगे, हमारे लिए वो जिंदा है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल की बातें करें, वो खुद चल कर दिखाएँ कि बच्चों को याद, उस समय याद नहीं रहता,
मगर जो आपने कह दिया बच्चे के अंदर स्टोर हो गया, किस समय वो चीज़ याद आएगी, कि कब वो काम आएगी, वही हमारी असली एजुकेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। Thank you, sir. Your vision to make our students mentally resilient will bring about a change in our communities for sure. To conclude the inaugural ceremony, may I invite Shri Rupesh Pandey, Senior Secretary, PhD CCI, to extend our collective gratitude through the vote of thanks. नमस्कार। वोट ऑफ थैंक्स देने के पहले मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा 30 सेकंड का एक वीडियो एमसीडी का है जो उन्होंने एजुकेशनल सेफ्टी के ऊपर कुछ तैयार किया है। मेयर साहब बैठे हैं, उनके सामने अगर चला देंगे तो अच्छा लगेगा। बचपन जब खिलखिलाता है तभी भविष्य मुस्कुराता है। यही सोच लेकर दिल्ली नगर निगम अपने विद्यालयों में एनईपी 2020 पर ध्यान केंद्रित करके सभी शैक्षिक आयामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है, जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है बल्कि जीवन जीने का सही तरीका और सुरक्षित रहना भी सिखाया जाता है। दिल्ली नगर निगम अपने छात्रों को सुरक्षित, खुशहाल और सीखने से भरपूर वातावरण देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। खुशहाल बचपन, सुरक्षित बचपन, इसी विश्वास के साथ खिलखिलाता बचपन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह एक थीम के माध्यम से छात्रों को विभिन्न कहानी व रोल प्ले के द्वारा सुरक्षा, मानसिक संतुलन संबंधी जीवनचर्या व तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण वातावरण के विषय में जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ ही सुरक्षा के महत्व को समझते हुए प्रत्येक बुधवार को छात्रों को सुरक्षा के ज्ञान के साथ साथ रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां कराई जाती हैं। बच्चों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग की सहायता से समय समय पर विशेष जागरूकता वाले सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जहां ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देने के तरीके सिखाए जाते हैं। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराई जाती है, जैसे भूकंप, आग या किसी अन्य आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रूप से बाहर निकलना। आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिल्ली नगर निगम की एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां बच्चों को बुनियादी सेल्फ डिफेंस की तकनीकें सिखाई जाती है। माई सेफ्टी सेशंस के दौरान बच्चों को गुड टच व बैड टच की समझ दी जाती है, ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सके और आवश्यक होने पर भरोसेमंद बड़ों की तुरंत मदद ले सके। स्टार पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से अभिभावकों को भी इन गतिविधियों में शामिल किया जाता है। बच्चों की सुरक्षा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, इसलिए बाल शोषण रोकथाम जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित रहने, गलत परिस्थितियों को पहचानने और समय पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करने की समझ दी जाती है। विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित, समझदारीपूर्ण और समावेशी वातावरण देते हैं। साथ ही एनजीओ पार्टनरशिप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गर्ल चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज व सुरक्षित विद्यालय गतिविधियों का विद्यालयों में आयोजन किया जाता है। दिल्ली नगर निगम का सपना एक ऐसा भविष्य जहां हर बच्चा खुश हो, सक्षम हो और सुरक्षित हो। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि राजा इकबाल सिंह जी, माननीय मेयर ऑफ दिल्ली नगर निगम डॉक्टर उषा राम मैडम, श्री हेमंत सप्रा जी, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, देवेंद्र गिल जी, निखिल तिवारी जी, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी और जितने भी दिल्ली नगर निगम से, प्राइवेट स्कूल से मैडम ओशिमा माथुर जी भी बैठी हुई हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम।
ये एक विषय है जिस पर हमने आज एक चर्चा, एक संगोष्ठी आयोजित की है कि सेफ स्कूल लीडरशिप में हम क्या बात करने जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप जितने भी टीचर यहाँ बैठे हैं, के लिए और वो स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो स्कूल चलाते हैं, और वो जो अपने बच्चों को उस विद्या के मंदिर में भेजते हैं, ये तीनों के लिए लाभकारी होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक आयोजक, एक वक्ता या एक ऑफिसर्स के रूप में नहीं खड़ा हूँ। मैं एक पेरेंट की हैसियत से खड़ा हूँ कि वो पेरेंट जो अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है, और जब वो भेजता है तो ये मान के भेजता है कि ये यहाँ गया है कि कुछ सीखेगा, आएगा और सुरक्षित लौटेगा। मैं उस पेरेंट की हैसियत से भी खड़ा हूँ कि उसका बच्चा जब स्कूल जाता है और जब स्कूल से जब वापस आता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, बुली या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस पेरेंट्स के भी दिमाग में क्या चलता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का। और जब हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम बहुत एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और बच्चे जो आने वाले कल के भविष्य हैं, जिनके ऊपर पूरा राष्ट्र निर्माण का पूरा भार दारोमदार टिका हुआ है, अगर उनकी बुनियाद, जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि स्कूल का जो एजुकेशन है वो जो 4 to 5 आवर्स का है, और इसके बाद के जो 17-18 घंटे हैं जो घर में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं, या जो वो समाज है जिसके बीच में हम बच्चों को हम पाल पोस करके बड़ा करते हैं, ये इन तीनों स्टेक होल्डर्स की मिली जुली जिम्मेवारी है। हम केवल एक बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यही आने वाले भविष्य की विरासत हैं। यही आने वाले समय में अपने कंधों में इस महान राष्ट्र को आगे ले जा कर के नई दिशा देंगे। और भारत उन गिने चुने राष्ट्रों में है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। 5 ट्रिलियन इकॉनमी में वी आर नाउ एट 3rd पोजीशन। वी हैव जस्ट सरपास द जर्मनी। इफ वी टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस, जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मंच था जिस पर हमने आप सबको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, आप आए, अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए। मैं आप सबको इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला। मुझे नहीं लगता कि ये एक कार्यक्रम की एक कंक्लूजन हो सकता है, ये एक शुरुआत है, एक बिगनिंग है। और जब हमने ये प्रोग्राम हमने बनाया तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर ये हुआ कि चलो स्कूल सेफ्टी पर हम अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी शामिल करें। फिर ये हुआ कि हम एमसीडी को भी शामिल करें। एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा आपसे, क्योंकि जब बात एमसीडी की आती है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि मुझे एमसीडी से वो सपोर्ट मिलेगा। तो ये परसेप्शन है, और हम चूँकि इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ में मिलकर काम करते हैं, और हमने कभी अप्रोच किया भी नहीं था एमसीडी को। तो हमने लेटर लिखा, प्रोग्राम बनाया, और फिर एक दिन अपॉइंटमेंट ले करके जो आपके एजुकेशन डायरेक्टर हैं निखिल तिवारी जी, उनसे मिलने चला गया। मैं हैरान था उनको देख करके। मुझे लगा एजुकेशन डायरेक्टर है तो कोई ग्रे शेड में, और मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा, और वो अपना जो लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा ठीक, तो मुझे लगा कि मैं सही जगह में हूँ। और जब मैंने इनके साथ में मैंने बात किया तो जितना मैं सोच करके इनको अप्रोच किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला। खुद इनकी तरफ से खुद सजेशंस आने, सर हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे सारे स्कूल के लोग जाएंगे, सारे स्टेक होल्डर रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी स्पीकर्स हैं वो भी रहेंगे, मैं खुद एक सेशन में बैठूंगा, आप एमसीडी के लिए अगर कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो सर जब क्या होता है ना, जब वो जो इम्प्लीमेंटर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, हम तो कार्यक्रम को हम केवल आयोजित कर सकते हैं आपके लिए। तो वो जब अप्रोच मिला, पॉजिटिव अप्रोच मिला,
तो मुझे लगा कि कुछ बात बन सकती है। और इसके बाद तुरंत मैं फिर मेयर साहब के दफ्तर में गया और मुझे वहाँ उससे भी ज़्यादा हैरानी हुई कि मुझे लगा मेयर हैं भाई, वो तो मिलने के लिए वक्त नहीं देंगे। मैं गया और उनके पीएस से मैंने बात किया तो बोले सामने बैठे हैं, चले जाइए। मैंने अपना कार्ड दिया, 2 मिनट में बुलाया भी वो। क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी? तो मैंने कहा अच्छा चाय भी मिलेगी, ठीक है जी। तो सरलता, तो वो उन्होंने पूरा सुना। मुझे क्या करना है? मैंने कहा सर बस आपको आना है। नहीं नहीं आएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे, स्पीच में मुझे पॉइंटर्स बता दीजिए, मुझे बात क्या करनी है। तो मैंने बना करके दिया। अच्छा ठीक है, किसको किसको आपने इनवाइट किया है? 2-4 सजेशन सर की तरफ से भी आए। तो एमसीडी का जो एक परसेप्शन है और जो था मेरे दिमाग में भी, और मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ, और अच्छा हुआ कि मैं गलत साबित हुआ, और उसका क्रेडिट आप सबको जाता है और आप सब ने। और वो ऐसे नहीं रातों रात ये चेंज या कन्वर्सन नहीं हुआ है, ये धरातल में आप लोगों ने मेहनत किया है। जितने भी टीचर्स आए हैं आप सब ने मेहनत किया है, इसलिए आज एमसीडी इस लेवल तक पहुंची है। और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वीडियो भी हमने देखा है, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। अब हम जुड़ गए हैं और हमें लगता है कि इस एसोसिएशन को हम लंबा लेकर के चलेंगे, कुछ और कार्यक्रमों में आएंगे। बहरहाल अभी टेक्निकल सेशंस हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। मैं आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप यहां पर आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल किया। खासतौर पर माननीय श्री राजा इकबाल सिंह जी को कि उन्होंने अपने कीमती समय में से उन्होंने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार साझा करने के लिए रुपेश जी का हार्दिक आभार। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण पर बढ़ते हैं। कुछ सपनों के सफ़र होते हैं जो अकेले नहीं पूरे होते। उनमें लगती है मेहनत, अनुशासन और एक पूरे संगठन की सामूहिक शक्ति। आज का यह समारोह इन्हीं प्रयासों, उपलब्धियों और उत्कृष्टताओं को प्रणाम करने का दिवस है। अब समय है उन विद्यालयों को सम्मानित करने का जिन्होंने सुरक्षा, नवोन्मेष और जागरूकता को अपने विद्यालय संस्कृति का हिस्सा बनाया है। पुरस्कार केवल सम्मान नहीं बल्कि उत्कृष्टता को आदत बनाने की प्रेरणा है। परिणाम घोषित करने से पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगी कि हमारी ज्यूरी ने विभिन्न मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया है। निर्धारित रूब्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अंक दिए गए हैं। जिन प्रतिभागियों ने अपनी श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस प्रमाण सहित जमा की और स्वयं को नॉमिनेट किया, उनके सभी दस्तावेज़ों की गहन जांच के पश्चात ही परिणाम निर्धारित किए गए, जो अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो वितरण समारोह के लिए मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि मेयर राजा इकबाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुरस्कार वितरण की गरिमा बढ़ाएं। हम शुरू करते हैं उस श्रेणी से जो हर माता पिता की पहली चिंता और हर स्कूल की पहली जिम्मेदारी से जुड़ी है, सुरक्षित स्कूल परिसर, एक्सीलेंस इन सेफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहां सुरक्षा है वहीं शिक्षा है। तो इसके विजेता हैं बिरला विद्या निकेतन पुष्प विहार। हाँ जी, आपकी इमारतें केवल दीवारें नहीं, वे विश्वास की नींव हैं। बहुत बहुत बधाई बिरला विद्या निकेतन। इसके पश्चात प्रथम उपविजेता है मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग। आपने सिद्ध किया है कि सुरक्षा कोई सुविधा नहीं, एक संस्कृति है। द्वितीय उपविजेता SM आर्या पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग। आपके प्रयासों ने सैकड़ों विद्यार्थियों के हर दिन को सुरक्षित बनाया है। बहुत बहुत बधाई। तालियों की जरा कमी नजर आ रही है। ट्रॉफी देखिए तालियों के साथ ही अच्छी लगती है।
अब दूसरी श्रेणी, आज तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की आज तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की रीढ़ बन चुकी है और जिन्होंने इसे सबसे प्रभावी रूप में अपनाया वे इस सम्मान के अधिकारी हैं। बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल सेफ्टी, इसके विजेता है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी। अच्छा, ठीक है। SMRA पब्लिक स्कूल से मैं निवेदन करती हूँ ऊपर आएं और अपनी द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी यहाँ से ग्रहण कर लें। नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी के लिए तालियां। आपने तकनीक को सुरक्षा का कवच बनाया, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन ओशिमा मैम। ये SMRA पब्लिक स्कूल से हैं, द्वितीय उपविजेता। बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल सेफ्टी के प्रथम उपविजेता है एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। सुरक्षा और तकनीक का आपका संतुलन वाकई अनुकरणीय है। इसके द्वितीय उपविजेता है वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका। आपके नवाचारों ने सुरक्षा को आधुनिक स्वरूप दिया है, बहुत बहुत बधाई। वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वितीय उपविजेता। अब हम अपनी तीसरी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन चैंपियन स्कूल। एक स्कूल की सबसे बड़ी पहचान उसकी संकल्पना है कि हर बच्चा सुरक्षित है, हर बच्चा मूल्यवान है। इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने वाला विद्यालय आज सम्मानित किया जा रहा है, जिसके विजेता हैं उत्कृष्ट विद्यालय BB ब्लॉक शालीमार बाग। आपके संरक्षण को प्राथमिकता बनाकर एक मिसाल आपने कायम की है। इसके प्रथम उपविजेता हैं MCPS DTC कॉलोनी करोल बाग। MCPS DTC कॉलोनी करोल बाग। आपके प्रयासों ने बचपन की मुस्कान को सुरक्षित रखा है और इसमें द्वितीय उपविजेता है निगम प्रतिभा विद्यालय H ब्लॉक अशोक विहार। हाँ जी, निगम प्रतिभा विद्यालय H ब्लॉक अशोक विहार। आपका समर्पण हर बच्चे की ढाल बनकर खड़ा है। चौथी श्रेणी की ओर बढ़ते हुए वेल बीइंग चैंपियन स्कूल, क्योंकि सुरक्षित मन ही सुरक्षित जीवन बनाता है। स्टूडेंट वेल बीइंग केवल नीति नहीं, एक संवेदना है और इस संवेदना को अपनाने वाले विद्यालय आज हमारे मंच की शान है, जिसके विजेता है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश। बड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा है मल्लिका मैम। आपने स्वस्थ और संतुलित जीवन को विद्यालय की आत्मा बना दिया है, हार्दिक बधाई। अब प्रथम उपविजेता है माउंट आबू पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। माउंट आबू पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, आपका प्रयास बताता है कि संपूर्ण शिक्षा संपूर्ण सुख से ही संभव है।
द्वितीय उपविजेता है सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल जनकपुरी। सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल जनकपुरी, आपके कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों के मनोबल को नया आकाश दिया है। बहुत बहुत बधाई। पांचवी श्रेणी एक्सीलेंस इन स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। हर सुबह घर से निकलकर स्कूल की ओर बढ़ना यात्रा ही नहीं, माता पिता का विश्वास होता है और यही विश्वास प्रबंधन और सुरक्षा की उत्कृष्टता से आता है। इसके विजेता हैं सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल प्रतापगढ़। एम.आर. जयपुरिया स्कूल प्रतापगढ़, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुरक्षा का आदर्श मॉडल है। बहुत बहुत बधाई आपकी ट्रॉफी के लिए। प्रथम उपविजेता लक्ष्मण पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, आपके उत्कृष्ट मानक आपको अलग पहचान देते हैं। और इस श्रेणी में द्वितीय उपविजेता है निगम प्रतिभा विद्यालय A4 ब्लॉक पश्चिम बिहार। निगम प्रतिभा विद्यालय A4 ब्लॉक पश्चिम बिहार, आपका समर्पण और सतत प्रयास सुरक्षा प्रबंधन में आपकी अलग छाप छोड़ते हैं। नगर निगम प्रतिभा A4 ब्लॉक पश्चिम बिहार, बहुत बहुत बधाई। और अंत में, जिन राहों पर सुरक्षा हो वहां कदम थकते नहीं, जहां विश्वास की छाया हो वहां सपने रुकते नहीं। आज सम्मान उन्हीं संस्थानों का है जो हर दिन हर पल इन सपनों को संरक्षित करते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस सम्मान की ओर जो केवल मैदान की जीत से नहीं बल्कि सुरक्षा, अनुशासन और स्वस्थ वातावरण की नींव से जुड़ा है। और यह सम्मान दिया जा रहा है खेल एवं शारीरिक शिक्षा में सुरक्षा तथा उत्कृष्टता के लिए, जिसके विजेता हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, ये जीवन की कक्षा है जहां बच्चे हार जीत से पहले आत्मविश्वास, दृढ़ता और संतुलन सीखते हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर गुप्ता। हमारे बीच में पहले SM आर्या पब्लिक स्कूल से कोई नहीं आया था ट्रॉफी लेने, वो अब हमारे बीच में है, तो कृपया वो मंच पर आएं और अपनी ट्रॉफी ग्रहण करें। SM आर्या पब्लिक स्कूल जी, हाँ जी। सभी ट्रॉफी ग्रहण करने वालों के लिए जोरदार तालियां। भारत में खास बात है कि चाय के बिना ना बातें आगे बढ़ती हैं ना हमारे विचार। तो क्यों ना एक चाय का ब्रेक लिया जाए, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी है। अच्छा ठीक है। ग्रुप फोटो कॉन्सलेशन प्राइज के लिए स्नेह मैम आप आ जाइए, तो देने हैं कॉन्सलेशन प्राइज। लंच के बाद कॉन्सलेशन प्राइजेस आपको दिए जाएंगे। तो फिलहाल हम चाय का ब्रेक लेंगे। हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप चाय की चुस्कियों के बाद इसी गर्मा के साथ यहीं लौट आइए, क्योंकि यही कुर्सियां आपका इंतज़ार करेंगी। ऑडिटोरियम के बाहर चाय का प्रबंध है फॉयर एरिया में, और हमारे गणमान्य अतिथिगण जाएंगे मोदी हॉल में चाय के लिए। एग्जीबिशन के लिए भी आप वहां से ज़रूर जाइएगा, यहाँ लगाई गई एग्जीबिशन आप अवश्य देखिएगा बाहर। मिलते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट से ज़्यादा का कृपया समय मत लीजिएगा। I hope the tea has refreshed our minds for our next round. May I request everyone to be seated?
Let us now begin panel discussions where experts come together to transform ideas into direction. Our first panel discussion is on the topic mental wellness and inner well-being. We kick off with what beats inside every child's story, their mental and emotional world. We are honored to introduce our moderator for this session, Dr. Usha Ram. Dr. Usha Ram is an acclaimed education leader whose remarkable career spans over 4 decades of impact, innovation, and inclusion. She has led some of Delhi's most respected institutions as principal and has also served in key national leadership roles, including chairperson of the National Progressive Schools Conference and members of the governing body and sports committee of CBSE. A passionate advocate of inclusive education, Dr. Ram has transformed school environments to embrace learners with diverse needs, championing accessibility and acceptance as non-negotiable values in education. She is also a prolific author with several influential publications to her name in collaboration with leading publishers such as HarperCollins, S. Chand, Frank Brothers, and Rachna Sagar, contributing immensely to learning resources across India. Her outstanding contributions have earned her numerous honors, including National Teachers Award, Rajya Shikshak Award, National Dozier Award for Inclusive Education, United Nations Award, and several recognitions from CBSE, UNICEF, Rotary, and environmental bodies. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Dr. Usha Ram. May we also call our distinguished panelists for this session, Ms. Mallika Preman, Principal, Tagore International School, East of Kailash. May we please have a huge round of applause. Ms. Lalita Tekchandani, K-Tech Head, Karam Group. Dr. Jyoti Kohli, Senior, Shri Ram Model High School, Faridabad. Dr. Jitendra Nagpal, Medical Expert. Dr. Garima, Senior Consultant and a Gold Medalist. Professor Dr. Rajiv Mathur, Vice Chairman, International Council for Industrial Security, Safety and Management. Over to you, ma'am. How do you switch it on? Very good afternoon. I'm sure you had a good cup of tea. Still there are many who are waiting outside. How I wish they were allowed to bring the tea inside, but it's not permitted. And I can see Dr. Rajan, you're not allowed to bring the tea inside, so you have to finish your tea and then come. But we are already very late. And it happens, you know, when you have such good speakers. I'm sure you enjoyed the morning session, the speakers. Can we give a special clap to all of them? They all spoke so passionately. So being a convener, but I had no choice to write and say that, sir, your time is over. I can't do that because they were speaking so beautifully and, you know, from their hearts.
So there was no need for us to do that. So sorry for all the inconvenience. I know my next session is also ready. I can see Dr. Hasija also. But let's start with this one. Waiting for Dr. Nagpal, but if he's not there, we'll start our session. Friends, it's truly a privilege to welcome you all in today's panel discussion on mental wellness and inner well-being, a topic that is not only relevant but essential in our fast-changing world. I'm sure you all agree to that. We often focus on physical fitness, academic success, and professional achievements, but we sometimes forget that the foundation of all success is a healthy, peaceful, resilient mind. Mental wellness is not merely the absence of illness, it is the presence of balance, confidence, emotional strength, and inner peace. In an age of constant competition, digital overload, and rising expectations, stress, anxiety, burnout have quietly become part of daily life, especially for students and young professionals. Yet, many still suffer in silence due to stigma and fear of judgment. Today's discussion aims to raise awareness, break misconceptions, and most importantly, explore practical ways to nurture our inner wellness. I look forward to meaningful insight from our esteemed panelists. Let us begin this important conversation with open minds and open hearts. I hope you all agree to that. So we start with, can we request Malika ji to, because this is how we are sitting, so we can start with that. If you all agree, I'm not going by this. So I will request Ms. Malika to be with us here. She is one person, she is a chairperson of NPSC and a multifaceted personality. And she is the one who can look after anything, any disaster, anything happening anywhere. She is always there. And I think she is the right person to help us when we are talking about mental wellness and health. And because when I go to her school and I see the teachers, two of her teachers are here only. They are the one who are the, spokesperson. They are, conducting the program. So I need to give them a special clap because I just told them a day in advance and Malika ji agreed. So thank you so much for that also. Please come. Your time starts. Thank you so much, Usha ma'am. And a very good afternoon to everyone. When we talk of mental well-being, we say that we need to create safe spaces in school emotionally. We heard about how to create safe physical spaces in the first session, but along with safe physical spaces, it's very important that we also create safe emotional and social spaces in school. And for the need of creating that is, when we were young, we always compare that when we were young, we did so many other things and we never had any emotional breakdowns. We did not hear the word depression. We did not have any anxiety. We have to understand that when we were young, we were growing up in a family where there were cousins, there were grandparents, there were lots of people with whom we could share. If our parents didn't have time for us, there was somebody else who was there to have a conversation with us. What we have as principle, if I talk about what I have been observing, is that somebody spoke about the number of cases which are coming are mostly for divorce. So there are broken families. There are families where there's either both the parents are working and they have a 9-to-5 job. Child goes back home, they don't have any sibling because most of the families have either 1 or 2 children. And the phones and the digital things which have come into our hand, everybody is into themselves. There's no one to talk to the kids. When we go for any lunch or dinner with the family, we see that every parent or child, they all are sitting with an instrument in their hand and they are chatting to them. Students have started chatting to the bots rather than chatting to real friends or real people. And that is why it becomes very important for schools to create safe spaces emotionally and socially.
I'll just share a few of the examples what we do in our school. Yes, as per the norms, we are supposed to have the counselors, and the counselors definitely play a major role in creating these safe spaces. So what we have also, we also have counselors in our school, but along with that, what we have done is we have created a program called as Active Minds. Now, Active Minds is a society which is run by the students, it is of the students, and it is for the students. So this society, what they do is, the counselor is training students, equipping them to handle crisis in their classrooms, because they share more with their peers. Students nowadays, because they have nobody else to share with. It was in our times also, the way we interacted with our peers, we did not interact the same way with our parents. And now it's even more that they share a lot with their peers. So it's very, very important to have peer mentors. Now these peer mentors, Dr. Nagpal is not here, otherwise he would have spoken a lot about peer mentoring. It is his project which he started with. So in peer mentoring, now the Active Mind Society, we have a kind of a tree in which the counselor is there. From every class, we have 2 or 3, we call them as mental fitness ambassadors. These students are trained and they are there in the classroom to observe the entire class. If any student is not comfortable, they extend their help to them, they go sit, talk to them. If the MFAs feel that the case is something which they cannot handle, they report it to the counselor and the counselor takes charge. So this is a kind of a system which we have built, and what we have observed, I can share the success stories where the students, these MFAs have come and reported to the counselor that there's one particular student in the class who keeps crying. So the counselor said, okay, let me find out. She called the student and she found that the child keeps crying because the parents are going through a divorce. And this child, and there are lots of fights at home, and this child has nobody with whom he can share. He tried sharing it with, because in his locality, there were people who were hearing these noises from the home. So they started questioning him and they started even bullying him, saying, oh, there is so much of noise in your house, your parents keep fighting. This child couldn't share this with anybody else. So at least the MFA of his class could come and share that with the counselor. The counselor called the parents, spoke with the parents, informed the parents about what the child is going through, and suggested both the parents to go for family counseling, and which happened, which is still going through. So it's still work in progress, but this is one of the examples I can share. There are more anecdotes where there's another student of class 12 who suddenly stopped coming to school. And we all were wondering what happened. And then again, these mental fitness ambassadors, they could check with the child and found that the child was having a lot of anxiety for examination, not because parents had set any standards, but because he himself had set very higher standards for himself. And he thought that he won't be able to make up to or achieve whatever targets he has kept. So he said the best is to stay away from school, not go to school. Again, we got to know about this only because of the peer group. So it's very important in schools that we empower the student body to be the peers for themselves and for their class groups. Yes, counselors need to be there, but only counselor won't be able to reach each and every student. For that, we need to have every teacher who need to be vigilant in the classrooms, every student who can be empowered, and run a lot of programs in school for creating awareness about creating safe spaces. So all these safe spaces, when we talk about, is when they feel happy coming to school, they should be able to confide in somebody, not necessarily the counselor, because again, that's a stigma. If students go to the counselor, there are times when they are being bullied, saying that, oh, you go to a counselor, you are mentally unfit. So one, we have to make sure that mental health and
emotional well-being becomes normal. We have to normalize that, and we can normalize that only by training and empowering our student body. So with this, I'll just thank Usha ma'am. I've shared just a small anecdote. I hope it will be beneficial for you. Thank you. Friends, just now Madam Malika has talked about, the peer group, which is very, very, and it's really working very well in most of the schools. Must be happening in your schools also, that when the peer group is there, they take care of each other. And another point where the teachers are being empowered and they are trained, that those sessions are being taken, but much more has to be done after what has happened in Jaipur and in Delhi. That has given us a concern. We were thinking that we are doing quite a lot, and we have a lot of sessions for our teachers, but after those 2-3 incidents, we really feel that the teachers need to be looked into, and they need to understand the anxiety of the children and how to change their mindset, because even little bit of scolding makes a child and so how to then to train the parents also. See, the teacher has the right to tell the child to study, but if the parents do not cooperate, so it has to be 360 degree. We have to have the parent, we have to have the teacher, we have to have the student, and then of course the management is there. Only then all this is possible. Otherwise there will be confusion and the children will suffer, and how much ever we do with them, there will be lacunas here and there. Anyway, thank you so much, Malika. Now I request our name, because of the time shortage, I'm really feeling very bad, but what to do? We have next in the panel Miss Lalita Tekchandani. She's head of Karam Group. Now she'll tell us a little bit about a Karam Group and then how in the industry, in the corporate, and they are doing, and how it can be incorporated in our school system, because safety in schools and the safety of our children and of teachers is very important. So thank you so much. Please take the dais. Thank you very much. So good afternoon everyone, and to my fellow panelists. First of all, I'd like to thank PhD Chamber of Commerce for giving me this very unique opportunity. All my life I've been on the other side, where I've only listened to teachers and principals, first as a student and then as a parent of 2 boys. It's the first time I'm getting to address educators, and I hope that I'll be able to add some value based on my experience. Now, I am a safety practitioner for the last 13 years, and Karam Group, we provide safety solutions to almost every industry that you can think of. And initially when I was asked to be part of this panel, I was wondering what should I share, and then I realized that there's a common thread that goes across all safety challenges, and there's a model that every industry adopt. So here is what I'm going to share with you. It's a very simple model, and it doesn't, of course I'll be speaking in the context of mental safety and well-being, but it's something that you can actually utilize no matter what safety challenge you're going to be facing. So it's a very simple model: identify, assess and manage. So identify, assess and manage, and we'll briefly talk about it. When I was just researching school safety a couple of months ago, 10 pages of Google search, about 50% of accidents were to do with some sort of transport related accidents. And thousands of children, who have obviously either been injured or maimed. About 1/4 was to do with miscellaneous, accidents related to fire, structural collapse, and about 1/4 was to do with some crime or some fatality or some grievous accident, which was as a result of some situation which made the child just flip. It could either be attacking a co-student or a teacher or a principal. We've had, many cases of stabbing, even educators. Now these are, and of course, student suicide, I don't even need to talk about it. Every time such an accident happens, it just doesn't impact the child or his or her family. It impacts his friend circle, school ka mahal, and the people who are implicated, the educators who are implicated.
Careers can be destroyed. Imagine having spent 25, 30 years of your life educating students, and somebody somewhere just writes in their note. I know of some cases where those educators have been devastated because their entire life's worth of work just went down. So as educators, you are also not safe if this young adolescent who has an AI-enabled phone in his hand. And in our time, the worst that you could go is, maybe some dirty writing on the toilet, right, walls. But today, anybody can actually just make sure that they put a morphed reel and actually it's out there for perpetuity on the internet for everyone to see. So it's extremely important that we actually do prevention more than trying to fight it, because that is very difficult, and prevention, the earlier it starts, the better. So now I will come to the 3 models that I spoke about: identify, assess, and then manage. When it comes to identification, it's really about who is vulnerable, okay? What kind of vulnerabilities exist, and can they happen at all? So for instance, those of us in Delhi, high seismic zone, earthquake is more of a reality to someone maybe down south. Similarly, you need to assess what kind of things can go wrong and who would be at the risk of it. So when it talks about mental health, it would be children who are adolescent, maybe just getting out of middle school, more vulnerable. Children who are preparing for board exams, more vulnerable. Maybe children who are from a different socioeconomic status, different than the majority, might be more vulnerable. Maybe children who have a different sexual orientation may be more vulnerable. So you as an educator already have a lot of data sets. Identify who is vulnerable, what all can go wrong, right? And for this, the second important thing is, which actually, ma'am, you spoke very beautifully about, was training the teachers, students, and parents to be the first responders. So you never know, you might be witness to a child having a meltdown. As a parent, I remember our school, where my children go to, we were getting prepared right in middle school about what a pre-teen will begin to look like. And it really helped us before the teenage symptoms actually manifested. We were at least halfway prepared. It wasn't कि मेरे बच्चे में problem है. It's like, okay, this is going to happen, be prepared for it. So parents, teachers, and the students have to be the first responder. Their job is only to tell this person requires help. That's it. They are just a bridge. They are not supposed to be counseling. They are not counselors. They are not trained to be counselors. And they just need to know what to say, what not to say. That's all. Right language, काम छोटा सा है. Next step, assessment. Now comes the specialists, which are the counselors and other people in the school ecosystem who actually have the tools, the vocabulary to deal with the situations. And of course, they will ensure how bad can it go. Is the child having suicidal thoughts? Is he someone who's having violent tendencies and could attack someone? We see the kind of shooting incidents that happen in the US. Most of them are youngsters who are generally passed out from the same school, or maybe who are just disgruntled and maybe never had the coping mechanism. So the second part is the assessment and finding out where exactly to sort of to quarantine and then deal with that behavior. And the last part is the manage. Now in industry, we use a very elegant theory. It's called the Swiss cheese model theory. So if those of you who might have seen a Swiss cheese block, it has holes. And when you cut those slices, each slice will have hole, but they are not equally positioned. So the management means having multiple layers of managing these situations. Each one will be imperfect, but put together, they will prevent all accidents. So when I talked about here, whether it's counseling, whether it's a safe system, a safe design of the school, no dark corners, no areas which are out of CCTV, maybe a place where children can have a safe meltdown, processes which ensure confidentiality, whether a child is undergoing stress or is having any other situation, they can safely just, vent out. All these things are part of the Swiss cheese model of management, and many such layers. Again, Malika ma'am, I don't think I can add any more value on this because you've already very eloquently spoken about, and I'm sure all of you are already doing quite a few of them. But just remember that no one system
would be adequate to prevent everything. You will need a sequence of many such things, and something will work for someone. In the end, even the best processes will not be adequate if the culture is not adequate, right? And you would be surprised at the kind of effort that is spent by companies in building the culture of safety. And this can only be built top down. So here is where the principals, the school management, and of course the teachers have to walk the talk. They have to show empathy and care and have, a non-punitive approach to any because missteps will happen. You can't help it, right? These are all humans that we are dealing with. So you have to have that culture where people feel safe. And even if they make mistakes, you help them just walk right through it and help them cope, help them thrive in the bigger scheme of things. So I hope, that's a model that all of you would find some value in. And thank you very much once again. Thank you. Friends, Lalita ji very beautifully, in nutshell, 3 points that she has mentioned, which we can incorporate into our system, of course, in the school also. Identify, which I think Malika has already talked about. Identify, assess, of course, counselors, the teachers, peer, and then manage. And the 4th point, she talked about the culture to be developed. I think these 4 points that you have really said in nutshell, I think gives us the crux of the whole thing. Thank you so much. And now can I request our next panelist, sir, to be with us. Rajiv Mathur ji, Professor Dr. Rajiv Mathur, Vice Chairman, Training and Faculties, International Council for Industrial Security, Safety and Management. I think he'll be the right person to give us much more insight into it. Sir, welcome, and hope to get some more inputs from you. Thank you. Please come. Thank you so much, ma'am. If you want to see the perfect example of odd man out, you can see it on the stage as well as on the screen today. I'm very, very glad that I am standing on the stage talking about a subject which is very similar to what my father spoke on this stage 30 years ago. So he was the head of safety, health and environment of an organization called Shriram Foods and Fertilizer Industries, an organization there where there was a gas leak in 1985, just 1 day and 1 year after Bhopal. Let's not go there, but yes, you're right. So I have seen that culture of safety. We've been talking about the safety culture. I've seen that culture of safety since my childhood. We used to stay in that township. He was not allowed to go into the factory, in the manufacturing unit, without using a helmet 40 years ago. So when we are talking about culture, it has to be built in from the very early stages. Now there are 2 theories that I am going to put across to you, actually real life examples, and I would leave it as a food for thought for all of you to decide. But the only thing that I am also realizing today, how do all of you educators feel when you are speaking and there is a whisper and the children are talking? I have a similar kind of a feeling which I can share with you. This is my first experience talking to all the educators here. 2 cases, and I would conclude with what Devendra Gill sir said earlier. But so last Sunday there was an entrance exam and I took my daughter to one of the institute exam centers. And the chaos at the examination center was unbelievable. There were perhaps 1,000 students and 2,000 parents. Believe me. Everyone wanted to drop their child to the last millimeter of the classroom. Last millimeter.
and this narrow gate where only one person can either go in or come out, and there were 2,000 students wanted to say bye-bye to that child at the last minute. And it was a chaos. But what is it that we are talking about? It is the culture that we are telling these kids कि जो पहले घुस जाएगा अंदर किसी तरीके से उसी का रैंक सबसे ज़्यादा होगा उस एग्जाम में. Now, what do we teach and who do we teach about this situation? When the exam was over, there were about 1,000 car parks on the main road, one lane, 2 lane, 3 lane. There were auto rickshaws, there were e-rickshaws, there were cabs, and there were everything. The objective of every child there was, how do I get in? Bhaad mein jaye duniya. Unfortunately, that is what we are bringing up our children with. And the same is also, that's my second point, the same is also visible on the roads. The restlessness, the rowdiness, the urgency, me first is what is, I mean, हम तो पहले आप वाले देश में से हैं, but this is what so if we do not bring in that culture of cohesiveness, of other people first and safety, of all of them around, we are heading for a disaster. In 5-10 years of time, I mean, you are going on the road, kuch na kuch zarur hoga. That's how we see every day. There is no day that you don't see a situation happening on the road when you get out of your home in the morning and go back in the evening. So I want to propose through this forum, and like Devendra Gill Sahab said, that we try to approach many schools, and we also did, but we went to the schools and said that we want to do a workshop for the students, because if those students in the early classes of 4th, 5th grade, 3rd grade, if we tell them that, you know, these are, I mean, we are doing a lot of stuff on the road safety, but I think one step ahead, if we go ahead and ask those children to go back and teach this to their parents. Papa, don't cross the red light. How many of us actually stop at 11:30 at night on a red light when there is no police guy? Not even 1%. Not even 1%. And the children are learning that. क्या फर्क करता है, पुलिस वाला नहीं है, रेड लाइट निकाले. But that's the culture. That's the thought process in their minds. So since I'm also from the corporate and we do a lot of consulting work, so many things for so many of the corporate, schools are the least in numbers as adopting the latest technologies in terms of security, safety, the kind of security guards that those are deployed in the school. So the example that I was giving you about last Sunday in that institute, the time of opening the gate was 1 o'clock. The gate opened at about 1:20. The card came out at 1:45. साहब हटिए, रास्ता छोड़ दीजिए आप. Nobody was prepared. Nobody was prepared. It could have been a stampede. It could have been a disaster there. Because दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि सबसे पहले बच्चा हो जाए. Nobody, जब बच्चा अंदर चला जाए, nobody is managing the entire ecosystem of the examination center. So what I want to say is that please teach the students, take the help of the corporate. We have to look safety, security of the schools as we take care in the corporate. In the corporate as well, as I was saying that formally, for maybe slightly deviating from the topic, but to let you know, till very recently, there was no formal education for security and safety in our country. Have you ever heard anyone MBA in security management? MBA has 37 specializations in our country, 37. Security management is not one of them.
So unfortunately, even in corporate, as ma'am also said, we keep security at the end. This is the last thing we want to spend budgets on. But unless and until we have some situations, we get some more respect, whether it is 2611, unfortunate case of Nirbhaya, now the Goa thing has happened, COVID, security hona chahiye. That's how the culture But teach them young, catch them young, tell them to, this is the way of life, this is how we have to grow, this is how we have to, we are talking about Viksit Bharat since morning. So if this 4, 5, 6 years old today is not talking next 20 years, next 15 years about this culture, it's going to be very, very difficult to manage on the streets, in the work cultures, in the organizations, in the industry, everywhere. Everywhere. So how is it connected with the mental well-being? I think this is what they should be taught. This is how they should feel safe. This boy is learning that crossing a red light at 12 o'clock at night, if there is no security guard, is fine. We see everybody on the road coming wrong side, bina helmet, ye wo sab. So this has to go. We should teach these kids to go back home and ask your parents to follow the rules. Say no to crackers is a very, very big example जो इतना बड़ा मुहिम देश में चला. बच्चों ने जाके बोला no crackers and it worked. So let's follow traffic rules. Let's follow safety. Let's follow, basic norms. If we do it to these kids and they go back and teach their parents, perhaps that's something which is the most need of the hour, and all you people from the education industry, all of you from academia, are the people who can do it. Any help from corporate, people like us are available. Just invite us and we'll be ready to help. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, Dr. Rajiv Mathur. You have really crux of the whole thing. Culture needs to be developed from the very early stage. Another very important point, parents, for us, actually children are not the problem, the parents are the problem. They are the ones who really create problem in the school, everywhere. So they need, now we can't train the parents, but we try our best to do it with the children. On a lighter note, the cameras are there by government. They have said if you cross, and suddenly online you get that you have to pay the penalty. But they don't bother. They say father will pay. So there are things which are happening. So government is also trying, corporates are trying, schools are trying their best. I won't mention in one of the cases where all this has happened, the father said, तो क्या हो गया, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, टीचर ने कह दिया कि बच्चे मत करो. So that is not the case of, I don't think it's a case of mental. See, there was something else also, not only that mental illness, but whatever, that's a very different point altogether, which is being negotiated and being discussed. So but you're very pertinently, you said that caring, sharing, discussing with the children, all that is very important. They should know how to care, how to share, how to look after elders. Not to, as you said, rowdiness, the crowd which is there, they don't bother. Any disabled person is there, they just push and go away. Who will teach them? I think schools are trying their best, but I think, again, I said 360 degree, everybody, parent, child, and school, everybody has to really get into it and do it. Thank you so much, sir, for your inputs. Now we come to the next. Sorry that I'm just trying to hurry up because I have to see the next one is also there. We have with us Garima ji, Dr. Garima. Please come. She is a senior consultant, gold medalist in anesthesia. So I think सब बच्चों को anesthesia दे करके जो बच्चा, just joking, बहुत ज़रूरी है कि उनका restlessness को कैसे ख़त्म करें in the schools. But Garima, please, thank you. She has beautiful points ready, and whatever time you can give, please do it. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Thank you, PhD Chambers, for inviting me. As she said, anesthesiologist. Basically, what role do I have to play amongst you all? So I'm expertise in pediatric anesthesiology. So I've been dealing with pediatric group from not just like 12 years or 13 years, as early as 1 day old child till, of course, 18 years and age. Let me first bring you one thing. Whenever we speak to children in the OT, operation theaters, and I'm about to give them anesthesia, so we have to communicate with them to decrease their anxiety. Even during the parental separation, before the OT that we call preoperative area, from that day, a day before the surgery, till the surgery is over the next day, these 3 days are very crucial. Why am I bringing this up? Because when I talk to them, the most interesting topic to them is school. So when I ask them, who's your favorite person? मैडम वो टीचर, वो मेरी मैथ्स टीचर, वो मेरी साइंस टीचर, वो मेरी इंग्लिश वाली मैडम, वो हमारी वाली स्कूल टीचर. So huge claps to you because you people have brought everything good inside the student. The confidence that the student has, that a child has, is because of you, and less of parents, more of you. I come from a lineage of teachers only. My mom is a professor, my brother is a teacher, and they all are speakers. So yes, I think that we say that 9 to 5, 8 to 2 o'clock is the school timing. That is very wrong. It is not just 8 to 2. It is also after 5 o'clock when the student is doing their homework. When they are dealing with you, they remember, मैडम ने क्लास में ये पढ़ाया था, मैडम ने ये बताया था. That actually matters. Now coming to the topic, mental anxiety. I will be talking about mental health. Anything absence of physical illness is not mental wellness. We all are aware of that very clearly. Now, as ma'am said, first you have to identify. How will you identify? It is divided into 3 parts. Basically, these are called red flag signs. Am I, like everyone is aware of it, right? Red flag signs? Okay, I think it is more towards the counselors. But please remember, whenever we talk about mental health or mental well-being, it is not just the role of the counselor. It is definitively start from the classroom, the teacher itself, the class teacher itself. So the class teacher, the counselor, and any doctor or the nurses that are available inside the hospital, inside the school premises, they're all involved together. So the red flag signs actually have emotional, behavioral, and academic. इमोशनल साइंस, बच्चा बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आप लोग को उल्टा जवाब दे रहा है क्लास में, आपकी बात नहीं सुन रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, घर से लड़कर आता है, अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड से लड़ाई कर रहा है बिना रीज़न. यू हैव नो रीज़न, दे आर फाइटिंग. आपको नहीं समझ में आ रहा एकदम से उसका बिहेवियर ऑड वन आउट क्यों हो गया है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट ले रहा है, इनफैक्ट स्कूल बंक कर रहा है, वन और द अदर रीज़न. एंड टू ब्रिंग in your notice, headaches, bloating, abdominal pain, these are also the signs of depression. जब depression होगा, anxiety होगी, acidity levels increase होंगे हमारी body में, eventually सबसे पहला symptom आएगा पेट दर्द. Without any medical reason of course. कुछ बाहर का नहीं खाया हुआ है, घर का खा रहा है, कम खाया हुआ है, normal खाना खाया है. Despite this, child is complaining of stomach ache since last 1 week. Please look forward towards mental illness. Second, headache. उसको विजन में प्रॉब्लम नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उसके कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, विच विल कॉज परसिस्टेंट हेडेक्स. सो प्लीज आइडेंटिफाई दीज साइंस. स्लीप कम हो रही है, सब दिखता है. एपेटाइट कम हो रही है, ये कौन आपको बताएगा? यू हैव टू ऑब्जर्व. लंच अपना छोड़ के जा रहा है, लंच अपना फिनिश नहीं कर रहा है, या फिर जो भी स्नैक्स टाइम है, या पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है. सो येस, यू हैव टू कोरिलेट. एज सर एंड मैडम सेड, बिल्ड द कल्चर. हाउ टू बिल्ड अ कल्चर? टू चेंज योर माइंड सेट. First, we have to change our mindset. See, as my pediatrician sir always said very well, students, children, they are not tiny humans. Never call them tiny humans. They are an entity of itself. Children are in the world of itself. Do not compare with them with your adultness. Your adultness are not their tiny adults. They are absolutely different performance. Then we spoke about stigma. How will you deal with that? बच्चा आया, बच्चे का पता चला कि उसने कोई chaos क्रिएट किया है, या वो फेल हो गया है, या किसी से लड़ाई हो गई है. How will you deal with it?
उस स्टिग्मा को डिक्रीज कैसे करेंगे आप लोग? फर्स्ट, ensure privacy. Never scold a student in front of another student. Never doubt them. Never label them. Never judge them. बच्चा को कभी ये नहीं बोलना कि तू लेजी है, तू काम नहीं कर रहा. Ask them in a more appropriate manner. बेटा, I noticed कि आप शायद कुछ काम कम कर पा रहे हो. Any particular reason? आप ठीक हो? आपको सही लग रहा है? Always ask them. Inquire about them. Always be inquisitive. Don't judge them. Never, never label them. The moment you start labeling them, it is half you have lost the child. You are halfway down, not up. Then coming on the management part. As a counselor, as a health worker, always remember psychoeducation. How to deal with psychoeducation. साइको एजुकेशन में पहले होते हैं सेशंस. प्लीज़ रिमेंबर, अगर स्टूडेंट ने एक काउंसलिंग सेशन अटेम्प्ट कर दिया है, इसका मतलब वो ट्रीट नहीं हो गया है. इट इज़ ऑलवेज विथ फॉलोअप्स. एक सेशन हुआ, एक सेशन अकर्स ओनली वंस अ वीक, नॉट वंस अ मंथ. प्लीज़ रिमेंबर, सेशंस अकर्स वंस अ वीक. दैट मीन्स अराउंड 8 to 10 sessions by WHO guidelines. Please remember, 8 to 10 sessions are normal. Not 1, not 2, एक महीना चला गया बच्चा काउंसलर के पास. No, it is inadequate. Inadequacy will result in ineffective treatment. Counseling at earlier age is very important. See, today I have become a mother of 3-month-old child. And let me tell you one thing. बच्चे का brain development first year में 60 to 70% है. And by 5 years of age, 90% है. So all the teachers who are here, who are from, I think, a kindergarten, nursery level, please remember, you are the one who are actually building a nation. 90% brain development तो यहीं पर हो गया. बचा क्या? 10% से adult लोग deal कर रहे हैं. So yes, what you are doing is very crucial. Development वहाँ से आता है. Developed nation आप लोग बना रहे हो. Then safety में एक बहुत important point है जो मुझे बहुत personally बोला था, POXO. Anybody who wants to talk about it? Anybody who wants to inquire a question about it? I think they have all already in the schools everywhere. My just only question to you is, POXO हो गया, Act हो गया, how will you report? वो भी हो गई. Reporting आती है, formalities सबको आती है. Then what? That student is back in the school. Let's not assume the worst. That student has not suicided. That student has not left the school. That student is back in the school. How will we deal with that? Exactly. Yes, ma'am. Very well, ma'am said. उसको exclude नहीं करना है, उसको secluded नहीं show करना है. We cannot discuss with any other. Plus एकदम normal behave करना है. But इतना normalcy नहीं करना कि वो student को लगे कि मेरे कोई consideration ही नहीं है, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, या मैं burden बन गया हूँ. उससे बात करनी है, but आराम से, सब कुछ normal feel होते हुए. उसको importance देनी है, but with parents. And of course, please do not discuss students in front of their parents. You want to talk about a student? Talk to students separately, talk to parents separately, never together. And everything cannot be told to their parents. You are a better judge of it, you are a better decider. I personally believe everything cannot be told to parents. You have to identify what should be told to them and what should not. Because it is their. See, they all are working, right? Today is a working environment, 9 to 5, everybody will be working. So only it's you are the better judge. And I think there I will sum it up, more or less. Thank you. I will not take time, ma'am. Thank you. Very well said. You know, you did mention about POXO. We did not want, because, you know, it's a long detail that, you know, and most of the schools, they have all that. So that's the reason we didn't take it up. But then, you know, your talk about brain development at an early stage, that's very important. So we always say the nursery teachers are very important. Nursery KG teachers, because that's the time the children, you know, the brain development takes place. And then you already talked about identifying the problem, emotional, you know, and behavioral, academic, all these three are very important. And symptoms of depression, where the physical and emotional both have to be looked into, because if the child is not eating, not doing so, there's something. And then the most important thing is what you said, no negative strokes have to be given to the child at any cost.
as you said, a very simple way. अच्छा आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया बेटे? Instead of saying, करा नहीं, खड़े हो जाओ. So see the difference. खड़े हो जाओ, ये हो गया, डांट पड़ गई. See, बच्चे करा नहीं, क्यों नहीं करा? कुछ प्रॉब्लम हुई होगी. So that changes the whole, scenario of the place. So that kind of thing is very important, and I'm sure we all carry this with us, Dr. Garima. And we appreciate that the first thing I loved is that you appreciated the teachers. Can we give a clap for that? Teachers के लिए clap. The child is in OT. बच्चा OT में है, वहाँ पर भी आपने पूछा तो बच्चों को सारे teachers के नाम पता थे. So that shows that how much love and affection they have for their teachers. And I'm sure we are talking about safe schools, we are talking about safety of everyone, not only children, teachers, parents. I think now these days the safety of teachers is very also important. How they have to behave and how they have to be taken care of. We are working out a program on which we are trying to prepare how to take care of our teachers' legal part. Otherwise the teachers are in trouble. You can't even say anything to the child. So there are many issues which are there. Thank you so much, Dr. Garima. Now we have with us our last panelist. It is again an educationist, Dr. Jyoti Kohli, Senior Shri Ram Model High School, Faridabad. So we have from NCR at least one person. So please come and share your views, and then we wind up and we request the next team to be ready. Thank you, because Malika is there, you're going to moderate, so you're going to be here. Thank you, dear, please. Very good afternoon. I say very happy good afternoon to all, because as we are discussing a very healthy and very burning topic here, so I really thankful to Garima ma'am and PhD CC Chamber that I would like to start my talk with one poem that is related to mental health and well-being. It is all related to students' trauma, students' pain, agony, and which we some or the other way used to take care, cater very properly. And it is just like the sun within. The sun within, sometimes the mind grows tired. Though no one really sees behind a smile a hidden storm. Whispers quietly in the breeze, we walk among 1,000 faces, yet miss the stories in their eyes. Every heart carries the battle. Every silence, 1,000 cries. So pause a moment, listen to what your heart wants to say. Life is not only a running races, it's also learning to breathe each day. When your thought begin your trouble, you reach out, speak and share. Even the darkest night will break. Here, I would like to tell that yes, we are talking about so many things like why the child is doing like that, but I would like to add one thing, that is shadowing parents and role reversing situations. In those criteria, parents pretends to be, yes, this is not our duty. It is entirely the duty of the teachers, parents, principals and the management. But they are simply saying, we are giving enough fees, so it's entirely your responsibility. Yes, it's our responsibility, because future is in our hand. God has chosen us to create a very good nation. But overshadowing parents, I would love and ask to the Garima ma'am that how we have to resolve this type of problems, because parents are saying children are not listening to us, and children are saying parents are not fulfilling our needs. Only giving food and shelter is not the requirement of the child. For the mental health and well-being, they need extra care, extra attention. Don't become the perfect parents, become the present parent. So, with us in our school, our director principal Vikram Singh Rathod is also sitting here. We both of us try to call the child independently, as earlier someone said that nobody is allowed to get inside the principal room or the director room. But in our school, they are open to come up anytime. If we feel any problem, we reach out to them. So I request to each and everyone, don't
create the barriers because students are really want us to love and give extra care. Yes, we are doing, but because of the rat race and because of the overpressure, and the parents are not giving the enough time as the students are asking for. So I just conclude my words with that. Yes, this is a very burning topic as it's oxygen and food is more important for us. Same with our care and attention is also required. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Jyoti ji. You know, it's very important that the parents need to, again, we are coming back to that. The parents need to be educated. They should understand the need of the child. They cannot just say that we have paid the fees. Fees pay kar diya, hamara kaam khatam. That's not there. It has to be holistic. Holistic approach to life. As हमारे मेयर साहब ने कितना अच्छा बताया कि देखिए कि पहले ज़माने में कैसे होता था. He spoke so beautifully. कि कैसे बच्चे ज़रूरी थे वो सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और कहीं से भी पढ़े हुए हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. देयर IAS ऑफिसर सब कुछ है. ज़रूरी नहीं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे या बड़े स्कूलों में जाएंगे. इट्स बेसिकली द कल्चर ऑफ द होम. उनका मेन पॉइंट यही था कि आप घर में यदि आप कल्चर डेवलप करेंगे, बच्चों में एम्पैथी, केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, वो सब एस्पेक्ट्स ले आएंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है रिलेटेड टू वेलनेस एंड वो सेफ्टी का ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा. पेरेंट्स बच्चों को एक केस में है वो मदर बंद करके चली गई, सर्वेंट बाहर थी, दरवाज़ा नहीं खोल सके, बच्चा 12th फ्लोर से नीचे गिर गया. इट हैपेंड इन NCR एंड द चाइल्ड वॉज ए स्पेशल चाइल्ड. क्या मदर को ज़रूरत नहीं थी कि वो चाबी दे के जाती उसको लेडी जो उसके साथ खड़ी थी. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच हैपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, So from the school side also, from the parent side also, and government also, they are trying their best. They are giving, CBSE is giving so many, आप ये ऐसा करिए, ये करिए. There are so many things. सुबह बात हो रही थी कि do you have any in-service training? I said there are so many in-service training. Compulsory हो गया CBSE की तरफ से, and I'm sure in MCD schools also it's the same. कि आपको इतने घंटे in-service training लेनी है, and it's on different topics. Including this inclusive and even mental health and all that, safety, disaster man, बहुत सब चीज़ों पे कर रहे हैं. So only thing is मैं बड़े happy note से ख़त्म करना चाहती हूँ कि सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. हमें और थोड़ी कोशिश करनी चाहिए ताकि थोड़े से जो इंसिडेंट हो जाते हैं उससे सारी कम्युनिटी स्पॉइल हो जाती है. सभी की इज्जत का सवाल हो जाता है कि आप सबके स्कूलों में होता होगा. सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट दैट वी ऑल लुक इनटू सेफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं. सेफ होम्स आर ऑल्सो नेसेसरी. सेफ एवरी प्लेस इज, इवन ऑन द रोड रेज. बताइए सड़कों में मार के भाग जाते हैं. तो वो सब, दैट कल्चर हैज़ टू बी डेवलप्ड. I hope we are able to do that. Thank you so much, friends, for your participation. Now I request Madam Malika to take charge of the next session. Sir, we have the permission. हम इसको ये session करके करें sir? आप क्या चाहते हैं? मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश. I finish in half an hour. नहीं मेरे को वो नहीं. मैं अभी क्या करना है सर? नहीं वो बाद में, पहले इनका बताइए. पहले ममता मैं बाद में दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है. Just felicitate them, then this session would be binding. ठीक. मैं मैम अपने ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात जो आपने बोला कि सरकारी स्कूल से कहाँ कहाँ लोग पहुँच जाते हैं. तो मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ. मैं ये नहीं बता रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उस स्कूल में मेरे सीनियर थे जिनको आप सब जानते हैं, एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह, द हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. सो सरकारी स्कूल के लोग देश का नाम भी करते हैं. वाले पे भी जाएंगे तो शायद पॉसिबली सेफ्टी भी कवर होगा, क्लास का क्या
आउटसाइड, लेकिन इंटरनल होना चाहिए ना, जबरदस्ती क्यों करें? मतलब हम जबरदस्ती करें कि हमारा कैमरा है, एंड आई एम सॉरी टू से देयर आर मेनी, बिकॉज आई हैव बीन प्रिंसिपल फॉर मोर देन 2 decades. यू नो, जानबूझ करके टीचर्स उस कॉर्नर में जाएंगी जहाँ मेरा कैमरा नहीं पहुँचता. अब मैं टॉयलेट के पास तो जाके कैमरा नहीं खड़ा करूँगी ना. सो देयर हैज़ टू बी कल्चर विच नीड्स टू बी डेवलप्ड. सिर्फ कह के कि ये कर लें, बट यू आर राइट, आई नो अबाउट इट. बट वो क्या होता है कि आप एक से एक और चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं. वी वॉन्ट दैट इंटरनल थिंग शुड कम, टीचर्स शुड फील, चिल्ड्रन शुड फील, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है जो आप कह रहे हैं. फर्स्ट कौन है? सर, अब बिल्कुल कल्चर बदल गया ना, दैट्स द प्रॉब्लम. आजकल मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई एम सॉरी टू से एनसीआर में सारे 5-star होटल्स हैं. दिल्ली में फिर भी स्कूल है शायद, लेकिन एनसीआर में तो 5 स्टार 7 स्टार. यू नो, यू गो देयर, आई गो एंड कंडक्ट वर्कशॉप्स. मैं कहती क्या कितना सुंदर है, यू नो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट इज द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. दे नीड टू बी टेकन केयर रादर देन द ब्यूटीफुल सराउंडिंग कि उनको एयर कंडीशन ही चाहिए या ये चाहिए. वो सब तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, पेरेंट कैन अफोर्ड इट, इट्स ऑल राइट. लेकिन इंटरनली क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी. टीचर जो सोल है उसका कितना ख्याल करते हैं हम? क्या हम प्रॉपर सैलरीज देते हैं टीचर्स को? क्या हम प्रॉपर उनका, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम? बच्चों का क्या करते हैं हम, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा करते हैं? व्हाट आर वी डूइंग? Are we doing all that? That also will help us in our safe schools. Of course, it's just a part of it. Thank you, dear. Thank you, sir. That part is there. I'm sure everyone will agree with me when I say that it was indeed an engaging and enriching dialogue. We are grateful to our speakers for offering practical wisdom and compassionate direction. May I request Dr. Jitinder Singh to come forward to the dais and present memento to our distinguished speakers, Dr. Jyoti Kohli. Thank you, ma'am. Dr. Garima. Dr. Garima. Thank you, ma'am. Professor Rajiv Mathur. Miss Lalita Tekchandani. Can we clap, please? Malika ma'am. And of course the moderator for our session, Dr. Usha Ram. Thank you. Please come, please come. Hold it. After that compelling perspective, Malika ma'am hardly needs an introduction. Her work speaks louder than words ever could. We can clap for her.
Ma'am is the moderator for the next session. We love the internet. We just want the internet to love us back safely. Malika ma'am's leadership has earned Tagore International School East of Kailash prestigious recognition, including the Excellence Award from the Government of Delhi and the Green School Award for Sustainability. Ma'am herself has been honored with several notable awards such as Inspiring Educators of Delhi Award, the Principal Par Excellence Award by IIHM Delhi, the Innovator Leader Jury's Choice Award by Education Today, the Shama Prasad Mukherjee Award for Excellence in Education, the Progressive Principal of India by Rethink India Institute, the 2009 Global Human Rights Protection Award by the Indian Institute of Human Rights, and the list goes on. Can we hear it for ma'am? Our distinguished panelists for this session are Shri Rajesh Hasija, Director, Indraprasth Group of Schools, Dr. Hasija, Shri Pavan Duggal, Cyber Law Expert. Thank you, sir. Shri Divya Pratap Sharma, Advocate, Supreme Court of India. And Shri Vikas Kalia, Deputy Director of Education, Government of NCT of Delhi. Over to you, ma'am. Thank you so much, Neha, and thank you, Usha ma'am, and PhD Chamber for organizing this session, which since morning has been very meaningful, very informative. So we started with physical safety. From there we went to social and emotional space, and now we come to a very important and integral part of any, I can say, the society now is the digital space, and very important for all of us to stay safe in this digital space. Just fun fact, the previous session when we were talking about social emotional safety, we had more females. When we are talking of digital safety, there are more males. So I couldn't stop from sharing this, what I saw. So maybe we say that females are emotionally strong, whereas males are financially strong or technically strong. Yeah. So welcome to the panel, sir. It's a pleasure to be with such a dynamic group of school leaders today. As school teachers, we carry the responsibility of shaping not just the minds of our students, but the environment in which they learn, grow, and become future citizens. And in 2025, that space is completely digital. Today's conversation is centered on three powerful themes: curriculum integration, cyber safety, and digital responsibility. These are no longer optional add-ons to school, but they are the backbone of modern education. We often say that our students are digital native, but the truth is being born in a digital world does not mean being prepared for it. Our students need the hand-holding, and it is the schools and it is a society who can teach them and who can tell them how to use technology responsibly and how to use it safely. The main question in today's world is how equipped are our school, our teachers, our students to navigate this digital landscape confidently and responsibly. And to help us find an answer to these questions, we have with us Dr. Hasija. So sir, I will start with you. How can school embed digital safety into the curriculum so that it becomes a habit of mind rather than an additional chapter or a one-time event? So Dr. Hasija. Good afternoon, audience. Thank you very much for making me part of this discussion. As member committee of courses and as a practicing teacher, I feel this discussion is very important.
Then another advantage, since two of us are there, we have plenty of time to share our thoughts on. Malika ma'am, you have said digital safety curriculum. And you say how we don't make it an isolated chapter. Beautifully. Dear friends, today world is driven by technology. The pace with which there is explosion in technology is unmatchable. It is said in the technical world that you open the carton and hardware is outdated. You click on the software is outdated. This click is nowadays creating quite a lot scare. You click on a link, your identity is compromised. You click on a link, your financial accounts are compromised. You click on a link and your reputation is compromised. Thus, digital safety has become a very, very important factor in today's segment. How do we do it? She very rightly posed a question, curriculum integration. Dear friends, you all know when we talk about curriculum, we talk about content, we talk about pedagogy for transaction of curriculum, we talk about learning experiences. In order to have learning outcome, which are concepts, skills and values, I plead to everyone, urge to everyone, let's add one more domain to it and let this be the digital citizenship. How do we do that? Let me give you 5-step funda on this one. When you are talking about transaction of curriculum, modification of curriculum, ultimately it's a transaction. Let's build up digital citizenship or digital literacy program which is competency based. Across all levels, at primary level, middle levels, secondary level, let's identify those milestones which are very important to inculcate in order to have digital safety. Could be online etiquettes and manners at the primary level. Could be we talk about the cyber bullying, the privacy of personal identity at middle level. Could we talk about the digital footprint, AI ethics at the senior level? If we build up these competency-based digital literacy program, believe it, the change would automatically come. And this should never be repetition. It should be the depth-oriented. The second point, may I take a little more time? The second point is across all multidisciplinary subject-oriented. She very rightly said that digital literacy cannot be one isolated chapter of computer textbook. It has to be across all the subjects. Can't we talk about password perfection exercise in mathematics? Can't we talk about digital kindness in moral science? Can't we talk about facts and fake in environmental science? So across all subjects, let's take a multidisciplinary approach. Third, which is very important, inculcate values. When you embed digital literacy with the values of mutual respect, value of integrity, value of responsibility. Like start an online project where all three are taken care. Start group project where mutual respect is taken care. Start about leadership program. Believe it, digital literacy will be more meaningful. Fourth, empower every teacher. Instead of being a digital technology user, let them be a digital mentor. Once they become digital mentor, the things will move fast. And last, the fifth,
let's have a collaboration with community, especially the digital community at large, because they are the one who knows the latest development at most. They come to know much faster. Once they share with us, with the school, with the digital mentor, the privacy, the digital security will come much faster. I would say teach every child across all dimensions where they are able to think before they click. Think before they click. They pause it before they post it. They pause it before they post it. They ask it before they share it. And they respond to you, report to you before they are in pressure, in trouble. If they are able to take this 4 exercise. You know, in old Gurukul days, you remember we have seen a methodological serial that Arjuna, when using the Divya Astra, reciting some mantra. In Gurukul days, everyone was taught that when you are using power tool, then you must require purpose, permission, and accountability. That's what we need to teach our children. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Very rightly put. Very, very rightly put. And what I'll say is, think before click, pause before post, ask before share, and report before you are in trouble. Which are a very good mantra, sir. I am going to take this mantra to my school also, because it's a beautiful phrase which I think we all can display in our classrooms for our students and for our teachers to stay safe. It's not only the students who need to learn this, even the teachers. So, Mr. Sharma, you come from a law background, and you will be the right person to help us to know that what are the key legal responsibilities that school must be aware of when children use any digital platform. Because like I said, they are natives of this digital era, but they don't know how to use this digital space. So what should school keep in mind when we are giving this digital space to them? First of all, good afternoon to everyone. Am I audible now? Yeah. So, I have prepared a small gist as far as the laws are concerned with regard to the schools. And first of all, good afternoon to everyone on the dais and over here. So, as far as the sir has spoken, one thing is very prominent, that caution and due diligence are of extreme importance. So whether it's a routine life, or you call it a digital literacy, or you make it applicable at some other place, it is extremely important that you need to be cautious and having due diligence with regard to everything, whatever you are doing in life. It becomes more important when we are reposing to the threats coming from the children's side. Now, as far as the question is concerned, I'll go back to a little background. Because cyber laws, cyber security are basically privacy laws for me. Because we want that some personal information should not be reported or should not be shared to the public at large. So basically these are privacy laws. So as far as the background is concerned, the Supreme Court in the year 2017 gave a prominent judgment where right to privacy was held legal, means it was upheld and it was made legal. The name of the judgment is Justice K.S. Puttaswamy, retired versus Union of India and others. This is also called a landmark judgment because herein the right to privacy was included under right to life under Article 19, 21 along with 14. Now, after passing of this judgment, a committee was set up by the government under the chairmanship of Justice B.N. Shri Krishna, and a law was passed, a law was enacted, namely DPDP Act, which we commonly call as Digital Protection
the name of the act is Digital Personal Data Protection Act. Now, we have two major acts catering, as far as the schools are concerned, we have two major acts catering to the needs or to the shortcomings or to the things following. As far as the children are concerned, we have two major acts. One is IT Act 2000, other one is DPDP Act 2023, along with its rule which have been passed very recently in the year 2025 itself. Other than this, we have POSCO Act and we have BNS, which is Bharatiya Nyaya Sahita, which was also passed in the year 2023 very recently. And one more thing, one very prominent thing, that's as far as the laws are concerned, to safeguard our legal rights vis-a-vis the digital literacy or the threats reposing to the digital use, specifically with regard to the schools, or if we talk about children, the laws are very new. The oldest law, I would be say, the IT Act, which was passed in the year 2000, and it hardly caters, because in the year 2000 the digital literacy was, I would say, to a very minimal extent as far as we are standing in the year 2025. So the laws are very new, therefore as far as the government initiatives are concerned, they are trying their best. They are setting up the committees, they are passing the laws, the statutes. Now, as far as the organized crime, stalking, cheating, publication and transmission of offense material electronically, all these offences are concerned, they are covered primarily under the BNS Act and POSCO Act. But the remaining acts or the remaining offences which are likely to happen within the school premises, they are covered under the IT Act and the DPDP Act. I'll give certain examples of certain offences which may happen inside the school premises or with the children at home. Are the unlawful acts related to the disclosure of information in violation of lawful contracts. A school goes in several contracts having several information, sensitive information of children which are likely to be leaked or misused by the authorities, the school management. So unlawful acts related to the disclosure of information in violation of lawful contracts, breach of confidentiality and privacy, damage to computers or related devices, tampering with computer source documents. Commonly, one very common thing is that using somebody else's password, then cheating using computer resource, publishing private images of others, acts of cyber terrorism, publishing child porn or predating children online. Now, as far as the statutes, the obligations or the responsibilities upon the schools varies as far as the digital offences vis-a-vis the children are concerned. The schools have to comply with IT Act, with the DPDP Act, Right to Education Act, along with the guidelines passed by Data Protection Board of India. This board has also been constituted, not yet entirely in all the states, but as far it has been mentioned under the DPDP Act that this board has to be constituted across all India. Now, as far as the major act is DPDP Act, as far as the problems are concerned, we have to understand, we have to go through with three major definitions. The first one is child. Child had been defined under DPDP Act. Any individual who has not attained the age of 18 years is a child as per the Act. Second is data fiduciary. I'll just read out the so-called technical terms used under the Bayer Acts. Means any person who alone or in conjunction with other determines the purpose and means of processing of personal data. Meaning thereby, the individual who is in possession of child's personal data or sensitive data and is accountable for the usage of such data, such individual can be from the management, could be the principal, or even the teachers, as the case may be. So this is data fiduciary who is in the possession of sensitive data. This means this particular term has been coined and mentioned under the Act.
Now the third and last one is data principle, means the children's or the parents or the legal guardian, lawful guardian, as mentioned under the Act. Now the responsibilities, I'll just cut short and I'll directly come to the responsibilities because that is the major part which has been asked for. Now the responsibilities incumbent upon the schools. I'll also mention certain relevant provisions of DPDP Act which are prominent vis-a-vis the schools are concerned. Now first and primary thing is consent and parental authority. Now all the schools must obtain verifiable consent from the parents or the legal guardians, so that in case that information is shared further, it should be within the legal parlance and it should be used for the intended purpose. This will also create more transparency as far as the parents are concerned. They will be knowing that what information and for what purpose that information has been shared for further purposes. Now the second one is, this consent, taking consent from the parents or the legal guardians is a mandate under section 9 of the Act. Now the second one is data usage to be minimalistic and should be for the intended purpose. I already mentioned data fiduciary. So anybody who eventually becomes a data fiduciary, meaning thereby that who is in possession of the relevant information, the sensitive information, should collect the accurate minimum and the relevant information from the children or the legal guardians or the parents for that purpose. Further, the said data should only be used for the purpose for that it has been collected. In case of any breach or any violation, the data fiduciary should be held accountable for the breach. Third one is mechanism for correctness and erasure of personal or sensitive information. Now the children's parents, guardians should have a right to correct or update personal information as and when required or as and when the need arises. Further, the sensitive information such as having possession of photocopies of Aadhaar cards, the medical records or other sensitive, including biometrics or other sensitive information which may likely to create an adverse impact on the image of the child or child himself or herself, should not be shared with anybody else. Further, as soon as the purpose of holding that information is over, like for an example, the child is shifted to some else, means he goes to some other school, that immediately thereafter that information should be deleted at the first occasion. Means you have taken a particular sensitive information, you have taken the information of the child, and once the child is out of the school premises in entirety, so that information shall be deleted or used as per the section 12 of the DPDP Act. Now, right for grievance redressal. We all know that whenever there is a violation or there is a breach or there is a dispute amongst the parties, there is a redressal. Because eventually either you will approach to the court of law or you will go to a redressal committee, means a grievance committee. So this Act mandates under the section 13 of the DPDP Act, this Act mandates that you need not to have a separate committee for it, but you need to have the redressal as far as the sensitive information is concerned. Fifth one is restrictions on profiling and advertisement. This is extremely important. This I have personally observed in one of the schools, that information taken by the schools vis-a-vis the children should not be used for the purpose of advertisements or for any other purpose. The sole purpose should be for the learning purpose only. Now the sixth one is formation and publication of a child age appropriate privacy policy. Now a school is having, means the range is very different. The school is having a kid starting from 3 or 4 till 18, 19. So we need to have a age appropriate policy, privacy policy, catering to all the problems which might be faced by the children across all the ages till the age of 18. Now the seventh one is security and breach notification. In case of any security or breach, immediately the concerned party should be intimidated
like the parents or the legal guardian, that there has been breach and whatever coercive or punitive actions have been taken by the management or by the school authorities, they should be put forward, the concerned people, and the corrective measures shall be taken at the earliest. Lastly, a legal expert, because this is what I have observed, that most of the schools lacks a legal expert. At times you need to file urgently and some registration of FIRs need to be done, or something else is to be done, which becomes critically important for the reputation and for the school along with the children also. So at times, means for this purpose, you need to have a legal expert who can draft or who can assist the school with regard to the filing of complaints before the boards at the court. This act, DPDP Act mandates for the formation of boards. In case somebody approaches before the court, then the school need to have a proper legal expert to assist the school in all such issues. I'll just end up with this, because these are the main responsibilities, 8 major responsibilities which will cater as per the DPDP Act, means under the DPDP. Thank you so much. It was wonderful. The DPDP Act, it's very important. Like recently in schools, we have registered students with APAR, something for keeping the academic records in place. And for that, we had to take consent from each and every parent, whether we can share the data with government and create the APAR ID or not. So yes, schools do look into taking consent before sharing the information, even if it is with CBSE. There's a written consent taken, and that's how. So what I can gather from the entire thing is that it's very important to have a child protection policy for sure. More important is to have a digital protection policy also in school. This is a US program. This is a US model being adopted by India under the committee in the year, I think probably in the year 2018. This was a separate bill was passed for this, and subsequently this law has been passed. That's very reassuring that our digital data will be safe. We keep our fingers crossed to see that it's kept safe. I think there's paucity of time. Ma'am is already here to thank us. So thank you very much, and I thank you for sharing your thoughts, and it was indeed a very enriching session. Thank you. इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हम अपने आदरणीय पैनलिस्टों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपयोगी सीखें निश्चित रूप से हमारे शैक्षिक परिवेश को और सुरक्षित तथा प्रभावी बनाएंगी। अब मैं रुपेश जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं तथा हमारे पैनल स्पीकर का फेलिसिटेशन करें। राजेश जी, मैं आमंत्रित करती हूं राजेश जी को। श्री प्रताप शर्मा जी, और अब सुरक्षा पर इतनी गंभीर और गहन चर्चाओं के बाद स्वाद की सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसलिए आमंत्रण है नेटवर्किंग लंच का। कृपया भोजन के बाद फिर से इसी सौहार्द और उत्साह के साथ हॉल में लौट आएं, क्योंकि कार्यक्रम का अगला चरण आपकी उपस्थिति से ही सफल होगा। कुल 45 मिनट का समय है जी। लंच के बाद एक नुक्कड़ नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो कृपया समय पूर्वक यहाँ पर आ जाएं और अपनी कुर्सियाँ ग्रहण कर लें। कुल 45 मिनट का समय, कोशिश कीजिएगा उससे पहले ही आप यहाँ पहुँच जाएं। अभी 2:15 हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है 3 बजे हम अपना नुक्कड़ नाटक प्रारंभ कर पाएंगे।
Hi, where were you? They are saying 5 minutes. They are saying 5 minutes. Okay. स्वाद के बाद संवाद। अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करेगा, जहां संदेश भी मिलेगा और मुस्कान भी। नुक्कड़ नाटक केवल अभिनय नहीं होता, यह समाज का आईना होता है, जहां कुछ ही मिनटों में भावनाएं, संदेश और जागरूकता सब एक साथ जीवंत हो उठते हैं। कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए न्यू एरा स्कूल मायापुरी के छात्रों का। ये एक ऐसा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जो मोबाइल की दुनिया पर खूब रोशनी डालेगा, बस आपके मोबाइल की ब्राइटनेस से थोड़ी कम और सीख से ज़्यादा। मोबाइल की लत। तो
उनके पास हाँ डॉक्टर साहब ये बहुत कुछ सीखती है इसकी आंखों की रोशनी ना दूर हो गई है स्कूल वाली जो हे भगवान और देखो मोबाइल और देखो मोबाइल और देखो मोबाइल और देखो मोबाइल डॉक्टर साहब अब क्या होगा इसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है इसको अब एक चश्मा लगेगा चश्मा लगेगा चश्मा चश्मा लगेगा चश्मा चश्मा लगेगा चश्मा चश्मा लगेगा चश्मा आंखें हो गई खराब आंखें हो गई खराब आंखें हो गई खराब आंखें हो गई खराब सब जल्दी अपने मोबाइल अंदर रख लो चश्मा कहाँ से लगेगा मैं बनाऊंगा इसका चश्मा आप जमा कर दीजिए मैं नंबर लिख रहा हूँ परसों चश्मा लेने आ जाइएगा धन्यवाद डॉक्टर साहब तो देखा भाई बहनों मोबाइल एडिक्शन से किस किस प्रकार के नुकसान होते हैं पहला नुकसान मोबाइल एडिक्शन से बच्चे अपनी पढ़ाई से भटक रहे हैं और अपना पूरा समय मोबाइल पर गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं दूसरा नुकसान मोबाइल एडिक्शन से हमारे स्वास्थ्य चिड़चिड़ा बना रहा है जिससे हम अपने माता पिता से लड़ झगड़ रहे हैं लड़ झगड़ रहे हैं लड़ झगड़ रहे हैं तीसरा नुकसान मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है रोशनी भी जा सकती है रोशनी भी जा सकती है चलो आओ आज हम ध्यान दें हम आज के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे हम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करेंगे धन्यवाद नहीं बनेंगे मोबाइल के गुलाम 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 नहीं बनेंगे वाह, न्यू एरा स्कूल के नन्हे मुन्नों ने तो कमाल कर दिया। इन्होंने मोबाइल की लत पर ऐसी सटीक चोट की है, शायद हम सबका फ़ोन भी जेब में पड़े पड़े डर रहा होगा। शानदार अभिनय, सुंदर संदेश, बहुत बढ़िया। एक बार और तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। स्नेहा मैम, माइक आपके लिए, पैनल डिस्कशन। Ladies and gentlemen, you will be glad to know we have amongst us Dr. Jitendra Nagpal. We have amongst us Dr. Jitendra Nagpal, who is certainly an expert and will be able to guide us better in this scenario. Sir, can we have you on the dais and enlighten us with your words? Thank you so much, sir, for taking out your valuable time for us. स्लाइड दिखाने के लिए, बट कोई बात नहीं। Thank you. If he's got it, yeah. Yes, I'm fine. Thank you so much, ma'am. Very good afternoon, ladies and gentlemen, and beautiful minds of India, the children. Let's give a big hand to the performers. अगर कोई डिफरेंस हमारे देश में क्रिएट कर सकता है तो वो हमारे 60 करोड़ की आबादी है केवल बच्चों की। एंड हार्टफुल थैंक्स टू डॉक्टर उषा राम, डॉक्टर रुपेश पांडे साहब, all the very senior change makers at the PhD house, honorable principals, whomever I can recognize here. Madam Meenakshi ji is here from Birla Vidya Niketan, and a lot of nostalgia. मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली 20 साल पहले, अभी डॉक्टर उषा राम जी से बात हो रही थी, एक NPSC का समिट यहीं हुआ था, और वो समिट केवल बच्चों के लिए था, जो निर्माण हुआ था नेशनल एडोलेसेंट समिट का। किशोर अवस्था के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में पहली
चर्चा, उससे पहले भी प्रोग्राम हो रहे थे, बट कमिंग एट द पॉलिसी लेवल, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ऑनरेबल टीचर्स, काउंसलर्स एंड प्रिंसिपल्स, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज इन प्लेस बाय 2005, और हमें याद है कि बच्चों ने इसी मंच पे बैठकर NCF 2005 के बारे में बच्चों ने बात करी थी. And those, some of them are in touch with us, ma'am. I remember some names like Amalina Dave from Springdales and one or two of your Lakshman Public School students. And they are very big officials in the United Nations today. And they spoke about school safety at that time. A big hand to them. So बड़ा अच्छा लगता है कि विजनरी बात हो तो बच्चों को इन्वॉल्व करके हो, और आप सबकी दुआओं से एक हम यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा मैं. द इंटरनेशनल एडोलेसेंट लीडरशिप समिट होने को जा रहा है मंत्रालय की तरफ से, जिसमें एकलव्य स्कूल्स हैं हमारे दूर दराज, कई जंगल्स में भी हैं वो स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, और कई सारे प्राइवेट स्कूल्स. 17, 18, 19 को बाल भवन में बहुत अच्छा एक विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स. Now, school safety, I'll just take about 3 minutes. I don't want to stall the proceedings because I know you people are absolutely on the job for a wonderful change-making ideology. Safety की बात केवल हमारे देश में जब स्कूल सेफ्टी की बात होती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन बातों से जुड़ा हुआ रह गया था. First time after COVID-19, we came across a discussion where the students of India were involved. I'm telling you the history of how this particular topic, safe schools, became a holistic approach, जहाँ संपूर्णता से काम किया जा रहा है. अब मानसिक सेफ्टी की बात जरूरी है क्या? साथ साथ मानसिक सेफ्टी है ना. अभी मीनाक्षी मैम से बात हो रही थी, आपको आज ही का पेपर अगर आप देख लें, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आज ही वापस जाके देखिएगा. The juvenile crime in the national capital, we are unfortunately famous and infamous as a national capital for the pollution and many other problems like traffic and all, but we were not aware that juvenile crime 18 साल से कम उम्र के बालकों की तरफ से जो गुनाह हैं, I'm not saying what type of crime, you please go and read. It is not only shocking, it is spine chilling. And we are all वरीड बिकॉज ये सेफ्टी का वातावरण जब स्कूल में होगा, फैमिली में होगा, समाज में होगा, तो स्कूल एक बेहतर मंदिर बनेगा, स्कूल एक बेहतर टेम्पल ऑफ लर्निंग बनेगा. सो द सेफ्टी पार्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग एनी कंसर्न्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर, विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर आवर कंट्री. नॉट ओनली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए आपके पास एफिलिएशन की गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, the building and the safety in terms of disaster or earthquake or fire or floods and all. Most important today is the mental health and behavioral safety. Today I want to tell you the last conglomeration of research in India. Today we are not dependent on any foreign powers for getting the data about India's children. So let's give a big hand to the government of India for having their own indigenous data कि हमारे बच्चों के लिए हमारी रिसर्च, हमारा एक्शन और हमारे सस्टेनेबल गोल्स. अदरवाइज आई रिमेंबर फ्रॉम 2003, मैम नोज, when we were working with the UN and the WHO, we had lot of support, but the data was coming only from the Western world कि इनके यहाँ पर बच्चों को ये अब्यूज़ होता है, ये ड्रग्स होता है. So we were only reflecting what was given to us by the world. Today we are proud that we have our own research to tell us what to do. Thanks to our social scientists. Yeah, thank you. And mind you, the credit goes to the principals and the teachers. And you made the final stroke by reaching out to 250 million children online after the COVID was declared. Nowhere else in the world it happened. You made life safe for them in the home. कि पढ़ाई की सेफ्टी भी रहेगी, माँ बाप के साथ भी रहोगे जब तक हम कोविड के साथ भिड़ते हैं. So you can imagine the pedagogy of India has been the soldier. The pedagogy of India has been the soldier for the safety and security, I would add, of our children. And the first ever, I take this opportunity thanking Dr. Pandey, the first ever guideline by the Ministry of Education, I'm telling you the date, 2nd October 2021.
It has come to your schools. Kindly go through it. Safety and security of schools in India. And first time उसमें mental health की safety पर जो आज यहाँ पे panel अभी बात कर रहा है, बहुत विस्तार रूप से आपको guideline दी गई हैं. Kindly ensure that every student is a recipient of that safety, because emotional behavioral safety, thanks to the type of bullying that happens, the abuse, various varieties, I'm not going to detail, and very importantly, anxiety, depression, psychosomatic problems, and of course, pressure about performance, placement later in life, the entrance exam, the whole dilemma about coaching and non-coaching and non-attending schools. I think we have all seen this and tried to get to know this better. But every child matters and no child is left behind because of emotional and social difficulties. ये मुद्दा मुझे लगता है कि हम कई बार बहुत सीरियसली ले नहीं पाते हैं, बिकॉज सेफ्टी हमारे लिए बड़े पैमाने पे डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज और बिल्डिंग की सेफ्टी में रह जाता है. काइंडली डू डिस्कस इट टुडे, एंड विद डॉक्टर उषाराम बीइंग एट द हेल्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, आई एम श्योर द टास्क फोर्स जो बैठेगा वही गाइडलाइन लेके बैठेंगे. और इसी के साथ साथ 22 में नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इन्हीं गाइडलाइन के साथ अपनी गाइडलाइन निकाली हैं जो हर स्कूल में अवेलेबल हैं. उसमें भी आपको ये बता दूं कि मेंटल हेल्थ सेफ्टी पर लास्ट ईयर एनसीईआरटी में हुआ था, विच आई हैड कन्वीन्ड, एंड इट वाज डिसाइडेड टू हैव रिव्यू ऑफ ऑल दी काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडियन स्कूल्स. तो सीबीएसई अपना कर रहा है, बोर्ड्स अपने कर रहे हैं, बाकी स्टेट बोर्ड्स, नवोदया का अभी शुरू हो गया, हमने स्टार्ट करा दिया है, एकलव्य स्कूल्स अभी बने हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी एज अ कंट्री. लेट मी टेल यू, 16 लाख स्कूल्स हैं आपके पास. कितने हैं? 16 लाख. इतने बच्चे नहीं हैं स्विट्जरलैंड में. वही है ना सर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य सारे प्रीएम श्री स्कूल्स में आ जाते हैं, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट ओवरऑल पीएमओ का भी मिल रहा है, and they are really of very good standard now. Many of these students coming from very difficult circumstances in life, जहाँ उन्होंने ऐसे ऑडिटोरियम में बैठने का तो सपना नहीं देखा होगा सर. तो आपसे निवेदन है कि कहीं पर सेफ्टी की जब बात आएगी ना, सेफ्टी की बात आएगी तो डेवलपमेंट की बात ही पीछे नहीं रहेगी. डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एनईपी बताता है हमारे लिए. पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नो मोर गेटिंग अ जॉब or qualifying IIT and NEET exams. Purpose of education is to ensure that every student who passes out of the school is a happy child, creating... Oh, thank you so much. Wow. I mean, Meenakshi ma'am, I can request you with this beautiful inverted triangle made by some students, and which I have submitted for the policy also. If you can help us to understand from your perspective, or both of you, Dr. Usharam took here, she is the task force. What do you understand by this, ma'am? This gives you a macrocosm, a bird's eye view. Yes, ma'am. Please tell us. So, an ecosystem framework for you. First of all, you caught me unawares. Yeah. Yeah. So, an ecosystem. Mahal, ecosystem, the entire environment of a school. Everybody involved in the school setup, all the stakeholders, the children, teachers, parents, the government, organizations, even the transport wala, everybody. So an ecosystem framework for mental health in schools. First of all, who is involved? Everybody is involved, actually speaking. The entire school community, school-wide promotion and prevention, students, teachers, capacity building, awareness people, counselors, teachers, peer educators. Peer educators are the children who teach each other. And the mentors. Mentors are also the children. Teachers, of course, are the mentors always, parents are, but children should also be involved into this process of mentoring each other. Counselor, nurses and other medical experts. Now, the doctors and nurses also come here. That's why I said all the stakeholders are part of the people who are involved into the mental health of the schools where our children are coming. Then we talk about what is to be spoken about and what are the kind of problems. We go from bottom to top. We follow the bottom-up approach. And here we say that severe problems. Now, severe problems are the ones which are visible, which are obvious, you know. We look at a child and we feel that
The child has some visual problem, a physical problem, not able to walk properly and things like those. So one is that severe problems and disorders. After that comes psychological problems. These are not visible. The root causes can be many. The help at home, the transport, the van wala bhaiya. It could be a child who's sitting next to me every day. So the list is endless. So psychological concerns and problems which are not visible to us. Then we have mental health knowledge, attitudes and behaviors. Here comes how much knowledge do we as teachers, as caregivers have, and mental health well-being comes at the top because it's the schools, the teachers, the principal, the management, everybody has a responsibility towards all these things, that the teachers are aware of how to handle these situations. There's no harm that we hold orientations for our van walas, bus walas, telling them about the POXO Act, etc., etc. And we tell everybody that how to diagnose, how to identify the problems. Then we come to the level of intervention. This is again very important. We must know where intervention is required, how is it required, what to do. Now this all has, the guidelines are there always, but sometimes we need to look into our gut feeling also. We need to just, with our experience, say कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है, and then with that gut feeling, we move forward to identify problem kahan hai. This is basically about the mental health. I just take a minute here. Yes. Very important part for all the caretakers and caregivers in the schools. I think today the Government of India Ministry is grappling with 2 pointers here. This is the point where the transition happens. For example, इसका पैरेलल आप पोलियो से ले लीजिए. पोलियो डिटेक्ट हुआ नहीं, लेकिन लेवल 4 पे आके उसके लक्षण दिखाई दे गए. अगर मानसिकता का या मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, हम सबको होते हैं, रोज़ होते हैं, आज भी होंगे सवेरे ट्रैफिक में आते आते. What we are missing out is the advocacy level of intervention and who are involved. So level 1 is creating a mahal, ecosystem where each parent, family are partners with the school according to NEP. Level 2 पे वो attitude बन जाता है फिर कि हम सबको एक mutual atmosphere के साथ नज़रिया भी बनाना है mental health का. जो पहले level 3 is supposed to be about 35%, keep it in mind. Problems जो थोड़े visible होना शुरू हो जाते हैं. हमारे देश में प्रॉब्लम ये हुई थी कि अगर आप एडोलेसेंस ही ले लें, वी आर 31 करोड़ ऑफ एडोलेसेंस जो बच्चे आज यहाँ पे हैं आपके साथ, 10 to 19 years. The severe disorders are multiplying. Post COVID it has gone up by 3 times. Today morning we saw, आज भी डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग आप जानते हैं तरह तरह की जो होती है. इन दी OPD एज अ साइकियाट्रिस्ट आई सी देम एवरी डे, बट वी आर हेल्पलेस, लेट मी टेल यू. सो द लेवल 4 को बचाना है, उसके आंकड़े कम करने हैं, तो लेवल 1-2 पे स्कूल्स बड़े आराम से मेहनत कर सकते हैं, मोर कॉन्क्रीट वे में एल्मनाक बना सकते हैं, पूरा साल का कैलेंडर बन सकता है. पॉलिसी फ्रॉम PhD chambers, policy from the government is what advocates at level 1 and 2. You work with level 3 with the help of counselors, peer educators, mentors, as ma'am said. The last part is one thing which schools cannot manage. How is it possible for schools to manage? दिल्ली के आप इंसिडेंट सुन चुके हैं, अभी आपने देखा 2 हफ्ते पहले. How is it possible to manage level 4? A school is not an ICU, a school is not a hospital, a school is not a clinic. So the principals obviously go through a very harrowing time trying to minimize the need to reach level 4. But आंकड़े बताते हैं कि 3 गुना ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासकर 10 साल से 18 साल के बीच के. Kindly discuss that. मिनिमाइज करने के लिए होमवर्क लेवल 1, 2, 3 पे चाहिए, जो आप स्कूल में आराम से कर सकते हैं. SOPs बने हुए हैं, मोडालिटीज़ और आ सकती हैं. दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस वर्कशॉप टुडे. हाउ सेफ्टी कैन बी अ कम्युनिटी हैंड फ्रॉम लेवल 1 to 3 so that the health providers, the tertiary care people, the targeted severe intervention can be minimized.
And this is what the family school partnership is all about. Do we have the next one? Bas ek hi hai. I will also tell you about this. The Mind Smart program, which actually is now countrywide, it is basically about building peer educators' leadership. Many of you here, I can see our principals here. This is one program, many are there, और भी बहुत होंगे, but please करिए. Dr. Usha Ram has been part of this program, Meenakshi ma'am, and all of you for so many years. It basically helps the young people to become well-being ambassadors or safety ambassadors for their school. You did mention? Fantastic. So, involve students. I think the one line I remember from NEP 2020 is, the ownership of education lies with the beneficiary, the student. If the child is the owner of transformation, engaging, equitable, enjoyable, empowering education, तो बच्चों को हम क्यों नहीं उसमें इन्वॉल्व करें? और ये टाइटल बच्चों ने दिया था, Mind Smart. Let me be mind smart also, apart from body smart and look smart. So these are outlines which, next one sir, we have the last one. यही है ना? Yeah, please. Sir, please. Yeah, I finished, so please, you can have quick comments. I'm sure the panel is waiting for the next one. Please have your suggestions. वहीं से होगा. Of course. Can we come back to the previous? मैम इनके कंसर्न्स आएंगे इसमें. अब देखिए ना, लेवल 3 पे इनके कंसर्न्स आएंगे. और कौन कहता है कि काउंसलर को काउंसलर की जरूरत नहीं है? I think all counselors need a counselor. So teachers का primary support उनके अपने emotions और behavior के लिए. I would say SEL for teachers, social emotional learning for teachers. Why are we forgetting? We have the largest teacher resource in the world. I believe it was 1 crore at COVID time. 90 lakh teachers कहाँ हैं बताइए? हो सकता है चाइना में होंगे, लेकिन अब हम उनसे आगे आ गए हैं आंकड़ों में भी. So our teachers are the most wonderful mentors in the world. So you need to actually take care of them. And not in a lighter way, I'm very seriously telling you, I know of about 12 teachers who are taking antidepressant from me. And by the way, on a lighter note, PTM से पहले दवाई ज़्यादा खाते हैं. आप बताइए क्यों? मीनाक्षी मैम, क्यों ऐसा होता है कि टीचर्स को PTM नाइटमेयर लगता है? Because they get bullied in the PTM. I can vouch for this because I have recorded in their histories when they come. They're crying in front of us. And principal says, Dr. Nagpal, take care of this girl. She's very good for us. But the parent bullied her during the PTM. Any evidence for that, ma'am? Yes. हम क्यों नहीं उनकी मानसिकता का ध्यान रख रहे हैं? I want those principals, sorry to say, demanding, I want those principals who can vouch and say, you dare talk to my teachers in a rude manner. We do that. We do that. But who's protecting the principals? The Lord. Good one. No, I fully empathize, ma'am. Given a opportunity, I think the toughest job today is the principal's job. I can tell you that. Because not only you are aware, your knowledge and your skill has to be world class, because you have to not only manage people, you have to manage yourself. And principal's chamber, I know, principal's chamber, lot of principals, when I interact with them, they say that they have sorted out many marriages in their chamber. Why? Because principals are such wonderful therapists, because active listening, जो माँ बाप उनके चैम्बर में बैठ के अपनी कहानी बताते हैं, लड़ते हैं, ये कहानियाँ बहुत सारी हैं. But hats off and accolades for all the principals for gearing up from a educational coach to a life coach. Today you are a life coach. And that's where I completely agree, ma'am. Your safety, one example, there are some, I went to Bombay, Hyderabad recently. There are certain codes of conduct being made, and which is okay as we are evolving in a society. There are codes of conduct which during admission time the parents also sign up for their own patterns of behavior when they are on the campus, their own language, their own decorum, or maybe the aura they carry in the school, even if they are VIP families, while coming for PTM. I think those codes of conduct some schools have started. And right at the beginning, why not do it? So I think... Huh? You're doing it.
Fantastic. So you'll have more to hear from our principals here. So thank you so much. I think the idea was to generate a thought, a movement, that mental health is not just about mental health. It's about the way we look at life together, and school is the best platform for young people to grow and principals, teachers and families to develop. NEP says that. Thank you so much. Unless anybody has got a experiential sharing, please. Sir. ओके राइट सर बिल्कुल कवर होगा आप सर देखिए कहीं पर भी ये तो पॉसिबल ही नहीं है दो एक ट्विन ब्रदर सिस्टर्स भी होंगे या ब्रदर्स या सिस्टर्स होंगे तो वो उनकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होगी कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता है 40 बच्चे 40 पैटर्न में हैं लेकिन हाँ करिकुलम एक है एज अप्रोप्रिएट है टीचर्स हार्मोनाइज डाइवर्सिटी इन लर्निंग you've got flip methods also flip classrooms also why not look at first understanding ke it's not about kitabi knowledge going into the brain of a child it's about my ecosystem within me and the ecosystem outside me am I comfortable in the school and the class am I happy in the school and the class I think ye part hum log us daud mein kai baar piche chhod aaye hain so differential learning disability wali learning क्यों ना हर स्कूल में होगी हर जगह पे होगी आई थिंक उषा मैम रिमेंबर व्हेन यू हैड द स्पेशल सेंटर मीनाक्षी मैम हैज़ ऑल ऑफ यू आई एज मच एज आई नो आपके इंक्लूसिव स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि केवल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी आएँ क्योंकि वो डिसेबिलिटी उनकी एक एबिलिटी है काबिलियत है वो भी हम उसको टैप करना सीखेंगे agreed with you that children who are from special circumstances whether social economical or coming from families where dads and moms are posted away from the town, they are alone, staying with their relatives, वो बच्चे भी तो हैं in specific learning disability is part of the 21 disabilities under the PWD Act. Kindly ensure that teachers, खासकर आपके primary teachers के लिए ये orientations बहुत ज़रूरी हैं. Of course, I have not been able to touch upon the child rights के violations जो पॉक्सो का केस तो आपने कल पेपर में पढ़ा, right? Peer to peer violations. It's not about bade or chote. Peer to peer violations, graffiti in the washroom, things written on the wall. These are not uncommon at all anymore. So I think life skills और mental health को जोड़ के mental health तो outcome है, life skills उसका medium है. I think a lot of us can do a lot of work. I'm sure this is a beginning under the aegis of the PhD house and congratulations to all of you for being here and being awarded also. We'll work upon this together whenever called upon. I'm always there on behalf of the government. Thank you. Thank you, sir, for bringing such depth and direction to the conversation on school safety. Your guidance empowers us to take action where it matters the most in the lives of our children. May I now request Rupesh Pandey-ji, Secretary, PhD Chambers of Commerce and Industry, to felicitate sir with a memento. Thank you, sir. Thank you. Thank you. When life says plot twist, schools must already know their lines. With that thought, we move forward to our next panel discussion on disaster management, safety and policy deliberations. We are delighted to introduce our moderator for this session, Oshima Mathur ma'am, Principal, Navy Children's School, Delhi, an inspiring academic leader with over 30 years of experience in shaping young minds and strengthening school systems. Ma'am is a recognized CBSE resource person and has frequently been invited as a speaker and panelist on contemporary educational themes. Ma'am has guided certification programs for educators on the National Curriculum Framework and continues to promote innovation that prepares students for life beyond the classroom.
Her impactful leadership has earned numerous acknowledgements, including Global Principles Award, Global Human Rights Protection Award, Outstanding Leadership in Education Award, Excellence in Education Award, Black Swan Award for Excellence in Education, Education Icon of the Year Award, Outstanding School Principal of the Year Award, and I think the list goes on, ma'am. I can't mention all of them. Ma'am, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mrs. Oshima Mathur, moderator for this session. May I also request the pleasure of inviting distinguished speakers for this session. Dr. Pankaj KP Shreyeskar, Deputy General, Department of School Education, Ministry of Education, Government of India. We welcome you, sir. Mrs. Swati Sharma, Principal, SM Arya Public School, Punjabi Bagh. Ms. Meenakshi Kushwaha, Principal, Birla Vidya Niketan. Shri R.C. Sharma, former Director, Delhi Fire Services. And Ms. Kirti, Manager, Safety and Manufacturer Association. Thank you. Over to you, ma'am. A very good afternoon to this august gathering. And first and foremost, and very important, a heartfelt thanks to PhD CCI for taking up this very, very important topic in today's world, where each and every child of ours has to be safe. When the parents drop the child at the gates of the school, we tell them, now your child is with us and we are responsible for him or her. The parent drops the child with this trust in us कि 6 घंटे बाद मेरा बच्चा ठीक मिलेगा. And if because of any, nobody does it deliberately, because of any laxity at any place, unknowingly, the child gets hurt in some way, whether psychologically or physically, the onus is on us. We have to take full responsibility. So I have a very, very distinguished panel alongside of me, and we will deliberate as to what should be done so that 0% chances of any mishap happens. Okay? To my left, we have Dr. Pankaj KP Shreyeskar, Deputy Director General, Department of School Education, Ministry of Education, Government of India. He is a renowned author. He is also very, very passionate into the matters related to school education. Welcome, sir. Thank you. Thank you, madam. I have on my right, Shri R.C. Sharma, former Director, Delhi Fire Services. He is the Professor of Practice in University School of Fire Industry, Industrial Safety, GGS, IPU. Next we have Mrs. Meenakshi Kushwaha, Principal, Birla Vidya Niketan. Just to cut it short, she is a renowned CBSE resource person and state teacher awardee. I also have Mrs. Swati Sharma, Principal, SM Arya Public School, Punjabi Bagh, an awardee of Ambassador 2023 Save Girl Child. We have a very young manager from the industry, Ms. Kirti. She is the manager from Sama. I welcome everyone. So the first question goes to Dr. Pankaj KP Shreyeskar. So sir, your take on the child safety. First of all, I must thank PhD CCI and also congratulate on this occasion to have organized this session on such a diverse issue, and where almost each one of us has certain opinion about the school education, because education is something which touches upon each one of us every day,
And therefore, it is both a challenge as also an opportunity, where you get hundreds of the suggestions almost every day, because they are the one who actually are living the life, either as a parent or the student themselves, or as a teacher, or as a fraternity, and the ecosystem which has been spoken about. Easier said than done. Safety, security is essentially a pivotal element of any educational system. And I'm really impressed that the speaker before this panel, I was not aware of him as to who he was, but I could make sense that he was quite a popular speaker, as also perhaps a popular practitioner. I was happy to receive the note which he mentioned that most of the things are actually drawn about the safety parameters based on certain data sets. And let me share with you that I am the one who is the owner and the producer and the monitoring administrator of the data insofar as the school education in the country is concerned. And no, that's not that's not something which I have earned. It is just a distribution of the work in allocation of business in the government. Nevertheless, I just wanted to mention a few things as the moderator has raised a question. So it is very inextricable part of school education. And why school education? Almost everywhere, safe environment is absolutely inextricable element of the human lives. The second element which you brought in is the trust. So I personally believe that such matters arises lots of because of the mishap, as also because of the trust deficit that is being created either between the teachers and the students, teachers and the teachers, students and the students. So these are the broad three interaction which ordinarily takes place in any school or any educational institutions per se. I therefore wish that mental health and mental well-being is something which people have started talking about, not only talking about, they have started practicing a lot, and a lot of work has been done. But again, some of my expositions are indeed my personal, and I believe that even though we are talking about the mental health being, but perhaps we have started not really understanding as to when does it become a mental issue and when does it become a controlled mental issues. So I think these are certain hairline differences which we must start not only about distinguishing, but also about ensuring that the moment it happens, there should be certain norms and parameters which gives us certain signal that now I am crossing that boundary, whether it is the student, whether it is the teacher, and very well said that who will take care of the principals. So madam, these are occupational hazard. So since you are the principal, you will have to take care of yourself, and of course, as has been stated, then there is somebody else who will take care of you as well. Now coming back to one very important point which I wish that we should now start working about the safety parameters should be data driven now. Since I can throw a little light on that, so I wish that of course it cannot be left open only to the school, but also to the administrator and the educational administrator. And what could this be is that let us start triangulating the available data sets around the school. In the previous slides, which was presented at the level 4, when you see that things becomes very, very difficult for the school, then what should you do and how should you handle these parameters? Because after all, you are not a doctor, you are not an expert per se in that area. How should you address this issue? It is here that I wish to bring it to your kind consideration, the issues in relation to, say, there is PM Gati Shakti. So in PM Gati Shakti, there are various layers of information which is shared already, which means in a particular geography, what are the infrastructure which is available? What is the density of, say,
fire institutions which are available there? What are the density of the hospitals which are available there? What are the density of other paraphernalia which may be relevant and important under these circumstances which are available? Then on the other hand, the school data directory that we administer, and I'm sure each one of you must be knowing about what is called UDICE Plus, which you keep on filling, and probably you also must be finding a person who is responsible for it. So if you have to say something, it's me, you can tell me the problem. So there are relevant parameters which are present while you report. So it may appear prima facie that it is quite a burden insofar as reporting, but you look at no, are you saying yes, it's a burden, or you are supporting my further point of view? And that is further point of view is that please make use of that resource that you are yourself creators of. Try and analyze these data sets, collate it with the PM Gati Shakti in terms of the availability of the resources in the surroundings, and then find out the short routes which probably would be required in such an eventuality if at all it arises. And third element is that please analyze, which I always will insist upon, data triangulation. When you start doing data triangulation, please capture the kind of data that you have generated in any kind of system. I'm not only very fancy about my own data sets, as many data sets that you have, but in terms of the disaster management and in all kind of management of the issues that you can make use of these data sets. Please make use of these data sets while making decisions as to if these are the things that are being reported about this particular geography, and in certain eventualities when this matter comes to your fore, how should you play with these data sets to take quick and data-driven decisions. With this, I would like to bring it close at this juncture. Thank you. Thank you, madam. This is yours. Thank you, Dr. Shreskar, and very, very important insights. Basically, ours is a very opinionated society. We all know about it. Whether it's the field of education or it's the field of medicine. कोई बीमार हुआ, हर कोई पहुंच जाएगा, डॉक्टर को भी बताते हैं क्या दवाई खानी है. So even in the field of education, everybody knows everything. But now is the time where data triangulation has to happen. We must talk with facts and figures. We must know it's not a general thing happening. We have to be particular as to this is the cause, this is the remedy, and this is the process. And these are the recipes. So we have to be very, very careful about all of it. Now, sir, you take care of UDICE. I'm one of the few very, very happy people about UDICE, because from your office, team of three people came twice to our school to guide us. So I am not one of the ones who have been troubled by UDICE. So thank you so much. Now I would direct my question to Shri R.C. Sharma. Sir, in your perspective, what are the most common fire safety gaps that you see in schools these days? Thank you. I again thank PhD CCI that I'm given an opportunity here to speak about this school teachers. I mean, there's something which basically is, we have gone through that, came all through the schools. We know that how things are happening there and how we respect the teachers as such, how much they can do for the students, how much trust students have got in their teachers. About the safety, there are two things probably. One is that about the buildings. I think students and all that, they can't do much. It is only how the building is planned, designed. Something goes wrong, how they are going to, what are the facilities available there. Apparently, I don't find the school design, that's a very safe design. The government school, we have come through, we have got rows of rooms and then classrooms and then a corridor in front of it. If it's an open corridor, there is no problem that people are going to die in a school like this if there is a fire incident. So I never envisage anything like that happening in a school. Though we had some incidents in the schools, like Kumbakonam was the first in Tamil Nadu where it happened. And then there was a committee and they gave a lot of recommendations. And we ended up having so many unnecessary recommendations, we had to
comply, most of them, using a fire retardant thing on the desk, bench. It never happens. It's never, you can't set fire to a school, maybe a wooden desk or bench. So that sort of thing is never possible. So we don't see sometimes in the reality what is going to happen. By looking at the facility there, I don't find any big problem for the fire safety in the school is concerned, except the areas where we do have some hazards. That could be laboratories, that could be some kitchen or something. We are having maybe LPG burner, for that we are having a gas supply in the laboratories, physics or chemistry lab, some chemicals are there, some other. So that could be the area where we have to just pay an attention to that, and we have to be careful. The only thing which I'm worried about is the schools which are having centrally air conditioned systems. There is the problem. It can be a big problem because we have seen that most of the people, they die only due to smoke, not by fire. Upar incident is all of us must have heard. Incidentally, I was heading the fire fighting and rescue team. I know that people died because they didn't have a openable window behind the balcony. It was all a glass facade, a building which was having a centrally air conditioned building, and everything was sealed. If it was an openable window, nobody would have died probably there. The smoke could have gone out, and there's some smoke venting facility which was there in the building, in the cinema hall, that was not put to work because everything was on the DG set, and when they came to know there is a fire, the DG set also was switched off. So nothing was working. So sometimes this happens. Now it boils down to, it's a big issue we can discuss separately, but only thing which I want to highlight here is that awareness. In our schools, whatever is the hazardous area, and how we deal with that, we should know about it. How much time we do have to get out and all that. Now another thing which I want to point out is the awareness. Our knowledge or information about if there is something, a fire incident, what we do. We had a fire 2 days ago in Goa, that club. If you see the footage, CCTV footage is available now, how the fire started. They are having a firework inside on the stage, and just the sparkles there hitting the ceiling, which is flammable, and that caught fire. And you see the reaction of the people. They are not reacting the way they should react. If there is a fire in the ceiling, they are very slow in reaction. So now, we talk about the fire alarm systems. If we get an alarm, how to react. Here, there are 100 plus, maybe more than that people there available. They are awake, they are watching something, and they came to know something goes wrong. Instantly they get to know. Then still we had about 25 deaths. Now this is what it means, that we should be knowing about the means of escape, that's importance. And then for such areas, because if there is a flammable things used inside, then we had it. We can't do much about it. And if that is available and we are we are using a fireworks inside, where we are inviting this problem. So now we have to be aware of these things. If we are doing something, what can go wrong? So that is what awareness in our house, in our surrounding. In our house, we are using LPG. If it leaks, what we are supposed to do? Not switch off the light or switch on the light, because a spark can cause an explosion if gases leak. No, this is simple awareness. So my basic thing is that we should know about our surroundings, maybe school, maybe a hotel, maybe hospital, maybe wherever we go. So we could be a patient. I got a 1/22 CCTV footage of a hospital in COVID times. 5 patients and 4 doctors, 9:45 sometime it happens. And they were able to get them out. There was a fire was in a ventilator machine. I've given it to many of the hospitals especially, because what is the role of the doctors? If you talk to them normally, what is your role? They will say, sir, I will take care of the patients. About firefighting or rescue, sir, there is a team, we have got a well-laid evacuation plan, and their every role is allocated. But these 4 people did everything. They fought the fire, they removed all the patient, and they started immediately. 80 seconds fire started, and everybody was out. But by the time, how was the situation there? No, that's what we talk about. In case of fire, how we will get out? How much time do we have? What we get, our knowledge is from the films, which is all fake. If there is a fire, you can't see a person. It's all smoke filled in the room. You can't, locate even where the seat of fire. So if that is the situation, but you see there is a heroine is caught and the hero is jumping and it's not feasible. So our knowledge, this is very wrong. So now thing is, what I suggest here is that we create certain things which are visible, maybe CCTV footage of the real incidents of different areas. And we show to the kids, maybe, school children, maybe about 6th, 7th, 8th, so that they understand really
how the things are happening. And if they get to know, then there is no special training required for that. I think in the beginning, this is what I wanted to have. Thank you very much. Thank you, sir. Very, very pertinent questions and answers. And the important point is that each person, whether it's a child or an adult, we are all responsible for our own safety. And that will happen only when we are aware. So awareness, and as educators, it's our job, it's our duty, it's our moral responsibility to spread awareness as much as possible. हम भी करते हैं workshop, सबको बुलाते हैं, लेकिन this showing the film is a beautiful idea because our children are so, they are so caught up with that hero worshipping thing कि शाहरुख खान ने अगर किसी हीरोइन को बचाया तो वैसे ही है. सर की बात बिल्कुल ठीक है, अंधेरा होता है भाई, स्मोक में दिखता ही नहीं है कुछ, सांस नहीं आता है. So these are the reality we all must, and it's our responsibility to teach these children that in reality this is what happens and this is what you should do, and nobody will come to rescue you. You have to be responsible for yourself. You have to rescue yourself. First अपना सामान की जिम्मेवार खुद बनिए और उसके बाद बाकियों की मदद कीजिए, जो कि हर जगह सिखाया जाता है. So sir, this brings me to another question. Suppose a disaster has happened. Suppose कहीं आग लग गई, कुछ और हो गया. तो what, Meenakshi ma'am, the question is to you. So after a disaster, what emotional and behavioral changes do you commonly see in students, and how does your school identify children who may need extra support? Because there are CWSN children, there are all kinds of children, there are smaller children. So what should we all do that no harm goes to anybody? Thank you. And this is a very relevant question, though we pray that this situation never arise. We always pray, we have our systems in place with a prayer that, oh God, never should these be used. But then preparedness is very important, and God forbid anything happens. Post the incidents, there are things which need to be kept into mind. Of course, the preparedness for such things is one thing. So now we are talking of post the incidents. There are children who are CWSN, and maybe they've brought down in the ground with the help of some other children who were prepared that this child can't walk, how to take him or her down along with you. And this child is shattered because one is that emotional burden on him or her that these two children who brought me down were in a form of danger themselves, but they helped. And of course this feeling that main bach gaya ya bach gayi. Lot of emotional things crop up. Some children are cool about it. उन्हें तो मज़ा आता है. वो ground में भी जब बाहर accumulate होते हैं, they've taken it all very cool and they're enjoying. This will happen in spite of lot of mock drills, lot of preparedness already being done. But this will happen. This is part of the community, okay. And there are some who are crying. There are some who are unable to speak up because it was so shocking for them, because they've just escaped a narrow death. That's what comes into their mind. The depression, not able to speak up, crying, all these are symptoms, but some systems do go unnoticed also. I have seen that children have started bedwetting after this. I mean, it's quite shocking कि ऐसा कैसे है, but the trauma has seeped in so much कि एक अच्छा भला बच्चा 7-8-10 साल का जो बिल्कुल नॉर्मल था और वो bedwetting start करी है रात में उसने सोते सोते. So this is one of the symptoms. Parents have to be kept into loop that in case they notice anything which is unusual, which never happened, bring it into our notice. If the teachers, of course teachers have to be the first counselors. They must be able to identify the changes which have come up in children.
I know there was a child who started talking so much. Unconsciously, he was talking about everything. The counselor realized that the scar was so deep into his mind that he feels कि मैं जितना बोल लूँ. So the teachers have to be very well prepared to identify the changes that have come up. Poor academic performance could be one thing which comes after any incidents like this. Then bedwetting, I said so. रात में बच्चों को कई बार बुखार आना शुरू हो जाता है. Sometimes these scars continue till around 6 months, after 6 months also. So the counselors have to be very well trained to handle. The counselors of the school have to teach other teachers also that these are the red flags that you must be vigilant about. Note them, bring into your the notice. There should be referral forms which anybody, even children, should be allowed to fill up those referral forms for themselves, that I am noticing this change. This is the anxiety in me which has cropped up now. I feel insecure. And कई बार हम देखते हैं stories वगैरह में बच्चों को यमराज दिखने शुरू हो जाते हैं, because they've seen all this and it is there in their mind. So all these kind of, hallucinations, fears do crop. Fear of death, fear of separation from parents. I read it somewhere कि एक बच्चे को ये डर लगने लगा कि अगर मेरे पापा मम्मा के साथ ऐसा हो जाए तो मैं अकेला रह जाऊंगा. So the list is endless. I feel that the schools have to be very well prepared. The counselors have to prepare the teachers. Even the children should be trained to look into these things amongst each other कि कुछ कहीं red flag है तो वो उसको at least quote करें and these can be plugged in. So these are psychological changes, behavioral changes which might come up in many children. They have to be noticed timely and plugged in also. Thank you. Thank you, Meenakshi ma'am. Very beautiful, very, very apt insights. So we all have to be careful. It may sound to be a very small thing, but a buddy system is a must. The SOPs have to be followed. The mock drills have to be, they are not a game. When we are doing a drill, it should not come across as a mock drill. It is as if a real threat is happening. So in all seriousness, everything has to be done, and at the end of it, a brief meeting has to be conducted where did we falter, how do we not do it next time, and how much time did we take to evacuate the school. It's a must, I believe. Again, counselors, teachers, parents, children, all have to be on board as a team. One size fits all. Gone are those days. Each child behaves in a different manner. After, the reaction is different. Like Meenakshi ma'am cited so many incidents, so many examples. Each child behaves differently. And each child is important to us. Very, very important to us. So his needs or her needs are different. We have to cater to those needs. So, and our teachers are really equipped. They are very, these days I think the most compassionate profession is teaching profession. And our teachers are, they go out of the way. Raat ko 8 baje bhi, they are ready to help out a child, not just from home, but reaching the school and helping without asking. So what else can we be asking for? It's just that we have to be noticing any deviations anywhere and taking care of them, plugging those loopholes. So my next question is to Ms. Kirti now. So from the industry perspective, what role does, how school safety needs to be aligned with because see, industry has been very, very vigilant about the safety. It has always been. You people are ahead of us.
I mean, I remember when we visited one of the industries, we were told nobody will put their hands in their pocket. It was strange to me. I said, well, how does it make a difference to him? But these are small things, but these are very, very important things. So industry takes a precedence than the schools. For schools, it's a different new world. We have just come across so many things that are happening, so we have suddenly woken up to this idea. But you people, being in that thick of things, what are your insights which can be easily used up, as well as they'll be a great help to the schools? Thank you so much for letting me sit here on the dais, and to the committee of PhD CCI for giving me this chance. And it is indeed a very nice question you asked, ma'am. Thank you. I wanted to just say that if we see the industry perspective, we should consider, from the perspective, we always consider that our laborers, our employees, they should be considered and surrounded by the safety first. So it is not just about the laborers or the employees who are working with us. We also, for example, when we started this conversation in the beginning with the PhD CCI, we did not know that we will have a roundtable meeting with the principals. You were also there, right? So, and at that time also we did not know we will have this summit. We did not have that idea. So at that moment also we were considering how we can combine industry with the students also, because these students have to go in the industry. They have to do the jobs or businesses, or have to do certain activities in the future. And currently also, as we know, as we see, a lot of employees and laborers, they do not follow basic safety standards, even if they are working in the factories, in the office or anywhere. They are more like, nothing will happen, it's just 5 minutes of distance, it's just 2 minutes of work, everything will be fine. But when it comes to students, we consider that when we let them learn about the importance of safety, they will carry that safety and the importance of it to the next 50 years of their lives. And it will improve not only them and their lives also, it will also impact other people also who will be connected to them, whether it is their family, it is their laborers if they will do the business, and even if they're employees. Once they will understand how safety is important, if it will be in their blood, if they know how to react without any hesitation, without any fear, they can lead actually. And such as a lot of incidents have already been mentioned, a lot of lives ended in those incidents. Maybe those could have been prevented if they know what to do. If they have took the correct measures, activities or any actions, they could have been prevented. There are high chances, may not be 100% but high chances. But that's a very sorrowful thing that happened, but still, if they would have learned, if they will learn from the beginning, and if they will, as we can see, children are very active when it comes to learning safety and doing new activities, whether it is drills, evacuation plans or anything. So it is like we wanted to build them from the beginning, and it will directly impact the industry also in future. We are not considering current impact on the industry, but we are considering the future impact on the industry, so that if anyone will go in any field, they know what to do, in spite of the fact, okay, if we will do this, then this will happen, we have to be scared, we will get burned, we will maybe lose something, any arm or anything. No, we want them to be prepared fully. That's all. Thank you. Thank you, Kirti ma'am. Beautifully said. In fact, we all as a society have to develop the culture of safety, which is paramount in all respects. Another thing is, school education is about habit forming. And if we inculcate those habits into our children, all of them, all these risks, man-made especially, are avoidable. So if we take precaution, we are all safe, our children are safe, the entire country is safe. So just to wind up, one-liner from each, please. Sir. Oh, thank you. I think, as Mr. Sharma was also mentioning, that awareness is indeed a very, very critical element of this.
So I believe that we should start, among others, discussing these matters not only with the students but also with the school management committee, where there are representatives from the parents, and you start talking. And again, I would mention, on the risk of being slightly difficult place to mention this, to be very transparent about the weaknesses that an institution has. In terms of the structure of the building, in terms of the audits that has been conducted regularly. Ultimately, as you have mentioned, which I really liked ab initio, is that when you mentioned that it is a trust that parents leave their children in the school, so that trust deficit should not happen, and you have an extra burden to carry, among others, the trust burden as well. So just keep on discussing, remain transparent, and keep on discussing as much as what are the loopholes and where are we at weaker stances. Thank you so much. So half a sentence is, audit से घबराना नहीं है, audits हमारी help के लिए हैं. कल कोई eventuality हुई तो audit में जो observations आए थे वही काम आएंगे. So let's take that. This is a big takeaway, sir. Just last 2 points I just came in my mind. One was the mock drill. I think mock drill should be done with the available resources in the school. We do have a hose reel and whatever is there. I think that's one of the best equipment we can use, we can put to use. Rather, we should use it regularly, maybe once in a month at least. I have been rather propagating that even it can be used for your throwing water into the trees and maybe in the environment problem and all that. So we'll see that how it works. The chowkidar, our caretakers, our security people, they will be knowing how to use these things in case. And most of the time they are there. I mean, we are there in the 5 or 6 hours in the school, maybe 7, 8 hours, but rest of the time they are there. If something goes wrong afterwards, then they should be able to do it. So using those things which is available there, and not to do too much of drama by calling fire brigade and big ladders which are not available with us. We can use them to show something that something works like that, but not as a part of the mock drill. So mock drill should be within our resources which is available in the school. Fire extinguishers available there, how to use them, we can operate them and all that. Next was very important for all of us is, if there is a fire in any electrical equipment in our houses, in our school, and maybe anywhere else, if we are able to switch off the power supply, I think 99% things they will subside immediately. So long as electricity is on, there will be a lot of sparking, a lot of flash, a lot of spread of fire will be very fast. But if we are able to switch it off, maybe anything in our house or anywhere, then 90% at least it will go off immediately. Then we can use even water because power supply is off. Otherwise we don't use water, that is another thing. How to use, what not to use, a different thing. During our mock drills, or maybe that we can tell some of the people, they can demonstrate, they can tell why and what to be used, what not to be used. That could be there. So thank you very much. Thank you, sir. So, 40 साल पहले एक फिजिक्स टीचर ने सिखाया था कि एक्सपेरिमेंट कभी भी सबके सामने नहीं करना है, पहले एक बार हो चुका होना चाहिए. तो ये नहीं हो कि फायर हो जाए और हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब नहीं चलेगा वो. उससे पहले ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए हर महीने. क्यों सर? जी, मिसेस खुशवाहा प्लीज. Thank you once again. So, I would just like to conclude with the statement that there are enough guidelines for us. And those guidelines have been created over the years with various experiences. कुछ होता है तो उसकी जो हम रिव्यू करते हैं उसके बेसिस पे guidelines आती हैं. So we shouldn't get irritated when those guidelines come, but we should feel blessed that they have come and they are kind of ready reckoners for us to prepare us for such things. Secondly, I would say that parents, school children and parents, they are the stakeholders of the school, and involve parents into finding out gaps. Ask them to do surprise checks in your school so that when someone comes, हम तो जो रोज कर रहे हैं हम उतना ही देख रहे हैं और हमको सब परफेक्ट दिखता है, पर अगर पेरेंट्स आकर के एक अपने नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, so we get a kind of outside opinion that how well prepared are we, what are the gaps. So encourage parents to barge into your system and do some kind of surprise checks and point out those things
May I have some silence at the back, please? Thank you. So parents को आप लोग ज़रूर involve करिए, क्योंकि उनका बच्चा वहाँ है, वो एक बहुत अच्छे से देखेंगे, system को evaluate करेंगे, and they will bring out the gaps which we are not able to look into otherwise. Don't take parents as outsiders कि आएंगे तो तंग करेंगे हमें. No, involve them. This is something that works, and we should always take their help. Don't consider them as outsiders. Wonderfully said, ma'am. Safety rounds once a month is a must. Aye. Thank you. As we have the opportunity and resources, let's work together and invest in the safety for the future generation. And because preparedness is better than negligence. Thank you. So basically we have talked, thank you so much, we have talked about safety of all kinds. And we are very fortunate that Mr. Dugal is here with us to talk about the cyber security, the digital security, which is the which has maximum threat these days. So sir, I'm so sorry I didn't even let you reach the stage and I have posed my question already. Please tell us something about the cyber safety and the threat it poses in today's society. I think your students today are far more ahead than you teachers and principals. And with now use of AI, you'll have to tighten your belts even more. Why? Because students are now using black AI. Now you're thinking, what's narrow AI, what's black AI? Now, AI is having different manifestations. The latest survey from Harvard tells us that AI is capable of hitting you below the belt, is capable of arm twisting you. And if you think AI is going to be a loyal servant, you are mistaken. AI is here to disrupt, not just life, but everything. I've recently written a book called Regulating AI Vortex, the Dugal Doctrine, where I've said AI is like a vortex. It's sucking everything in, it's transforming everything out. And I think education system is going to be changing the most in the next 12 to 18 months. I'm not even giving 2 years. Why? Because today all your homeworks, tutorials, projects are all done on ChatGPTs. You have the tools, but how do you deal with humanizers? Humanizers are those tools which are used by users to convert AI-generated content into human-generated content, so that the program is incapable of recognizing whether the said AI content is indeed AI or is written by a human. So you're going to be more foxed, and I'll have a request to make to you, which is, don't be harsh to your students. You just don't know when, where, how they'll use AI against you. For purposes of generating content, which could be defamatory, can put your entire reputation in tatters in just about a few minutes or a few hours. And I think AI is beginning to create fear. And I want us to understand that fear. I'm not saying please go to Himalayas and forget about the paradigm. No, that paradigm is here to stay. Now the problem is, recently, in one of the schools outside Delhi, the students in class 11th were able to use deepfake for the purposes of creating obscene and erotic videos of all the girls in the school. And then every day, one particular video was being released to saying the highlight of the day. So wait on for the next video, wait on for this, so-and-so is getting featured. That's not just going to be limited to students. It'll start coming to teachers. So wait for your obscene videos hitting the ground. So I think the scenario is far, far more dangerous than what you're thinking about. Unfortunately, the problem is students and users don't realize that we are undergoing a new revolution. I call it the Great Indian Vomiting Revolution. Indians are vomiting data about their personal, professional, social lives on the internet, on AI, without thinking of the ramifications. On top of it, we now have the recording media. The recording revolution, where people are recording all kinds of stuff. Today, to make a deep fake of you as a teacher, as a vice principal, as a principal, is work like this. Free tools, deep fakes, enough to demolish your reputation built over decades. So how do you deal with it? One option is to shout these guys down and say, guys, don't use AI. The second is saying, hold on,
using AI, let's try to be more constructive in use of AI. I think schools will have to start incorporating AI education as a part of the school curriculum from the nursery. Forget about first. Why? Because we as Indians have started giving devices to children at the ages of 2 and 3. So when somebody known to me, who in the family a girl is born, and when the girl is 4 months old, the parents decide to do an experiment. The parents decide to give the girl child of 4 months a gift. The gift is an iPad mini connected to the internet. By the time the bacha or the girl is 6 months old, she is far more proficient at dealing with iPad mini with the internet than her parents. It's a different matter that she takes 18 months before she starts speaking the first word in her life. So in a scenario like this, I know we are busy. At home, let's replicate the scenario. I've got so many work to do. Here is the mobile. Please look at the mobile. Don't eat my head. I think that approach will have to go. We'll have to be consciously coming up with more creative approaches. Cyber security is going to be breached left, right, and center. Today, I have the ability to ask to just know about you, your photograph online, that's all. And I give it to AI. AI has the ability to tell me how this teacher, how this educationist, how this principal is thinking, what her vision is, what her perceptions are. It's replicating. And if you think AI is not going to breach your privacy, you're thinking again in a different, wrong direction. So one of these girls came to me. She's 23 years old. And a new program came in. The Nano Banana. How many of you have used Nano Banana? Oh, I just see one hand. Okay. So it's a new program which allows you to generate any picture about yourself. No problem. So in the Nano Banana introduction, a new trend came across called the sari trend. Okay? So you can give to the program, show me in a red sari or a purple sari, and the program will generate. So this girl took her photograph, fully clothed salwar kameez, photograph, uploaded it to AI, and said, please give me a picture of me in a red purple sari with a sleeveless blouse. The program generated her in a red purple sari in a sleeveless blouse. But when she saw the photograph, she was flabbergasted. Why? In the sleeveless photograph, her mole, which was on the right hand, came in. The mole was not visible in her picture, which she had a fully clothed picture of salwar kameez that she had uploaded. And she's zapped. It's a violation of her privacy. And she wants to take action. I said, before starting taking action, think again. Did you at any point of time share anything in a sleeveless form? And lo and behold, she has shared that. So this program has been able to understand, make her profile. This girl has this mole on the right hand. So if it's a cloth picture, I will not show the mole. But the moment it's a sleeveless picture, I will show the mole at the exact location. Now consider the ramifications. I think it's a mind-boggling thing that you're thinking across. And today in India, in the education system, I'm finding these AI to be now considered with human traits, human characteristics. People are willing to trust AI more than they trust humans. So you are going ahead and sharing your personal details without thinking, without knowing the terms and conditions which tell you, hey guys, do not give me any of your personal data. Why? Because it's public data. I'm going to use it for public purposes, for training myself, for the purposes of training my algorithms, my data sets. And you will have no privacy. You will not even have the ability to cry and challenge because you're giving me your consent. So guys, I think the time has come where we'll have to have a new approach to both AI and cybersecurity. AI is now being used for protecting cybersecurity, but more significantly for breaching cybersecurity. If you don't believe it, just give your access to one of your accounts to AI and ask AI, tell me the security vulnerabilities. That's all. Lo and behold, it's going to tell you 10 different vulnerabilities which are existing in your system now. So, what's the thumb rule? अगर हम सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई स्वप्न सुंदरी है, हम लोगों के लिए नई जादू की झप्पी है, तो हम गलत सोचते हैं. इस तरह की कुछ चीज़ नहीं है. ये एक बहुत बड़ा हम राक्षस बना रहे हैं और ये डेटा हंग्री डीमन है. वो कॉन्स्टेंटली आपके डेटा को लेना चाहता है और उसको भूलना नहीं चाहता. एक लड़का मेरे पास आया, सोशल मीडिया पर्सनालिटी, नाम नहीं लूँगा, 25,000 फॉलोअर्स हैं. तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएं तो आप अकेले हो जाते हैं, हर एक से बात नहीं कर पाते. उनके साथ एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम हुई. उन्होंने कहा, एक नए प्रोग्राम के बारे में पता लगा AI, तो AI पे गए.
ना प्रॉब्लम होती है कि जब हम AI पे लॉगिन करते हैं तो वो कहता है अपना ईमेल आईडी दो. Indians 95% of the times use an email ID which contains their name. तो उन्होंने अपने नाम से ईमेल आईडी लॉगिन किया, फिर बताया मैं फलां फलां बंदा हूँ, मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं 25 लाख, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए. प्रोग्राम ने बताया बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ. इन्होंने कहा कि मेरी फिलहाल 7 अलग अलग महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रहा है. इन महिलाओं का नाम ये है क ख ग ए बी सी डी ई. मैं 7 को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूं. क्या आप मुझे कोई गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दे सकते हैं? सो प्रोग्राम ने गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दे दिया. अब वो अमल करने लग गए, चलो दूसरी बात है. लेकिन कुछ देर बाद दिक्कत हुई. दूसरी बात ये प्रॉब्लम हुई है कि कुछ दिनों बाद जब उस प्लेटफॉर्म पर जाइए, उस जनाब का नाम पूछिए या उन 7 लड़कियों या महिलाओं का नाम डालिए, तो प्रोग्राम एक स्लाइट गिविंग हिंट देता है कि साहब एक रिलेशनशिप चल रहा है. अभी से बॉस गलती हो गई, अब मुझे इंजंक्शन लेके दीजिए, डायरेक्टिंग AI टू फॉरगेट व्हाट आई हैव टोल्ड यू. नाउ कैन यू डायरेक्ट AI टू फॉरगेट व्हाट यू वॉमिटेड टू AI? No, crystal clearly no. Why? Because we don't have a law on AI in India. And even most of these AIs are located outside the territorial boundaries of the country. So I think we'll have to learn very, very quickly. साइबर सुरक्षा की जब मैं बात करता हूं तो हम ऑलरेडी आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए. हमें पता है या नहीं पता वो दूसरी बात है. गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुकी है कोविड-19 के बाद, क्योंकि कोविड-19 के बाद 2 चीजें आजीवन कोविड हमें दे गया है, डर और पैनिक. हम जल्दी डरते हैं, हम जल्दी पैनिक हो जाते हैं. ये डर और पैनिक को ही साइबर क्रिमिनल्स हथियार बना रहे हैं. और अब बहुत सारे आक्रमण एजुकेशन इकोसिस्टम पर होने वाले हैं. अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं सोचता हूं अपनी कमर कस लीजिए. Why? Because now the new crop of cyber criminals that are coming in are all using AI for the purposes of powering their attacks. Attacks will happen on critical information infrastructure, on educational institutions, on their marking systems, on their education mechanism. Why? Because they want to disrupt everything. So we will have to focus extensively on cyber security. I believe cyber security, AI and cyber law will have to be got an integral part of the school education from the nursery. Earlier I used to say first, I said forget about the first. At nursery when you come in, that's the time you'll have to work it across, because it will have to be done as a part of an intrinsic process. Don't wait for the CBSEs of the world or the UGCs of the world to give you what you have to do. आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है. और अगर आपने अभी भी अपनी नींद से नहीं जगे हैं तो थोड़ा सा एक ट्रेलर ले लीजिए. एक नया लॉ कानून ने पास कर दिया है संसद ने, जो 13 नवंबर 2025 से लागू हो गया है. That law is called the Digital Personal Data Protection Act 2023. This law is applicable to all of you, all educational institutions. This deals with protection of personal data. आपको अब बच्चों के पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी. साहब ऐसा है, हम आपके पर्सनल डेटा एकत्रित कर रहे हैं, प्लीज मुझे कॉन्सेंट दीजिए. वो कॉन्सेंट देंगे तब आप डेटा ले सकते हैं, वरना नहीं. चलिए आपने कहते हैं बस डोंट वरी, हम जुगाड़ कर लेंगे, डोंट वरी. मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि आप DPDP एक्ट में जुगाड़ कर ही नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कानून कहता है कि अगर आप मेरे प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, नो प्रॉब्लम, कोई जेल का प्रावधान नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है. बस एक बात है, फाइन है. फाइन कितना है? 250 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रवेंशन. दैट्स ऑल. सो इफ यू हैव 250 crore rupees as loose change, by all means go ahead and violate this law. And to whom does this 250 crore goes? It does not go to a private complainant. It goes to Government of India. पेमेंट कहाँ जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कानून क्या कहता है? साहब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इस फाइन को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मानेंगे. इसका सीधा मतलब क्या है कि आपकी स्कूल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच की जा सकती हैं, उनकी कुर्की करने के बाद उनको बेचा जा सकता है, पैसे रिकवर कराए जा सकते हैं. चलिए उतना भी पैसे कम, मतलब 250 करोड़ पूरे तब भी ना हुए, फिर क्या करेंगे? तो कानून कहता है नो प्रॉब्लम, जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी भी हम एसेट्स अटैच कर लेंगे, उनको भी बेच देंगे. तो अगर आप टॉप मैनेजमेंट हैं तो थोड़ी बहुत अपनी कमर कस लीजिए. आई थिंक द टाइम हैज कम वेयर वी एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव टू फोकस ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स. नंबर 1, creating awareness. Number 2, incorporating cyber law, cyber security and AI as part of school curriculum from the nursery standard. Number 3, doing proactive compliances. और Number 4, कागजी कार्रवाई अपने पास ज़रूर रखिए. कल को अगली बार आपके यहाँ नोटिस आता है या पुलिस खटखटा करके आपके यहाँ आती है तो कुछ सबूत होना चाहिए कि आपने कानून का पालन किया है.
और पांचवा, एआई के विनाशकारी रूप को थोड़ा बहुत समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो अगले 12 से 18 महीनों में इस एआई के रिसीविंग एंड पर हो सकते हैं और आपकी रेपुटेशन टार्निश हो सकती हैं। इसलिए यू विल हैव टू बी लुकिंग एट मोर क्रिएटिव वेज ऑन हाउ वी कैन यूज एआई बेटर। दैट्स इन अ नटशेल व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। डरा दिया, लेकिन एक्चुअली रियलिटी से अवगत करा दिया। 250-250 करोड़ हमने देखे भी नहीं, पता नहीं कितने बैग्स में आएंगे अगर कैश में होता। 500 रुपए के नोट या उसमें थोड़े कम भी हैं, 10 करोड़ की भी है उसमें फाइन, 10 करोड़ की भी। कम की बात करें हम तो बड़े 10 करोड़ कम है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन ऑल द पैनलिस्ट। I would request audience if they have any questions. Okay, one question now, since he raised his hand. Yes, please. Let's be brief. अगर आप आग के दरिया में एक छलांग लगा ही रहे हैं तो रिस्क तो चारों ओर है, जल तो आप सक ही सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी डाल रहे हैं या एआई को से जनरेट भी करा रहे हैं तो कानून कहता है कि क्योंकि आपने जनरेट किया, मालिक आप हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, कॉपीराइट के। सीधा तात्पर्य यह है घुमा फिरा के कि कुछ गड़बड़ हुई, सेहरा आपको पहनाया जाएगा, एआई कंपनी को नहीं पहनाया जाएगा। लीगल लाइबिलिटी आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल ऑन हाउ यू गेट योर कंटेंट जनरेटेड। और अगर आप कंटेंट शेयर भी कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल कंटेंट ना शेयर करें तो अच्छी बात है, बिकॉज अब क्या है, एआई ना आपके दिमाग के साथ खेलने लग गया है। और अभी तो हम अभी दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं, नैरो एआई, एजेंटिक एआई आ रहा है। अगले साल के अंत तक वील सी दी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कमिंग इन, AGI, जो करंट नैरो इंटेलिजेंस से 10 गुना ज़्यादा एडवांस्ड होगा। बट वहाँ पर भी बात नहीं खत्म होती, 2027 में सुपर इंटेलिजेंस आ रहा है। सुपर इंटेलिजेंस जो कहते हैं कि साहब पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाला, वो है सुपर इंटेलिजेंस। तो हमारे तो वजूद की लड़ाई होने वाली है कि हमारा वजूद अब क्या रहेगा। एज ए टीचर आपसे सवाल पूछा जाएगा, वाई यू रेलिवेंट, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जो आप पढ़ाओगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे एआई दे पाएगी। सो आई थिंक वील हैव टू बी अलाइव टू द फैक्ट कि हम लोग एक घुड़सवारी कर रहे हैं शेर की। ये शेर है एआई का, हम एआई से नीचे तो उतर नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कैलिब्रेट करना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। खतरे बहुत हैं, जहाँ जहाँ छोड़ के चले जाइए वहाँ वहाँ खतरे हैं। बॉटम लाइन है, कम से कम चीज़ें शेयर करें एआई के साथ। पर्सनल चीज़ें तो बिल्कुल ही ना शेयर करें, क्योंकि वो आपका प्रोफाइल बना रहा है, और एक बार उसको पूरा प्रोफाइल आपका पता लग गया फिर आपका कोई वजूद नहीं होने वाला, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपके प्रोफाइल की जानकारी जो आप पर्सनली बात कर रहे हैं, सैम ऑल्टमैन बता रहे हैं ना कि साहब आपने जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी की है एआई के साथ, हम उसको भी पब्लिक इस्तेमाल करेंगे। और सर्च कोई आपके बारे में करेगा, आपकी पर्सनल जो जानकारी आपने कॉन्वर्सेशन एआई के साथ कर रखी है उससे भी एआई सामान उठाएगा और लोगों को देगा। तो आप तो वर्चुअली आपकी जो डेटा प्राइवेसी और पर्सनल प्राइवेसी बहुत ताक पर आ जाने वाली है, बहुत ज़्यादा चुनौती होने वाली है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट मैं नहीं कह रहा कि ऐसा भाग जाइए। एआई यूज़ तो करना है, सेफ तरीके से इस्तेमाल करें, क्रिएटिव तरीके से। थैंक यू। Thank you, Pawan sir. Your insightful address has shed a sharp light on the digital maze our students navigate today, from deepfakes to cyber threats, urging us to prepare them with awareness, ethics, and resilience in the age of AI. I would also like to thank Oshima ma'am and all the esteemed panelists for this deeply informative session. Your expertise reminds us that preparedness is not an option. It is a responsibility that keeps every school community resilient. May I now request Dr. Usha Ram to join us on the dais and present the memento to all the distinguished speakers. Dr. Shri Pawan Duggal, cyber law expert.
Thank you so much, sir. Thank you for being with us today. Can we hear it for sir, please? Dr. Pankaj Shreyskar, Deputy Director General, Department of School Education, Ministry of Education, Government of India. Minakshi Kushwaha, ma'am, Principal, Birla Vidya Niketan. Can we hear it from ma'am, please? Thank you, ma'am. Thank you for joining us today. Shri R.C. Sharma, former Director, Delhi Fire Services. Thank you, sir. And our youngest panelist for the day, Ms. Kirti, Manager, Safety and Manufacturer Association. Oshima Mathur, ma'am, our moderator for this session. I think she needs lots and lots. Lots of applause. Yes, absolutely. Thank you, Oshima, ma'am. मतलब ये चाहते हैं हम ऋणी हैं. Thank you, everyone. For our next panel discussion, we are pleased to introduce Shri Rupesh Pandey, Senior Secretary at the PhD Chamber of Commerce and Industry. He leads strategic initiatives in cooperatives and hydrocarbons, fire and safety, and plays a pivotal role in strengthening industry collaboration across Maharashtra and West Bengal. His work continues to drive safer systems, stronger partnerships, and impactful reforms. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Rupesh Pandey. With a loud round of applause, please. Our distinguished speakers for this panel discussion are Ms. Bhavna Sharma, Preparatory Coordinator, MCD, Shri Kumar Akhilesh, Academic Coordinator, MCD, Ms. Indu Batra, Principal, Shri Anil Balyan, Deputy Director of Education, Shri Ambuj Kumar, Shri Rajiv Kumar, who happens to be a parent. So we will also have the parents' perception. Shri Nikhil Tiwari, Director Education, MCD. Over to you, sir. सबसे पहले तो
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के बाद का सेशन थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है और बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, और हमने जब ये पूरा प्रोग्राम क्यूरेट किया था तो हमें लगा नहीं था कि ये शाम के 4 बजे तक खिंच जाएगा। अभी तो शायद 5 बजे बज जाएंगे, तो आपको देर शाम तक बिठाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि ये इस पूरे प्रोग्राम का, पूरे सत्र का ये आखिरी सेशन है और हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुबह से हमने हर एक पहलू पर चर्चा की। हमने सेफ्टी पर चर्चा की, हमारे पास काफ़ी सारे एजुकेशनिस्ट थे, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, मेंटल वेलनेस कोच थे, हमारे फायर डायरेक्टर्स थे। और अभी एजुकेशन का वो पहलू है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में या हिंदुस्तान में 2 भारत बसते हैं, एक वो, और इसी ये बात एजुकेशन में भी लागू होती है। एक वो जो 5 स्टार में रहता है और दूसरा वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेस्ट से बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करता है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं, जो हाईएस्ट जो नंबर ऑफ स्कूल हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो एमसीडी के पास में है तकरीबन प्राइमरी स्कूल, तकरीबन 1600 के आसपास, 15 या 1600 के आसपास स्कूल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरी दिल्ली अगर हम देखें तो 200 किलोमीटर के रेडियस में बसी है। 2 करोड़ की आबादी में 1500 स्कूल, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ते हैं, और उनको मैनेज करना ये एक ऐसी जिम्मेवारी है जो, और प्राइमरी एजुकेशन जो बुनियादी शिक्षा की नींव है, वो एमसीडी मैनेज करता है। आज हमारे पास इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे अच्छे पैनलिस्ट हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ में बैठ कर के इस सेशन को मॉडरेट कर रहा हूँ। कुछ अगर त्रुटियाँ होंगी तो ज़रूर माफ़ करिएगा, क्योंकि एजुकेशन में ये हमारा पहला इनिशिएटिव है। हमारे साथ में है मैडम इंदु बत्रा, जो कि प्रिंसिपल हैं, और ये बात करने जा रही हैं हमारे साथ चैलेंजेज एंड फ्यूचर विजन के बारे में। मैडम भावना भी हैं हमारे साथ, जो कि एनईपी और एनसीपी रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगी। इसको हम सेफ्टी और मेंटल वेलनेस के साथ कैसे जोड़ते हैं और कैसे जोड़ सकते हैं। हमारे साथ श्री अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी बात करेंगे इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी रिकमेंडेशन इन एमसीडी, और इनके साथ में हम आज एक पेरेंट्स को भी लेके आए हैं, और श्री राजीव कुमार जी, और उनसे भी हम पूछेंगे कि एमसीडी में आपका बच्चा पढ़ता है और एमसीडी की जो सुविधाएं हैं, जो एजुकेशन है, जो तालीम है, जो आपके बच्चे को दी जा रही है, क्या आप उससे खुश हैं या आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं। और इन सबको कंक्लूड करने के लिए जो एमसीडी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, यंग लीडर श्री निखिल तिवारी, IOFS डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ एमसीडी डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि उनको एक गिव अ बिग राउंड अप्लॉज, बिकॉज ये एमसीडी को लाने का इस मंच पर श्रेय पूरा श्री निखिल तिवारी जी को जाता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं बिल्कुल आई विल कम टू द स्टेट पॉइंट दैट द सेफ्टी एंड चैलेंजेस इन प्राइमरी एजुकेशन। सो मैं, मैडम हमारे साथ में इंदु बत्रा जी हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा कि एमसीडी में किस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। अगर मैडम अगर इस पर अपनी विचार रख सकें तो। मैडम। सभी को नमस्कार। इस मंच से जो हम बात करने जा रहे हैं, आपने सुबह से देखा है सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्पेसेस की बात, मेंटल वेलबींग की बात, जो हम लोगों ने बिल्कुल अलग अलग लेवल पे बात की। हमसे पहले वाले पैनल में भी हमने बहुत सारा कुछ सीखा। एक लर्निंग जो हम आज लेके जा रहे हैं इस मंच से, वो तो है ही है, लेकिन शायद जो अवेयरनेस की बात है वो हमारी आंखें खोल देती है। हम डील करते हैं एमसीडी स्कूल्स के साथ। एमसीडी स्कूल में हमारे पास 3+ से बच्चे आते हैं 10 साल तक के। जो प्रश्न सर ने उठाया है कि सेफ्टी स्पेसेस के बारे में चैलेंजेस और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं एमसीडी स्कूल से। मैं जिस स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ, गत 9 वर्ष से मैं प्रिंसिपल हूँ। बहुत सारे चेंजेस मैंने एमसीडी में देखे। बहुत लंबी नौकरी हो गई एमसीडी में, 32 साल की। तो चेंजेस जब हमारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए सेफ्टी स्पेसेस को लेके, जो आज का टॉपिक भी है हमारा, तो वो चेंजेस एनईपी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा निचोड़ निकाला गया और उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करें अपने लेवल पे।
क्योंकि एमसीडी के चैलेंजेस कोई भी बाहर वाला समझ नहीं सकता। मैं हमेशा हर मंच पे कहती हूँ कि ये कील मुझे कहाँ चुभता है वह मेरा ही पैर बता सकता है। बाहर से बहुत कुछ देखने में दिखता है लेकिन चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं। और एक मेरी और टैगलाइन में है मेरे स्कूल में भी, समस्याएं बहुत हैं, मुझे सिर्फ समाधान दीजिए। समस्याएं तो हम रोज़ ही देखते हैं, अब हमें समाधान की बात करनी चाहिए। इस समाधान को भी देखा गया कि कैसे सेफ्टी स्पेसेस की बात हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, जहां बच्चे के लिए शायद हम अध्यापक भी हैं और अभिभावक भी हैं, क्योंकि घर जाके बच्चे के बारे में उस रूप में सेफ्टी स्पेस के बारे में शायद माता पिता के पास समय नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। मैं ब्लेम गेम के लिए अगेंस्ट हूँ और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपना दायित्व है जो उसको हम अच्छे से निभा दें। शायद हम एक वो कैटलिस्ट हैं जो चेंज ला सकते हैं, वी आर द चेंज मेकर। तो हमने इस चीज़ को अपनाया और हमारे यहाँ जब नए नवाचार हो रहे थे, नई बातें हो रही थी, तो एक खिलखिलाता बचपन करके कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं? उस कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं सेफ्टी स्पेसिस की और उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सिर्फ बात नहीं की गई, बात करना तो बहुत आसान है, उसको बहुत सब्जेक्टिव तरीके से समझा भी गया और उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे अपनाया भी गया। और एक्सपेरिमेंट की शायद प्रयोगशाला एमसीडी स्कूल ही रहे हैं। तो जब खिलखिलाता बचपन के अगर आप कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, लेसन प्लान भी देंगे, एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान टीचर को दिया गया कि वो भटके ना, उसको सोचने का इतना समय नहीं भी मिल रहा है, बहुत सारे कार्य हैं, तो उसको एक आपके हाथ में दिया गया कि ये है, इसको इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं और वो जो बूंद तैरती तैरती नीचे तक जा सकती है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो उसमें सारी सेफ्टी स्पेसिस की बात की गई कि बच्चा अपने बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसको अपने शरीर के बारे में जानकारी हो, उसको गुड टच बैड टच की भी बात करी गई, लेकिन किस तरह से, नॉट बाय द लेक्चर मेथड। आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे से स्किट्स हैं, उसमें काल्पनिक कैरेक्टर्स बनाए गए, जंगल का सीन डाला गया और वो बातें जो वैसे हम नहीं बच्चों को एक्सप्लेन कर पाते कि आपके शरीर के कौन से अंग हैं जो किसी और को छूने नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास में टीचर उसको डिलीवर कर रही है और उसके बाद उसका पूरा हफ्ता रिकैपिचुलेशन में जा रहा है कि बार बार हम वो चीज़ उसके दिमाग में डाल रहे हैं। और वहीं से हमने हैंड होल्डिंग की है पेरेंट्स की। स्टार पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो जो उसमें हर कक्षा में कुछ पेरेंट्स चुने गए हैं, वो पेरेंट हैं जो बहुत सारे बच्चों के आसपास रहते हैं, कि लोकेलिटी में से एक पेरेंट चुना गया जिसके आसपास बहुत सारे बच्चे रहते हैं। उस पेरेंट को एक वॉलंटियर बनाने में एक प्रयास किया गया कि उसको भी हम काउंसिल करें कि वो घर पे भी कुछ सपोर्ट बच्चों को दे पाए। तो ये जब सेफ्टी स्पेसिस की बात आई, उसके बाद हमने क्लासेस में भी बहुत सारी ये मॉक ड्रिल की बात जो सर ने की, हमारे एमसीडी स्कूल्स में भी ये रेगुलरली हो रही हैं और बहुत सारी कोशिश हर स्कूल में प्रयास किया जाता है कि इसको रेगुलरली किया जाए। और अब बच्चे इक्विप हैं कि अगर सायरन बजा है, कोई प्लान नहीं होता कि आज मॉक ड्रिल होगी। मेरा तो कभी प्लान नहीं रहा, मेरे दिमाग में हो सकता है 12:55 पे मैं सायरन बजा दूं कि वो छुट्टी होने से 5 मिनट पहले उनको डिफरेंस पता होना चाहिए कि छुट्टी की बेल क्या है और इमरजेंसी सायरन क्या है। तो इस तरह से जब हमने ये प्रयास किए तो अब बच्चे हमारे स्कूलों में बहुत सारा चेंज महसूस कर रहे हैं और हम उस चेंज को महसूस कर रहे हैं। बच्चे रेगुलरली स्कूल आ रहे हैं, पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। चैलेंजेस अभी भी हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम उस पथ पे चल पड़े हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देगा, जो नीड ऑफ द आवर है, जो हमारी आज की ज़रूरत है, सेफ स्पेसिस, उसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से कम शब्दों में आपने काफ़ी कुछ आपने खोल के रख दिया। एमसीडी का जो नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो भी इनिशिएटिव हैं, जो चैलेंजेस हैं और किस तरीके से आप लोग उसको रोड मैप को बनाते हो और कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैडम भावना हमारे साथ में हैं और भावना जी एनईपी और एनसीपी रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करेंगे।
पर इसको हम सेफ्टी और मेंटल वेलनेस से कैसे जोड़ते हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं? क्योंकि अगर आप उनकी रिकमेंडेशंस देखेंगे तो निश्चित तौर पर, बिकॉज एमसीडी एजुकेशन मेरे ख्याल से प्राइमरी एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है, और जब आप रिकमेंडेशंस को बच्चों से जोड़ते हैं तो वहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको कैसे ओवरकम करती हैं? Thank you so much. A very good afternoon to the esteemed people who are present over here. अभी जैसे इंदू मैम ने बात की एमसीडी स्कूल्स की, और उन्होंने बताया कि हम कैसे अपने बच्चों में सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना को इंस्टिल करते हैं और उसको प्रोपेगेट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हम एमसीडी स्कूल्स में नए इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, ये कहीं से भी अचानक नहीं आ गए हैं। इनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो गाइडलाइंस हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू हमें मिले हुए हैं। चाहे वो हम बात करें एनईपी की, एनईपी 2020 की, एनसीएफ 22 या 23 की, हम एनसीपीसीआर की बात करें, या हम राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करें, उन सब में बहुत डिटेल में स्कूल सेफ्टी, वेलबींग, इन सब के बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी आज दिन भर में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये। और जो भी हमारे ये करिकुलर फ्रेमवर्क्स हैं या हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये हमें एक बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताती हैं कि स्कूल को हम कैसे जॉयफुल, चाइल्ड फ्रेंडली और एक ऐसी जगह बना सकते हैं जब बच्चे अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। तो अगर हम एनईपी 2020 की बात करें, वो बात करता है चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग की, नर्चरिंग एनवायरनमेंट की, जहाँ पर सोशल इमोशनल लर्निंग हो, मेंटल वेलबींग भी साथ में हो, बच्चों के साथ कोई भी बुलिंग ना हो, कोई चाइल्ड अब्यूज़ ना हो, जहाँ पर बच्चे सेफ फील करें। उनके लिए हम सेफ्टी ऑडिट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ज़रूर स्कूल में फॉलो करें, जिसके लिए हमने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हुए हैं जो आगे के स्पीकर्स आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं तो कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ये हमारा मुख्य ध्येय रहता है। तो साथ ही साथ हम CWSN स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलते हैं, और बच्चों में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्पीकर बात कर रहे थे कि एडोलेसेंट स्टूडेंट्स में इतनी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइक नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं, मेंटल वेलबींग नहीं है उनकी, क्राइम रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की गाइडलाइंस हमारी एनईपी 2020 में है। और एनसीएफ की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा ध्येय नहीं है। हम जब तक उनके 5 डोमेन्स पे काम नहीं करते हैं, जो है उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशो इमोशनल, कल्चरल एंड एस्थेटिक डोमेन, जब तक उन पर अच्छी तरह से काम नहीं होता, चिल्ड्रन दे डोंट ब्लूम। तो अगर हम एनसीएफ की बात करें, वो कहता है अबाउट सेफ एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट, positive behavior and norms, not just for the children but for the teachers as well. We have safe physical spaces and we have safe classrooms where the child is free. और इसी के साथ साथ जो हमारे NCPCR हैं, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं जो बताती हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है। उनको गुड टच, बैड टच, जो भी इंदू मैम ने बात की कि हम चाइल्ड एज अप्रोप्रिएट वहाँ पर हम शिक्षा देते हैं उसकी। फिर अभी जैसे सर ने बात की थी अबाउट साइबर सेफ्टी, हमारे बच्चे इतने ज़्यादा AI में तो नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एंड एज ही राइटली सेड कि क्लास नर्सरी से ही हमें उन्हें बताना पड़ेगा। तो दिस इज़ अगेन अ न्यू गाइडलाइन विच वी शुड फॉलो कि साइबर सेफ्टी, हम स्क्रीन टाइम जो बच्चों का है और जो बच्चे पर्सनल डेटा शेयर करते हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं या फिर एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देन वी प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू CWSN स्टूडेंट वेयर देयर इज़ बैरियर फ्री एक्सेस टू ऑल दी फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। और ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से ग्लोबल अगर हम उस पर देखें तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, लाइक SDG 3, 4, 5 and 10 which deal with good health and well-being, quality education, gender equality and reducing the inequalities। तो एक लार्जर फ्रेमवर्क भी अगर हम देखें तो वो भी इन सब सेफ एंड सिक्योर स्कूल्स की बात करता है। तो ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, हमने कहा ना गाइडलाइंस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनका इफ़ेक्ट तभी आता है जब इनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। सो आई थिंक फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस आई वुड वांट
my fellow, Mr. Kumar Akhilesh, to speak on that. Thank you so much, sir. हेलो, नमस्कार। एक तो मुझे लगता है ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी एनईपी के बाद कि स्कूल का मतलब अक्षर ज्ञान ही नहीं है। पढ़ना लिखना, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ये माइंड सेट आने में अभी हमें लगता है टाइम लगेगा। कई बार हम कहते हैं ये क्या नौटंकी हो रही है, बच्चों को नाच सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो एजुकेशनल डेवलपमेंटल गोल है ना, वो सारे देखें उसको, और उसके डोमेन, जब मैम ने, जैसे भावना मैम ने कहा कि डोमेन में सिर्फ 2 डोमेन है पढ़ने लिखने से रिलेटेड, बाकी जो 3 डोमेन है वो अन्य चीज़ों पे है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। शायद इसलिए हमें यहाँ बैठ के कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। खेल योगा एक किताब है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, हम ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, ये तो घर में खेलोगे कूदोगे बिगड़ोगे, ऐसा नहीं है। उतना ही इम्पॉर्टेंट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बने, सोशली कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे मिले। लैंग्वेज एंड लिटरेसी और कॉग्निटिव तो हम बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, और एस्थेटिक एंड कल्चर डेवलपमेंट। ये पांचों जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं अपने सिस्टम में, तो हम ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो इसी को आधार बना के दिल्ली नगर निगम अपने 5 डोमेन पे काम करता है। 3 डोमेन की तो हर जगह बात होती है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी में हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं हम, कॉग्निटिव में विज्ञान या फिर गणित की बात करते हैं। यदि सोशियो इमोशनल है तो शायद इसकी कोई किताब भी एनसीईआरटी ने नहीं दी है, तो हम सोचते हैं ये पढ़ाने की चीज़ ही नहीं है। तो हमें ज़रूरी है कि इन पे बात करें। अब करिकुलर गोल जरूर देखिएगा सभी टीचर्स कि हमें आखिर पढ़ाना क्या है। CG1 कहता है डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। पहला CG यही कहता है कि बच्चे हेल्दी और सेफ रहे, हमें उस पर काम करना है। चौथा करिकुलर गोल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है, और 5वां पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करता है। तो क्या हम एजुकेशन से इनको हटा के बात कर सकते हैं? नहीं। तो हमें ज़रूरी है कि सभी डोमेन पे बात करें, और इसलिए MCD ने इन डोमेन को डेवलप करने के लिए एक खिलखिलाता बचपन शुरू किया है, जो बेसिकली हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आप उनके टॉपिक देखें तो आपको लगेगा, इंदु मैम ने 2-4 टॉपिक बताए भी। सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है बताना कि अपने बारे में तो पता हो। हमें अपने बारे में बताने को कहे, नाम, पिताजी का नाम, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, बस ख़त्म। हमें सोचना पड़ता, अच्छा और क्या है मेरे बारे में पता। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, हम दूसरे की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, नहीं ये गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। ज़रूरी है कि फाउंडेशनल स्टेज से ये बच्चों में सिखाया जाए मेंटल वेलनेस के लिए। एडमिरेशन या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप उसके टॉपिक देखेंगे तो माई बॉडी माई सेफ्टी, जिस पे सुबह से आज बात हो रही है। बी अलर्ट, स्टे सेफ, स्मार्ट एंड सेफ ऑनलाइन। दुग्गल साहब चले गए डरा के तो हम अभी से फाउंडेशनल स्टेज से दिल्ली नगर निगम में बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपको सेफ रहना चाहिए। उसी तरीके से दिल्ली नगर निगम में थीम बेस्ड असेंबली हो रही है आजकल। अब उसके 2-4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में हम बताते हैं कि आप मोबाइल चलाते हुए क्या करें और क्या ना करें, कैसे कोई पैसे की बात आए तो पेरेंट्स को बताएं, कोई भी गेम डाउनलोड नहीं कर लें। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, गुड टच, बैड टच और स्पोर्ट्स सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं अपने करिकुलम में लाके। उसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर ज़रूर MCD के स्टॉल पे जाए। जो MCD अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से काम करती है, उसकी पूरी वहाँ ब्रोशर है, आपको पता लगेगा कि बच्चे कैसे वहाँ सीखते हैं। उसके कुछ नाम है। स्कूल सेफ्टी कमेटी हमारे स्कूलों में है जो इस पे ही काम करते हैं। मॉक ड्रिल कराते हैं, जैसे इंदु मैम ने कहा। गुड टच बैड टच की रेगुलर टीचर करते हैं काम। फायर सेफ्टी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। नशा मुक्ति, चाइल्ड अब्यूज़ और
पुलिस डिपार्टमेंट से अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी कि कैसे आपको सतर्क रहना है, पुलिस आपके मदद के लिए है, डरने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अभी से बच्चों में, दिल्ली नगर निगम के बच्चों में, कि वो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक प्रोग्रेस हो, ताकि वो HPC भरे। तो इन चीज़ों को भी अब असेसमेंट में शामिल कर लिया है। अब हिंदी, गणित, अंग्रेजी के अलावा इन चीज़ों के भी स्कोर है पेरेंट्स से बातचीत के आधार पे। तो कोशिश की है सर MCD में शुरू करने की। थैंक यू जी। तो अभी तक हमने 3 विषयों पर हमने चर्चा की। एक तो हमने इनिशिएटिव पर बात की, रिकमेंडेशंस पर बात की और इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात की कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, उनके क्या इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अब इसके बाद का जो सवाल है वो है फ्यूचर के चैलेंजेस क्या है, क्योंकि MCD के पास अभी चैलेंजेस कम नहीं है, चैलेंजेस अभी और आने बाकी हैं। और अभी इसके पहले वाला जो सेशन था, जो AI का था सेशन, तो AI का तो खैर निश्चित तौर पर दुगर साहब ने जो प्रॉस्पेक्टिव अपना रखा है और जो डर है, और वो वाकई में ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगले 1-2 सालों में AI पूरी तरीके से भस्मासुर बनने वाला है। अगर हम उसको सही तरीके से सही टाइम पर हम उसके बारे में हम नहीं चेत लेंगे तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर इसके बारे में अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता रहता है, लोगों को इनवाइट करता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाता रहता है। निश्चित तौर पर आगे भी हम आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि AI के बारे में अगर कुछ बात हो रही है तो आपके यहाँ से, आपके MCD से लोगों को भेजिए, वो भी इसका सेशन अटेंड करें। लेकिन आज चूँकि एजुकेशन की बात हो रही है और ये पूरा का पूरा जो थीम है, वर्कशॉप जो है, वो सेफ्टी के ऊपर है, सेफ लीडर स्कूल लीडरशिप के ऊपर है। और इतना बड़ा आप कह सकते हो कि स्कूल का जो एक आप चेन है 1500 स्कूल का, और आने वाली चुनौतियां कम नहीं हैं, ज़्यादा हैं। और क्योंकि जिस तबके के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं उनका परवरिश और उनका जो उनकी चुनौतियां हैं वो कुछ और भी हैं, वो केवल एजुकेशन की नहीं है। फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो आप लोग जो उनको मिड डे मील देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो MCD को जो अभी और पार पाना है। आपने बहुत सुधार किया है। हमारे साथ में श्री अंबुज कुमार जी हैं और मेरे ख्याल से उन्हीं चुनौतियों पर बात करने के लिए आप हैं यहाँ पर, आपसे बेहतर कोई और यहाँ पर हो नहीं सकता। सर आप बताएं आपका फ्यूचर विजन क्या है और इस पर आप कैसे पार पाएंगे? रुपेश जी, जब हम विजन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर के चैलेंजेस आएंगे क्या। बेसिक चीज़ ये है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो वर्तमान में चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हैं कि हम स्कूल में बच्चों के लिए एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। और उस कंजीनियल इन्वायरमेंट में ना से बिल्डिंग है, बैठने की जगह है, कुर्सी है, मेज है, इसके अलावा बच्चे को सोशल सिक्योरिटी भी महसूस होनी चाहिए स्कूल में। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो आपने कहा ना, एक चैलेंजेस और है, वो ये कि जो बच्चे को सिक्योरिटी जो एक मेंटल एक जो सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए, न केवल स्कूल में बल्कि घर पे और सोसाइटी में भी। हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। इसके लिए बच्चे को सोशली इमोशनली तैयार करने के लिए, जैसे अखिलेश ने कहा, भावना ने कहा कि हम लोगों ने जो खिलखिलाता बचपन की सीरीज़ शुरू की है, वो पंचतंत्र की कहानियों से इंस्पायर्ड है। तरीका वही है पंचतंत्र की कहानी बच्चे के लेवल पे जाके समझाने का। हमने इन्हीं चीज़ों को लेके एक चीज़ शुरू किया है कि पेरेंट्स को अपने स्कूल में इनवाइट करने का और पेरेंट्स के माध्यम से कम्युनिटी को एंगेज करने का स्कूल में डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के मेंटल वेलबींग के लिए। हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बताइए कैसे हम इसको ठीक करें। उसका सॉल्यूशन पेरेंट्स निकालते हैं और हम उसके बाद कहते हैं, हमने जो स्टार पेरेंट का किया है, जो हमारे एक्टिव पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ आते हैं और एक्टिव पेरेंट्स
से सॉल्यूशंस हम निकाल के उन्हीं से कहते हैं कि अब ये बताइए इसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या होगा, और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ये अभी इसी सत्र से हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया। तो जब तक हम इसमें सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हम जानते हैं हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं, हमारे यहाँ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है, हमारे यहाँ उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जो पब्लिक स्कूल्स में है। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे NGOs हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, इनसे हम हेल्प लेते हैं। हम इंडिविजुअल से भी हेल्प लेते हैं अपने स्कूल्स के गैप को फुलफ़िल करने के लिए। गवर्नमेंट का दीक्षा पोर्टल है, उसमें हमारे स्कूल वाले अपनी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर डालते हैं और जो हमारी सोसाइटी है उससे सपोर्ट आता है स्कूल्स, और उस सपोर्ट से जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम होता है। स्कूल का गैप तो हमेशा हर जगह रहेगा, हर सिस्टम में रहेगा, और एक मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म से हम लोग इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ और महसूस करते हैं, वो ये कि इस चीज़ को हम समझें कि जो पढ़ाई है उसे पढ़ाई नहीं है। बच्चा तब पढ़ पाएगा जबकि मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ अपने ग्रुप में अपने लोगों के साथ कि बच्चे को स्कूल में आके सिर्फ यही नहीं देखना कि कुर्सी है, मेज है, क्या है, उसको उसकी मानसिक ज़रूरत की चीज़ें भी, उसके मेंटल स्टेटस को बढ़ाने के लिए चीज़, जैसे अखिलेश ने कहा कि हम उन चीज़ों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। और जो हमने कुछ चीज़ें NEP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे हम लोगों ने मंथली प्लानर, और हमने बच्चों के वेरियस कंपटीशंस की तैयारी के लिए हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लेते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आया है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल्स में उनका एडमिशन हुआ है। जैसे PM श्री में 300 समथिंग बच्चों का PM श्री स्कूल्स में एडमिशन हुआ है। CM श्री स्कूल जो यहाँ है दिल्ली में, लगभग 200 बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ विद्या ज्ञान स्कूल जो शिवनाडा ग्रुप का है वहाँ हुआ है बच्चों का एडमिशन। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है कि हमारे यहाँ चीज़ें सुधर रही हैं और तेज़ी से सुधर रही हैं। चैलेंज आएंगे, और जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करते रहेंगे। थैंक यू जी। अब चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियों को ठीक करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास विज़न भी है, रोड मैप भी है, हमारे पास एक एबल लीडरशिप भी है। अगर हम देखें कि अगर दिल्ली के MCD की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री से लेकर के, मेयर से लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के, अभी इसके पहले वाले सत्र में आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पर बैठे हुए थे। और सभी का अगर हम देखें कि जो तरीका है वो बस एक ही है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ अच्छा करना है, हमें बेहतरीन करना है, बेहतर से बेहतरीन करना है। तो मुझे लगता है कि जब एक रास्ता मिल गया है, एक राह मिल गई है, तो वो कहीं ना कहीं तो हमें लेकर के जाएगी। बीच रास्ते में हम कहीं नहीं अटकने वाले हैं, कोई ना कोई तो इसका ओर छोर होगा, और MCD इसके लिए तत्पर है। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टेक होल्डर बैठे हैं और सबका अपना विषय है, सारे लोगों ने अपनी चुनौतियों के भी बारे में बात कर ली, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात कर लिया। एक और स्टेक होल्डर यहाँ पर मौजूद है कि जिसका बच्चा पढ़ने जाता है, उससे भी पूछ लिया जाए क्या वो उसको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, क्या उनको ऐसा लगता है कि MCD जो एजुकेशन, जो तालीम, जो शिक्षा उनके स्कूल में जो हमारे बच्चे को दी जा रही है, सुबह से दोपहर तक जब वो रहता है हमारे साथ से अलग आपके पास रहता है, तो क्या वो उस प्रकार की एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है? क्या वो अपने आप को इतना एबल बना पा रहा है कि वो
प्राइवेट स्कूल्स में या वो आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं उससे सामना कर सके। श्री राजीव कुमार जी हैं, ये एक पेरेंट हैं, इनका बच्चा एमसीडी स्कूल में ही पढ़ता है और इसलिए हमने, चूँकि ये सारे स्टेक होल्डर हैं, उनमें से एक ये भी शामिल हैं, हमने इनको बुलाया है। आप सर अपनी बात रखें पर निर्भीक होकर रखें। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं जो यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ ये अपने बच्चों की वजह से और एमसीडी की वजह से ही हूँ, ठीक है। आज मेरे बच्चे इतने सक्सेस हैं, एक बच्चे ने मेरे अभी 5th से पास आउट किया है और सेकंड जो मेरी गर्ल्स है वो 4th क्लास में पढ़ रही है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल में भी अव्वल चल रहे हैं वो, और अपने आस पड़ोस में जैसे घर के आसपास के माहौल में बच्चे पब्लिक स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ भी अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब उनसे कंपटीशन कर लेते हैं वो, और बहुत ही अच्छा। और फिर पढ़ाई के बारे में क्या कहूँ, जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को शामिल किया जाता है स्कूलों में, समय समय पर मीटिंग होती है। जैसे मेरे को एसएमसी मेंबर भी बना रखा है, तो टीचर आके पूछते हैं कि बताओ क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हम बताते हैं और टीचर मानते हैं। मतलब एमसीडी हमारे बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करती है, हमें भी सपोर्ट करती है, समय समय पर बुलाती रहती है। सबसे अच्छा मेरे को एक चीज़ लगती है उसका जो एजुकेशन का जो तरीका है आज के टाइम में बहुत इजी कर दिया है, इजी पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे एक को करिकुलर डे होता है, उसमें जंगल के जो पात्र होते हैं उसके माध्यम से बच्चों को मतलब बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अपने आस पड़ोस में कैसे खतरे से बचना, और फिर उसमें एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं, ठीक है। उनको लेके जाते हैं रोड पे, मतलब एक्टिविटी में ही रोड पे लेके जाते हैं, उनको सड़क पार करना है, कैसे सेफ्टी से चलना है, ये सारी चीज़ें। और जैसे बच्चे आके बताते हैं हमें, तो हमें भी खुशी मिलती है। उनको गुड टच बैड टच जैसे गर्ल्स को बताया जाता है, जो हम नहीं बता सकते, स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारा बच्चा कभी स्कूल ना जा पाए तो एक पोर्टल चालू करा है, एडू लाइफ पोर्टल, ठीक है। उसमें पर डे के हिसाब से सारा कुछ होता है। जैसे आज हमारा बच्चा नहीं गया तो हम उसे पोर्टल को खोल के उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। उसको असेंबली से लेकर पीरियड वाइज किस लेसन में से किस चैप्टर में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। अगर बच्चा नहीं जा पाया वो घर में भी तैयारी कर लेता है। और एक जैसे आपने बताया खिलखिलाता बचपन, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं, सिखाते हैं स्कूल में। एमसीडी पूरा सपोर्ट करता है। अब जैसे कोई दिक्कत होती है, हमें फॉर्म फिल करना है, जैसे बेटा मेरा 5th से पास आउट हुआ, हम फॉर्म फिल करना है कुछ, तो हम टीचर से पूछते हैं, वो बुलाते हैं, हमें आगे की तैयारी करवाते हैं। जैसे विद्या ज्ञान वगैरह की तैयारी करवाई, नवोदय की करवाई, ठीक है, सीएमसी की करवाई, तो खुद उन्होंने टीचर ने बुला के हमें जो सारी तैयारियों के बारे में एग्ज़ाम करवाए। उन्हें नोट्स भेजते हैं हमें, और इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, वर्कशीट भेजते हैं, हर चीज़ की सुविधा दी जाती है एमसीडी की तरफ से। मतलब बच्चों ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि कुछ गलत है, हमेशा एमसीडी ही सर्वोपरि है मेरे लिए। तो थैंक यू। चलिए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और क्या होगा कि आप डायरेक्टर भी यहीं पर हैं, टीचर भी यहीं पर हैं, प्रिंसिपल भी यहीं पर हैं, पेरेंट भी यहीं पर हैं, और अगर सारे एक ही लाइन में बैठ कर के बात कर रहे हैं, एक ही लीक में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम निश्चित तौर पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे साथ वेरी यंग, डायनेमिक एंड वाइब्रेंट लीडर मिस्टर निखिल तिवारी, इज IOFS डायरेक्टर एजुकेशन, MCD of Delhi. So first of all, thank you very much for giving me time and in attaching MCD for this particular segment. This is the first time we are doing this kind of exercise, and of course in coming future we are going to do many more programs with you. Now these sessions are related to safety, safe school leadership. Now there are 3-4 topics which we are going to address. We would like to know your perspective on this, that related to safety challenges in primary education. What kind of challenges MCD is facing now, and what is your vision?
Now another one is related to integration of basic safety module, whether it is already there, because some other day we were talking about civil defense also, and involving DG Fire, civil defense, for integration of some safety module in school curriculum. And even today also we were discussing with IPS Vivek Srivastava ji. And the third topic is related to role of municipal bodies, which is very important. Municipal bodies in enforcing school safety standard and supporting under resource institutions. So two, three topics are here, sir, and we would like to know your concluding remarks. आपका इसमें क्या मानना है, किस प्रकार से MCD इन चैलेंजेस को, क्योंकि स्कूल्स ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी भी संख्या लाखों में है। जैसे कि हम सुबह से ही देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है MCD के लिए। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर बिल्डिंग भी उस लेवल पर अभी नहीं है, या बिल्डिंग को आपको उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूल आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपका भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, या हो रहा है कुछ स्कूल को। अभी काफ़ी टाइम पहले आप लोगों ने प्रतिभा विद्यालय की जो एक नींव जो आपने शुरू किए है हर एक स्कूल में जोन वाइज, और जो बेस्ट स्कूल हैं आपको, तो आपने उनको एक अलग यूनिक आप नाम दे रहे हैं प्रतिभा विद्यालय। मतलब उनकी जो फैसिलिटीज़ होगी, जो मुझे एज ए लीमैन जो मुझे समझ में आती है, वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, पर इनको आप अगर आने वाले समय में आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अगर हम इसको और सरल शब्दों में कहें, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ, और जहाँ जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पर भी एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा इतनी सुविधाएं नहीं थी। 10-12 किलोमीटर दूर स्कूल थे, फिर भी हम लोगों ने किया, कंप्लीट किया जैसे तैसे करके। पर उस दौरान के चैलेंजेस अलग थे, आज के चैलेंजेस अलग हैं। और MCD चूँकि दिल्ली जैसे शहर में, जो कि देश की राजधानी भी है, और एक बड़ा जो चंक है जिसको बोलेंगे स्कूल का 1500-1600, चैलेंजेस अलग हैं, चुनौतियाँ अलग हैं, और इन सब में अपने आप को मौजूदा हालात में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इसमें आपके क्या विचार हैं? निखिल तिवारी जी। थैंक यू रुपेश जी। डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट्स जिन्हें आज हम लोगों ने मैंने सुबह से हमने उनके विचार सुने अलग अलग टॉपिक्स पे। आज एक्चुअली स्कूल सेफ्टी टॉपिक सुन के ऐसा लगता नहीं है कि इसके इतनी ब्रांचेज होंगे और इसमें इतने टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने को, लेकिन मुझे अब लगता है कि पूरा दिन क्या, अगर हफ्ते भर भी हम लोग इस पर डिस्कस करें तो शायद कम है। कुछ न कुछ नए आइडियाज़, नए फैसेट्स उसके बाहर आते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं एक MCD के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एज फार एज दिल्ली इज़ कंसर्न्ड, उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट वेरी गुड दैट टाइम। सो मोस्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन was with MCD. MCD was formed in 1957, I guess, if I'm not wrong. तो धीरे धीरे जब हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जब ये चीज़ें इवॉल्व हुई तो हमारे बाकी स्कूल्स धीरे धीरे हमारे जो आज हम पब्लिक स्कूल्स बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बोलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ओवर टाइम डेवलप हुआ। पहले आज की डेट में MCD operates around 15-14 schools in which around 6.60 lakhs children are enrolled at present. जो बेसिक चैलेंज जो MCD जो मैं बोलूँगा, जो जैसे हमारे पहले के स्पीकर्स ने बताया कि जो बेसिक चैलेंज जो MCD जो फेस करता है वो ये है कि MCD has to comply with the mandate which has been given by the government under RTE, जिसमें पहली चीज़ ये हो जाती है कि जिसमें हम अपने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। The RTE mandates MCD
मतलब बेसिकली इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, विच इज़ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 से 14 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू गिव देम द फ्री एंड कंपल्सरी एंड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। तो ये हमारा पहला मैंडेट है जो हमें बाउंड करता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। इसका अगला जो कोरोलरी है वो ये है कि केवल एलिमेंट्री एजुकेशन जो ये वर्ड है वो कंप्लीट नहीं होता अनटिल अनलेस वी कंफर्म द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, जिसमें केवल जैसे अखिलेश ने बोला, हमारे पिछले सेशंस में भी बहुत सारे स्पीकर्स ने इस पर बोला कि एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि जो जैसे हमारी शायद एजुकेशन हुआ करती थी। आज की डेट में एनईपी बनने के बाद से एनईपी और एनसीएफ जो विथ ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन आज की डेट में बहुत ही एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी से ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू करी हैं। तो उसमें बेसिकली जो आज की डेट में जो हर स्कूल, इट्स नॉट अबाउट एमसीडी, हर स्कूल जो कि खासकर मैं मतलब आई विल लिमिट माय डिस्कशन टू द प्राइमरी एजुकेशन पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसमें ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें फिजिकल एजुकेशन, मेंटल वेलबींग, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, सोशियो इमोशनल एजुकेशन एंड द कल्चरल पार्ट ऑफ, इससे जो कल्चरल एजुकेशन है जो कि हमारे शायद हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस पे हमें हमारे स्कूलों में शुरू से ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा कि हमारे बच्चों को वो चीज़ कि हाँ कि भारतीयता बेसिकली हमें बनाए रखनी है अपने एजुकेशन सिस्टम में। वी हैव अ एज ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शायद वर्ल्ड में वी वर द लीडर्स, पायनियर्स इन मतलब कभी हुआ करते थे। तो ये मतलब ये जो उस बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन का ये मेन जो पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान देने। चैलेंजेस हैं जैसे जो सेफ्टी से रिलेटेड सेशन है, इसमें साइबर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड ड्रिल्स, मैकेनिकल सेफ्टी, दैट मेरे पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सपोज टू इंश्योर दिस, मतलब आई डोंट हैव ए चॉइस कि मुझे ये चीज़ें मेरे स्कूल्स में फायर सेफ्टी, जैसे लोगों ने सुबह सर ने बोला था, श्रीवास्तव सर ने, कि फायर सेफ्टी एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बट इट हैज़ टू बी देयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बैक बोरो स्टील वट एवर यू डू यू हैव टू इंश्योर दीज थिंग्स। इसके लिए बच्चों तक ये चीज़ें नहीं जानी है, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस इज द मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू इंश्योर। बच्चों का रोल और टीचर्स का रोल वहाँ से शुरू होता है जो बेसिकली जो करिकुलर गोल्स जो डिफाइन होता है, उसमें जो एमसीडी या फिर एमसीडी ही नहीं, सारे प्राइमरी स्कूल्स जहाँ पे भी मैं तो प्ले स्कूल से शुरुआत करूँगा, आज की डेट में बच्चे प्ले स्कूल से ही उनका एक एजुकेशन सिस्टम में बच्चे जुड़ जाते हैं, वहाँ से लेके 5th तक जो मेजर चैलेंज ये होता है कि बच्चों को सेफ्टी का मतलब ही नहीं पता है उन्हें। पहली चीज़ तुम्हें ये बता पाना कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अनसेफ लग रही है तो यू हैव टू अप्रोच द नियरेस्ट पर्सन जिसको तुम जानते हो, क्योंकि आज ये भी नहीं बोल सकते कि किसी को बताओ। आज की डेट में हम बच्चों को हमें ये बताना हो कि एटलीस्ट पेरेंट्स को बताओ, स्कूल में तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो एटलीस्ट टीचर्स को बताओ। तो वो एक्सप्रेशन मतलब दैट सेंस ऑफ कि बच्चे वो चीज़ बता पाए कि यस कि यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये चीज़ मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, वेदर इट इज़ फिजिकली, वेदर इट इज़ इमोशनली, इट इज़ एनी सॉर्ट। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो मेजर चैलेंज वो ये हो जाता है कि बच्चों के साथ वो इस लेवल का बॉन्ड क्रिएट कर पाए कि एटलीस्ट बच्चे उन्हें बताएं ये चीज़ें। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बाकी चीज़ें तो वो स्टेजेस में है, वो हो ही जाती हैं, क्योंकि टीचर्स दे आर ट्रेन टीचर्स, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर देम। मतलब एज अ सिविल सर्वेंट हम शायद मतलब इस पूरे हॉल में मैं अकेला हूँगा जो लीस्ट एक्सपीरियंसड है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो एजुकेशन सिस्टम को समझने में बेसिक।
कि कैसे एजुकेशन इम्पार्ट करनी। सारे बहुत ही एक्सपीरियंस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, academicians, they have already spoken a lot about this topic. तो अच्छा, और एक और चीज़ है जो MCD शायद चैलेंज वो एक फेस करती है कि हमारे बच्चे काफ़ी हद तक एक मेजर पोर्शन ऑफ आवर द चिल्ड्रन वी टीच इन आवर स्कूल्स, दे आर फर्स्ट टाइम लर्नर्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स इन देयर फैमिली। तो वो पेरेंट्स का जो रोल है वो क्या है कि वो टीचर्स को एक लेवल तक ये समझना होता है कि वो मैं ही जो बता रहा हूँ वो बच्चे को शायद एक अच्छी शिक्षा या बाकी चीज़ों में पेरेंट्स से उन्हें वो नॉलेज मिलेगा, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक एजुकेशन का जो भी वो है वो उसका सोर्स वो टीचर ही है केवल। तो वो शायद इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है टीचर्स को। और मेरा एक अभी तक का असेसमेंट ये है कि दे आर डूइंग गुड, क्योंकि मैंने जितना अभी तक मेरा असेसमेंट है, जितना मैंने विजिट करे स्कूल्स में, दैट बॉन्ड आई हैव सीन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, खासकर जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, दे आर डूइंग अ लॉट, दे आर वर्किंग हार्ड विद देम। फिर एक और चैलेंज है जो माइग्रेशन का है। बच्चों को रिटेन कर पाना फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, विच इज एक्चुअली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी बच्चा जो भी स्कूल गोइंग एज में है वो ही शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। देयर आर मेनी रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन इवन इन दिल्ली। मतलब इन जनरल पूरे देश में शायद ये एक गलत फहमी है कि दिल्ली इज बेस्ट फॉर एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली हैज बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये शायद एक गलत फहमी है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, आई विल कम सर। तो आई वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट, परख सर्वेक्षण which was conducted by NCERT. दिल्ली 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे और 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर 3rd grade students Delhi ranks 19th in India. It includes all, the government, private, public, whatever. So Delhi is 19th in India. If you go by the research which has been conducted by DOSER, तो उस सिस्टम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 6th graders के लिए क्या अखिलेश, आई गेस इट्स 11th, दिल्ली इज ऑन 11th रैंक। लास्ट ईयर 33 था। और ये इसके 2 साल पहले दिल्ली वाज 33rd। मतलब हार्डली 1-2 स्टेट्स होंगे जो दिल्ली से, आई डोंट नो, शायद वो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था कि कितना सही है ये सर्वेक्षण, बट इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू रिलाई ऑन इट एंड द सैम्पल साइज वाज मोर देन आई गेस 10 lakhs। तो इतना छोटा सैम्पल साइज भी नहीं था जिस पे ये डेटा है। तो चैलेंजेस हैं, और as part of government I would like to ensure and actually appeal to all the people present here that it is our responsibility as a society, as government, as individual, that no children in society is left out of a formal education system. The safety and other aspects shall be catered by the government or the agency, whoever is managing that particular school. But our first responsibility is that no children is left out of this system because of any reason. So it's my appeal to all of you कि आपके मतलब कि ये एक एनरोलमेंट ड्राइव हम बोलते हैं हमारे उसमें, ये एनरोलमेंट ड्राइव पूरे कंट्री में होना चाहिए। इट्स नॉट रिलेटेड टू कि मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा, मतलब हमें ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए एज ए सोसाइटी, क्योंकि ये जो सुबह सर ने बोला था कि वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एंड वी हैव अ विजन ऑफ बीइंग विकसित भारत इन 2047, इट्स PM's विजन, एंड all the departments across government of India are working for the same. And because I belong to MOD,
So MOD has also its vision for 2047. But I think without this education, this vision 2047 cannot be achieved. बाकी जो भी डिपार्टमेंट कुछ भी कर रहे हैं, बिकॉज आज से 22 साल, आज जो बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, वो उस समय ग्रेजुएट होने के बाद शायद जो हमारा जो वर्किंग जो वो है पॉपुलेशन का एक पार्ट होगा. तो आज जो बच्चे उस पार्ट मतलब उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं उस समय अफेक्ट करेगा. तो आई थिंक बाकी सब लोगों ने ऐसा कुछ टॉपिक छोड़ा नहीं है. और and we are, it's already 5:15, so I will not take much time, and I will congratulate PhD CCI for arranging this session. It was really enlightening for us also, क्योंकि बहुत सारे वो हैं शायद जिसमें ये लगता है कि ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते रहना चाहिए. अदरवाइज आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं वो शायद यू आर मिसिंग ऑन देम. तो आई विल अगेन कॉन्ग्रेचुलेट PhD CCI फॉर इनवाइटिंग MCD टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड थैंक्स अ लॉट. एक गालिब की बहुत पुरानी लाइन है, मैं अकेला ही चला था गालिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. तो जब ये हमने शुरू किया तब हमें भी नहीं पता था कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आ पाएंगे. द इंटायर क्रेडिट गोज टू आवर ऑर्गेनाइजिंग टीम लेड बाय डॉक्टर रूषा राम. शी इज द कन्वीनर ऑफ दिस इंटायर प्रोग्राम. एनर्जेटिक, दिस इज द वर्ड फॉर हर. सुबह शाम दिन रात कहीं मैंने भी गलतियां की, कहीं मेरी टीम ने भी गलतियां की. हमें समझ में आता नहीं क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम. यस, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा बिकॉज सुबह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन, हम करते क्या हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम चलता है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है. और क्या हम यहीं पर बाहर चाय पी करके जस्ट गुड बाय करके अलग हो जाएंगे या इसके बाद कि हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी जानना ज़रूरी है. क्योंकि कोई भी बात शुरुआत होती है लेकिन उसको कंक्लूजन तक ले जाना बहुत ज़रूरी है. We are PhD Chamber of Commerce and Industry started from 1905. 120 साल हो गए हमें इस यात्रा में. और जब हमने शुरुआत किया तो हम बेसिकली उस टाइम में अनडिवाइडेड पंजाब जो था, जो कि आज पाकिस्तान का भी हिस्सा है, तो हमने PhD पंजाब हरियाणा दिल्ली उसके नाम से हमने शुरुआत किया. और बाद में फिर वही चलता रहा. 1970 आते आते हमें लगा कि हमें यहाँ से बाहर निकल करके और भी अपने पंखों को फैलाने की ज़रूरत है, अभी तो आसमान बाकी है. तो कुछ ऐसा सोच करके फिर हमें लगा कि कुछ और करना चाहिए. तो हमने फिर बायलॉज में तो खैर चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो मीनिंग थी पंजाब हरियाणा दिल्ली उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, प्रोग्रेस हार्मोनी और डेवलपमेंट. तो इस तरीके से PhD सेम रहा लेकिन थोड़ा अर्थ बदल गया. भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं, उतनी कमिटीज़ हमारी हैं. और उसमें से एक कमेटी आती है हमारी सेफ्टी एंड फायर. मैं यहाँ सीनियर सेक्रेटरी हूँ और एक अच्छा सा स्टाफ है हमारा, तकरीबन 200-250 लोग काम करते हैं. 120 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया. पूरा इकोसिस्टम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलता है और सारी कमेटी किसी न किसी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, जुड़ी होती हैं. तो जब सेफ्टी एंड फायर का जब चर्चा हुई तो ये बेसिकली सेफ्टी एंड फायर ये दो अलग वर्ड हैं. सेफ्टी, ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, रोड सेफ्टी, एजुकेशनल सेफ्टी, वट एवर इट इज़. और फायर वो हमने अलग रखा. तो इसलिए हमें फिर कहीं ना कहीं से हमें DG फायर और होम मिनिस्ट्री से हम कहीं ना कहीं से जुड़े रह गए कि उनसे रिलेटेड जो हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो प्रोग्राम आते हैं, जो नई पॉलिसीज़ आती हैं, उसके ऊपर हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हमने जनवरी में एक प्रोग्राम किया हॉस्पिटल सेफ्टी के ऊपर, और वो इसलिए किया कि अभी पिछले 12 महीने में हॉस्पिटल्स में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेकर के बड़े सारी ऐसी मिसहैपनिंग हुई.
खासतौर पर गोरखपुर में जो वो अग्निकांड जो सर हुआ वो बड़ा हृदय विदारक था। और उसके बाद फिर जो है जो हमारे एलजी साहब थे उन्होंने कहा इसके ऊपर एक वर्कशॉप करो, मैं खुद आऊँगा। और वो बहुत ही हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम था। जब हमने जनवरी में किया 25 जनवरी को, होम मिनिस्ट्री भी लगी हुई थी, डीजी फायर भी लगे हुए थे। तब विवेक श्रीवास्तव जी ही वॉज डीजी फायर एट दैट टाइम, और वो यहीं पर हमने प्रोग्राम किया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम एक और प्रोग्राम करेंगे जो स्कूल सेफ्टी के ऊपर रहेगा। अब जब स्कूल सेफ्टी की बात आई तो फिर ये हुआ कि आप इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए और आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम उषाराम को दी गई कि आप एक ये कन्वीनर हैं आप, और आप इसको आप पता करिए कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो हम 3 स्टेक होल्डर या 3 लोग हमें सामने नज़र आए जिनको हमें अप्रोच करना था। एक वो जो स्कूल जाता है बच्चा, उसको सेफ्टी के बारे में कितना पता है, कैसे किसी भी तरीके की सेफ्टी वो क्या जानता है, गुड बैड ये सब जानता कितना है। एक तो वो भी है, और उसको घर में कितना बताया गया है, स्कूल में कितना बताया गया है। दूसरे वो जो उस बच्चे को अपने पास अगले 5 से 6 घंटा रखते हैं यानी स्कूल्स, उनके पास सेफ्टी से रिलेटेड क्या इन्वायरमेंट क्या क्रिएट किया है, क्या इकोसिस्टम है उनके पास में, कितनी सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और वो कितना पैशनेट है इसके बारे में। और तीसरा वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स सीबीएसई, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन लोगों ने सेफ्टी को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो इन तीनों लोगों को सामने खड़ा करिए और इनके ऊपर एक वर्कशॉप करिए। तो हमने उस पर किया, काफ़ी कुछ किया। मैडम ललिता टेक चंदानी नहीं है, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, वो जा चुकी हैं शायद। हमने वर्कशॉप किया और हमने पाया सर कि केवल 3rd क्लास में शायद मैडम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3rd क्लास में थोड़ा बहुत है करिकुलम में सेफ्टी को लेकर के, 6 में कुछ है, 10th के बाद तो कुछ है ही नहीं सेफ्टी को लेकर के। वो एक बहुत मिसिंग एलिमेंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कुछ सेफ्टी के बारे में चर्चा हो रही है, और हाँ कुछ थोड़ा सा जो है न्यूज़ साइनेजेस वगैरह कुछ आ गए हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है नहीं। तो जब हमने वो किया तो दैट वाज शॉकिंग फॉर अस, एंड वी सबमिटेड दिस रिपोर्ट आर इंटायर प्रोसीडिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और वी रिक्वेस्टेड देम दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर करिकुलम। तो ये बात हुई कि भाई इसको अब हम NEP 2020 का हिस्सा बनाएंगे, आप इसमें एक वाइट पेपर बनाइए। वाइट पेपर कैसे बनाएंगे जब तक हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप इस प्रोसीडिंग का के गवाह हैं, आप हिस्सा हैं, और आपके सामने सारी बातें हुई है। ये इवेंट, ये कॉन्फ्रेंस, ये समिट यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद इसका पोस्ट इवेंट रिपोर्ट बनेगा, इसका वाइट पेपर तैयार होगा, इसके जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो पूरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये हम जितने भी लोग हैं सभी के साथ शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग श्री निखिल तिवारी जी, डॉक्टर डायरेक्टर एजुकेशन MCD, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी के पास में जाएगा, और इसकी रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी जाएगी। कितना काम होगा कितना काम नहीं होगा वो उनका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है कि इस कोशिश को जारी रखना चाहिए, और वो हमने किया है। मुझे लगता है कि आप सब ने इसको मिला करके पूरा सार्थक बनाया है। लेकिन MCD की जहाँ तक बात होती है निखिल सर, मुझे लगता है ये एक बिगनिंग है, हमें कुछ और आगे हाथ मिलाने की ज़रूरत है, कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि PhD का इकोसिस्टम ये है कि हमारे मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो हर तरीके के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो उनमें से वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिनके अपने जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर भी हैं, उसमें से कुछ वो लोग भी होते हैं जो उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं जो डोनर कम्युनिटी है। तो जब यहाँ से बात निकलेगी तो उनके पास तक भी जाएगी, और हम चाहेंगे कि उनको भी हम आपसे जोड़ें, और इस जो हमारा जो ये शुरुआत है, ये शुरुआत एक अच्छे राइट पैथ पर चले, किसी कंक्लूजन तक पहुँचे। बहरहाल समय की कमी है और प्रोग्राम को हमें कंक्लूड करना है, लेकिन इसके पहले कि मैं फाइनल वोट ऑफ थैंक्स दूं, मैडम डॉक्टर उषाराम जी यहाँ पर है, उनको मैं इनवाइट करूँगा कि वो हमारे स्पीकर्स को मोमेंटो प्रदान करके इस सेशन का समापन करें। और इसके बाद एक और छोटा सा सेशन है, कुछ स्कूल्स हैं जिनका हमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देना है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो अभी हम दे देते हैं। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके नॉमिनेशन हमारे पास थोड़ा लेट आए थे,
और निश्चित तौर पर जब सुबह अवार्ड मिल रहा है तो अगर एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा जो है हार्ट फीलिंग तो आएगी। तो हमने उनका भी ख्याल रखा है मैडम के ही दिशा निर्देशों में, तो हमारे पास में वो भी है, तो वो भी हम डॉक्टर उषाराम मैडम से ही दिलवाना चाहेंगे। तो मैं आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप इनमें से जी वो है आपके पास ऑलरेडी। ये कुछ स्कूल है एमसीडी के 6 स्कूल है, इनके पास हमारे पास मोमेंटो रखे हैं, इनको आप सभी को दे दीजिए। और इसके पहले इनको जितने भी स्पीकर्स हैं इनको मोमेंटो दे। राइट जी, इसके बाद फिर फाइनल वोट ऑफ थैंक्स में। यस। But before that, let's give a big round of applause for this wonderful. Very good. I would like to thank all the experts. Number became less here, but last but not the least. अभी चाय भी है। तो Okay. Can we please present the memento to Ms. Bhavna Sharma, Preparatory Coordinator MCD. Shri Kumar Akhilesh, Academic Coordinator MCD. Ms. Indu Batra, Principal. Shri Ambush Kumar. And Shri Nikhil Tiwari, Director Education, MCD. Can we hear it for sir, please? entire credit goes to him. Yes. Mr. Shri Rajiv Kumar, parent. Can we have Sahadra South. Dharna madam है from Sahadra South. Dharna ma'am from Shadra South Zone? सर निखिल सर नहीं मैडम भी है अभी दोनों yes they have done really good. Shri Praveen Kumar ji from Central Zone. Indu Deshwal ma'am from Najafgarh Zone. Sumar Nagpal from Keshavpuram Zone. Simbi Seth ma'am from Karol Bagh. Can we hear it for ma'am, please? From Team Education MCD, can we have Rakhi Sharma ma'am and Vijay Kumar sir? विजय कुमार जी हैं क्या?
अच्छा ओके As an acknowledge, okay, sure. ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज आइए यही मैडम के साथ में ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए Wait. अभी हूँ. प्लीज सारे लोग आ जाइए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए Thank you, everyone. As an acknowledgement of the committed efforts of schools in submitting detailed information and documentation, we now present the Appreciation Awards. May I request a representative from the school to come forward and receive the award. Sir, would you please do the honors? Mahavir Senior Model School, Delhi. अगर नहीं है तो बाद में दे देंगे अगर है तो दे देते हैं Mahavir Senior Model School, Delhi. if they are here Delhi Public School, Rohini. नहीं है Gurugram Global Heights School, Haryana. Sadhu Vaswani International School for Girls, New Delhi. Nigam Pratibha Vidyalaya, Saraswati Vihar. निगम प्रतिभा विद्यालय सरस्वती विहार if someone is here हाँ तो ठीक है NPV Kichiripur. Ramjas International School, RK Puram. Indraprasth International School, Sector 10, Dwarka. AB Shalimar Bagh. MCPS Krishnanagar F Block, Delhi. Sarvottam International School, Greater Noida. Manavsthali School, R Block, New Rajendra Nagar. Senior Shri Ram Model High School, Faridabad. Tagore International School, Vasant Vihar. Man can receive for Tagore International School, Vasant Vihar. NPV BT Shalimar Bagh. Seth MR Jaipuria School, Bansal Campus, Lucknow. हाँ जी अभी एक तरफ रखते हैं जयपुरिया से भी कोई है क्या हाँ there is for Manavsthali also. मेरे ख्याल से था महावीर मैंने बोला है मानसस्थली यस मानसस्थली तो आप आ जाइए हाँ मॉडर्न नहीं है मैडम बस इतना जो नाम अभी लिया मैडम ने बस वही है यस 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 जी Sir, you can go for the photograph. Which one? Name. Name of the school. Okay, sir. Friends, last but not the least, I don't want people to go away without thanking our two young girls whose voices actually have really gone bad. And that is Sneh and Sonia. Let's give them a special hand. They are from Tagore International, Vasant Vihar and east of Kailash. Thank you so much, sir. Please give them the planter. I request Mr. Rupesh to give them the planter. A token of appreciation. Okay, ji? ये तो नेचुरली 2 दिन से जो लोग परेशान हो रहे हैं और जो बल्कि मैंने तो कुछ सपोर्ट भी नहीं किया
So do I need to do time ending? No, no. दो सर्टिफिकेट्स हो गए Thank you so much. Can we clap for Rupesh ji? Hip hip. And of course Ambika. Ambika, she has been receiving the other part of it. So thank you so much. And the other girl, what's her name? This yellow. Manju madam. Manju. Throughout she has been sitting here. Thank you so much for, doing this. Thank you. Thank you, sir. Since I really convey my sincere thanks to all the sponsors, Karam Group, the representative from Karam Groups are not here, I think. Karam Group, Hemant Sapraji, our summer representative Kirti is here. Thanks Kirti for coming all the way and helping us for organizing this wonderful initiative. MCD Delhi, yes, thank you so much Nikhil sir for helping us, for associating for this beautiful initiative. And I think we are going to organize many more programs in coming future. This was the beginning, and definitely in future, maybe in every 2 or 3 months, we can organize such kind of programs. So thanks to all of you for coming here and organizing this wonderful program. My team, Ambika, Harshita, Manjuji, and of course Dr. Usharam madam, our anchor from the morning to evening. They were doing their hard work. And the support team, of course, from PSG CCI, everyone, our photographer Akash, and everyone for coming here, for helping us, for making this summit successful. Thank you very much. Don't forget for having a cup of tea outside, and then we can close the session. Thank you very much.